सेक्टर में तो बहुत बड़ा चेंजेस आया है। नारी वंदन अधिनियम इस बात को प्रूव कर रहा है कि हम बहुत तेजी से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में महिलाओं की उपस्थिति दर्ज कर पाएंगे। तो जब महिलाओं का जनप्रतिनिधित्व आएगा तो आर्थिक उन्नति के सेक्टर में भी उनको फोकस एरिया में लाकर खड़ा किया है। आज आप देखिए, बहन अब हवाई जहाज उड़ाती है, बहन अब मिलिट्री स्कूलों में एडमिशन ले रही है, लड़कियां अब आपकी ऐसी सारी सर्विसेज में, यानी कॉरपोरेट जगत में तो डायरेक्टर ही नहीं बनती थी, इन 10 सालों में तो अब कॉरपोरेट जगत को भी लीड कर रही वो। तो नीचे आप ग्रामीण क्षेत्र से लेकर ऊपर इंडस्ट्रियल सेक्टर तक महिलाओं की एक बड़ी भूमिका कंट्री ने अपने आप को, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बेटी तो अब रक्षा मंत्रालय के उसमें होकर भारत में सैनिक विमान उड़ाती है और राफेल उड़ाती है। तो ये कहाँ पहुंच गया देश इन 10 सालों में। तो मैं समझता हूं कि उस सेक्टर को भी अछूता नहीं रखा और बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। सुजीत जी, बड़ी बात यह है कि कृषि क्षेत्र के लिए जो सरकार ने कदम उठाए हैं वो कारगर भी सिद्ध हो रहे हैं और कृषि क्षेत्र से भी रिटर्न मिल रहा है। कोरोना काल में जब वैश्विक चुनौतियां सामने खड़ी थी तब भी हमारी अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला, या फिर कह सकते हैं हमारी अर्थव्यवस्था बचाई वो कृषि क्षेत्र ने। और दूसरा जो डिमांड की बात की जा रही है वो शहरी क्षेत्रों में के अनुपात में ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा बड़ी है, उसका भी लाभ सीधे तौर पर हमें हमारी अर्थव्यवस्था को मिल रहा है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि देश में फ्रीबी कल्चर नहीं होनी चाहिए, और मैं ये फ्रीबी और वेलफेयर में एक जो डिफरेंस है उसका जिक्र करना चाहता हूँ। देखिए, जैसे मैंने कहा, जैसे सुधीर भाई ने कहा कि जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्वनिधि स्कीम, 80 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को जब प्रधानमंत्री जी स्वनिधि स्कीम के तहत उनको एम्पावर कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो देश की अर्थव्यवस्था में वो शामिल होता है। जब किसानों को एमएसपी मिलती है, किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत उनको सपोर्ट मिलती है, जब इरिगेशन पे ध्यान जाता है, जब पीने का पानी पे ध्यान जाता है, तो ये सब चीज घूम फिर के अपने देश में अपनी अर्थव्यवस्था को ये बनाता है। तो मैं ये मानता हूं कि देखिए, कंजम्पशन लेड ग्रोथ ठीक है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हो रहे हैं, आज जैम जो जनधन आधार मोबाइल, कोविड के समय भी 80 करोड़ जनता को पैसा मिल जाता था अपने बैंक खाते में, बिना बैंक गए उनके पास पैसा पहुंच जाता था, जबकि सारा दुनिया ठप थी कोविड के समय। ये छोटी बात नहीं है, ये कितनी बड़ी बात है, आप इसको सोच के देखिए। तो ये सब चीज जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है, मैं एक रूरल जिले से आता हूँ, कालाहांडी उड़ीसा से, तो मैं देखा हूँ कहाँ कैसे वहां पे परेशानी होती थी और आज डिफरेंस में देख रहा हूँ। तो यही सब चीज जो 10 साल में बदलाव आया है, ये मैं बहुत ही उम्मीदवार हूँ। अगले अपना 15-20 साल देश के लिए बहुत ही स्वर्णिम दिन है, और तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हम लोग जा ही रहे हैं, और रियल ग्रोथ है। ये ऐसे नहीं कि मतलब एक पहले जैसे 90 के दशक में होता था, ग्रोथ होता था, लेकिन वो एक टेम्परेरी ग्रोथ था। ये जो ग्रोथ है ये परमानेंट ग्रोथ है, ये परमानेंट ग्रोथ है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी डेवलप्ड नेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर से भी बेहतर बनने जा रही है। तो यही सब चीज देश के लिए बहुत अभी आशा का किरण लेके आ रहा है। बिल्कुल। प्रोफेसर अग्रवाल, एक कमेंट हम थोड़ा सा आपका समझना चाहेंगे, और ये तस्वीरें भी साथ में क्योंकि चल रही हैं, इन तस्वीरों के बारे में बता दें। ये संसद भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन अपने टैब के साथ, जो एक लाल रंग के बैग में रखा हुआ है, और हर बार इसी में नजरें होती हैं कि बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री किस तरह के ऐलान करेंगी, वो सब कुछ इस टैब में बंद है। कुछ ही पलों का इंतजार और है। 11 बजे सत्र की शुरुआत होगी और लगातार इसका सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर भी देखेंगे। प्रोफेसर अग्रवाल, अब बात मैं चाहूंगी एक कमेंट आप उस पर भी करें जिस पर मिडिल क्लास की सबसे ज्यादा नजरें होती हैं। बात होगी टैक्स की, जिसका सुजीत जी ने शुरू में जिक्र भी किया था। थोड़ा सा हम आपके जरिए समझना चाहेंगे, जब हमने वित्त मंत्री का जुलाई 2024 का बजट भाषण सुना था, उसमें सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक आंतरिक समिति बनाई थी ताकि जो टैक्स भरने वाले लोग हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनको थोड़ी सी राहत मिले, आसानी हो। अगर हम डायरेक्ट कोई ऐलान टैक्स में राहत का नहीं सुनते हैं तो किन और बड़ी बातों पर नजर रह सकती है, ताकि अगर डायरेक्ट कोई राहत नहीं मिल रही है तो इनडायरेक्ट राहत पर नजर हो आम आदमी की? देखिए, जहां तक बात है, पहले मैं इनडायरेक्ट की बात करता हूं। इनडायरेक्ट राहत को अगर हम लोग एस्टिमेट करें तो ये बहुत बड़ी राहत है।
सबसे पहले सब लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, हर कोई 2 GB 4 GB डेटा लेकर के, स्टूडेंट से लेके हाउसवाइफ से लेकर के स्ट्रीट वेंडर से लेकर के प्रोफेशनल तक यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल। और इस डेटा का प्राइस क्या है आप इमेजिन करिए, दुनिया का सबसे सस्ता और फास्टेस्ट डेटा है, ये मिडिल क्लास को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा है। दूसरा हम देखते हैं तो डिजिटल इकोनॉमी के माध्यम से लोगों का जीवन आसान हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में देखें तो एविएशन के रूप में देखें या बैंकिंग रिफॉर्म के रूप में देखें, किसी भी टाइप के देखें, हम बिल पेमेंट देखते हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास का जो हैरेसमेंट हुआ करता था ऑफिसेज में, उससे बचत की बात है। हर जगह टाइमलाइन निर्धारित हो गया है, सिंगल विंडो क्लियरेंस टाइप की चीजें, ये सर्वाधिक अगर किसी को प्रभावित करती है तो मिडिल क्लास के जीवन को आसान करती हुई नजर आ रही। आज जब हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़े हैं तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण ही हम न्यूक्लियर फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हैं इजीली। अगर कपल्स काम कर रहे हैं, उनके बच्चा है, वो भी अगर सपोर्ट कर रहे हैं, आप अगर इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो जिस प्रकार का ईज ऑफ लाइफ भी आया है, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है तो ईज ऑफ लाइफ भी आया, हाउस होल्ड लाइफ भी आया है, वो एक बहुत बड़ा, उसको हमने कभी बजट में फैक्टर इन नहीं किया है, जबकि हम लोग अपने स्तर पर शोध पर इसको देख रहे हैं, तो इसको भी फैक्टर इन करने की आवश्यकता है। दूसरी बात ये आती है कि प्रोसीजरल जितना था फेसलेस, अगर आप देखते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया है, अक्रॉस कंट्री फेसलेस कर दिया है। ये मोदी जी का सबसे बड़ा, जिसको कह सकते हैं कि टैक्सेशन रिफॉर्म, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। दूसरा अगर आप देखते हैं, अब आते हैं डायरेक्ट जो हम बेनिफिट ले सकते हैं, मुझे लगता है जिस प्रकार की रणनीति और वातावरण बन रहा है, खासतौर पर डिमांड प्रमोशन के लिए और मिडिल क्लास की आकांक्षाएं, जिसको मैं कहता हूं परंपरागत आकांक्षा क्या है, इनकम टैक्स में डायरेक्ट रिलीफ मिलना, तो मुझे लगता है कि इस बजट में लोगों को निराश नहीं होना पड़ेगा, ऐसा मेरा बहुत सशक्त विश्वास है। और यही नहीं, स्लैब में भी चेंजेस आएगा। और मैं बता दूं कि सरकार ने जो टैक्स वाइडनिंग किया है, आज लगभग 7 करोड़ टैक्स रिटर्न फाइल हो रहे हैं, 3 करोड़ न होकर के लगभग 6-7 करोड़ ये हो रहा है और बहुत तेजी से वाइड हुआ है। जीएसटी में भी आप देखेंगे कि जो लीकेज, हालांकि बजट से जीएसटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जीएसटी का कलेक्शन बजट पर प्रभाव डालता है, ये हमको देखना पड़ेगा। और ये कि बहुत बड़ा बैलेंसी का काम कर रहा है। तो इनकम टैक्स जहां तक बात आती है, मुझे लगता है इसमें चाहे हाउसिंग लोन में जो हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं उसकी लिमिट भी बढ़ सकती है, इसी प्रकार से और भी जो बेनिफिट्स हैं, खासतौर पर स्लैब्स के रूप में या टैक्स रेट्स के रूप में, निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि इसमें मिडिल क्लास को जरूर खुश होने का अवसर प्राप्त होगा। सुजीत जी, अगर बात करें रोजगार की, कहते हैं आधारभूत ढांचा उसका जितना विस्तार होता है उतना ही रोजगार भी बढ़ता है। 2 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान था, 10 साल पहले की बात करें वो 11 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है और लगातार एक्सपेंड हो रहा है। सबसे ऊंचा ब्रिज हम बना रहे हैं, सबसे आधुनिक ट्रेन्स हम निर्मित कर रहे हैं, रोड्स हाईवेज लगातार बढ़ रहे हैं, टनल्स बढ़ रही हैं। तो क्या माना जाए, इसमें बजट में और ज्यादा प्रावधान रखा जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और उसका सीधा सीधा असर रोजगार के क्षेत्र पर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए ये बजट रोड मैप प्रेजेंट कर रही है 2047 के लिए। प्रधानमंत्री जो बार बार जब कहते हैं विकसित भारत और ये अमृतकाल की बात होती है, तो ये हर बजट, हर जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है, ये एक माइलस्टोन होती है वहाँ 2047 के लिए। और हाँ बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ कि रोजगार अभी एक बहुत बड़ी चुनौती है। 2 करोड़ लोग हर साल अपने जो वर्कफोर्स में एंटर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग को एमएसएमई पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एमएसएमई ही जॉब क्रिएट करती है। देखिए, स्टार्टअप्स और एमएसएमई पे हम लोग जब तक नहीं ध्यान देंगे तब तक जॉब्स नहीं होगा क्रिएट। और जो अपने जो स्टूडेंट्स और ये जो यंग वर्कफोर्स है, आज देखिए 25 साल से आधी हमारी आबादी है, 700 करोड़
अब 140 करोड़ की आबादी में से आधा अगर 25 साल से कम है, वो 700 करोड़ हो गया। तो ये कल चल के यही सब जॉब मार्केट में आएंगे, तो इनके लिए हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। एमएसएमई पे थोड़ा ज़्यादा मैं उम्मीद रखूंगा कि वित्त मंत्री जी एमएसएमई पे ज़्यादा फोकस करेंगे। मैंने 2-3 चीज़ जो कहा कि जीएसटी का एग्जाम्पशन लिमिट बढ़ाया जाए, लोकल प्रोक्योरमेंट में एमएसएमई को प्राधान्य दिया जाए, कॉम्प्लायंसेस कम किया जाए। तो एमएसएमई और मुद्रा लोन देखिए 10 लाख से 20 लाख हो गया, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप पूछिए किसी भी स्टार्टअप को, एंटरप्रेन्योर को एमएसएमई मुद्रा लोन लेना कितना मुश्किल है, बिना कोलेटरल का देते नहीं है। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान और सरकार को देनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। लेकिन मैं बहुत ही मतलब आशावादी हूँ कि ये आगे 15-20 साल हमारी स्वर्णिम दिन है, और प्रधानमंत्री जी ने जो 10 साल में जो देश के लिए जो फाउंडेशन जो ले किया है, ये 50 साल पहले होना चाहिए था। लेकिन चलिए 2014 से शुरू हुआ है और ये हमको विकसित भारत की तरफ लेके जा रहा है। जी, यहाँ पर लोन की बात करें अगर सुधीर जी, एनपीए एक बहुत बड़ी चुनौती थी बैंकिंग सेक्टर के सामने, और अब ऑल टाइम लो पर आ गया है, 2.6% रह गया है। अब क्या बैंकों के सामने एक रास्ता है कि अब लोन जो खींच कर हाथ दिया जा रहा था, अब थोड़ा सा उदार होकर लोन दिया जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी फायदा होगा और व्यवसाय करने वाले लोग जो हैं वो लाभान्वित होंगे? देखिए, मैं जहां तक महसूस करता हूं 11% से 2.6% पर आया है। हम 11% एनपीए पर बैठे थे, वहां से आज 2.6 पर हैं। तो ये तो मोदी जी का जो विजन था, उसके बिना ये संभव नहीं था कि बैंकिंग सेक्टर जो कि एक तरह से कोलैप्स हो रहा था, उसको मेंटेन किया। अब आप बैंकिंग सेक्टर के हर पहलू को देखें तो जो अपनी पूरी चर्चाओं में सार आया है कि नीचे जनधन अकाउंट से लेकर ऊपर हायर लेवल तक हर सेक्टर में बैंक अब पहुंच चुका है। चाहे वो स्ट्रीट वेंडर के पास हो, चाहे वो मुद्रा बैंकिंग के माध्यम से करोड़ों अकाउंट्स हों, तो चाहे वो, मैं अपने क्षेत्रों में जब फोकस करके देखता हूं तो इंडस्ट्री के लिए लोन अब इजी अवेलेबल है, यानी बैंक अब घर आ जाती है। तो लोन की फैसिलिटी जो प्रोवाइड हुई और सब्सिडी सेक्टर को जो स्ट्रांग किया है, एमएसएमई सेक्टर में तो गजब का सब्सिडी है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी सब्सिडी को फोकस किया है, चाहे वो वेयर हाउसिंग हो, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो, और वो बिना बैंक के, बिना नाबार्ड के संभव नहीं था। तो डोर अप्रोच हुआ है। बड़ी यूनिटें भी अब बहुत तेजी से और फाइनेंस को ले पा रही है, पर इतना इजी तो नहीं करना चाहिए कि लेकर निकल जाओ। तो जो लेकर निकल जाओ वो तो मैं नहीं समझता हूं कि मोदी जी और निर्मला सीतारमन जी के हस्ताक्षर से इतना फैसिलिटी होगा। हम चाहते हैं कि जो डिपॉजिटर से उनके हितों का संरक्षण होते हुए मैक्सिमम पैसा जो आज डिपॉजिट बैंकों में रखा वो लोगों तक पहुंच रहा है, और लोगों का फोकस बैंक डिपॉजिट के साथ साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में भी सीधा सीधा प्रोफेसर अग्रवाल से भी समझना चाहते हैं। एक बहुत छोटा सा कमेंट है प्रोफेसर अग्रवाल, जिस बात का जिक्र भी सुधीर जी भी कर रहे हैं कि बड़ी बात जो कल सामने आई कि अब भारत में भी ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि जो आम आदमी है वो बैंक में अपना इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर समझ रहा है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना। और बहुत बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं अमेरिका जैसी, जहां लोगों में ये ट्रेंड पहले से देखा जाता था। तो ये बदलाव आप किस तरह से इसको देख रहे हैं, ये किस दिशा में जा रहा है और क्या संकेत दे रहा है? देखिए, यह हमारे कैपिटल मार्केट का स्टेबिलिटी का प्रमाण है कि जो हमारे यहाँ के शेयर मार्केट कॉमनली जो हम समझते हैं, या इसी प्रकार से अन्य जो मार्केट हैं, हम लोग इसको स्कैम फ्री एरा में आ गए हैं। आप याद करिए पहले हुआ क्या करता था, हर तीसरे चौथे साल कोई ना कोई स्कैम हुआ करता था। 2014 के बाद से ये शब्द शेयर मार्केट से लगभग गायब हो गया है। वो बेतुका वोलेटिलिटी जो हुआ करती थी वो गायब हो गई। तो आम निवेशकों का इसमें भरोसा बढ़ा है। दूसरा क्या है कि जिस तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है और कोरोना काल में भारत ने अपना सिक्का जमाया है क्रेडिबिलिटी का, आप देखिए तो लोगों का जो विश्वास बढ़ता है उस सिस्टम पर बढ़ता है, और सिस्टम जब हमारा विश्वसनीय होता है, स्ट्रांग होता है, और उसके चेक बैलेंसेस स्ट्रांग होते हैं। इतना सब कुछ हिंडनबर्ग ने किया, लेकिन हमारा शेयर मार्केट नहीं हिला। उनका अभिप्राय कुछ भी रहा हो, लेकिन हमारा चूंकि फंडामेंटल पर बेस है, चेक बैलेंसेस उसके स्ट्रांग हैं, तो ये लोगों में भरोसा पैदा करता है। आप याद करिए स्कैम शब्द आपने कब सुना होगा, मुझे नहीं लगता पिछले 10-12 सालों में ये शब्द जो है किसी के कान में आया भी होगा। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ अब जो निवेश हो रहे हैं, अब निवेश रियल निवेश हो रहे हैं। आप देखिए तो सब्सिडी को लेकर के नहीं, गवर्नमेंट स्कीम को लेकर के नहीं, यानी कि रियल एंटरप्रेन्योरियल स्किल को प्रमोट किया जा रहा है। यूथ्स को भी इसमें इनवाइट किया जा रहा है,
ये सारी चीजें यदि आम लोगों को आकर्षित करती है निवेश करने के लिए, तो दूसरी ओर हमको ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भी मिलता है। और यही कारण है, मैं इसी लाइन से अपनी बात को रोकूंगा, कि हम लोगों का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो भी कहीं ना कहीं शो करता है कि हमारे 90% जो लोन्स हैं उसको कवर करता हुआ नजर आता है। तो लोगों को यह भी भरोसा है कि हम फिनेंसेस पर देखते हैं या किसी रूप में देखते हैं, तो भारत की आज वित्तीय आर्थिक स्थिति के साथ साथ जो हमारा सिस्टम है वो बहुत मजबूत है और सेफ हैंड्स में है, जिससे हम विकसित भारत की ओर तेजी से अग्रसर हो सकते हैं। इसमें सभी अपनी भूमिका निर्वाह करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल प्रोफेसर अग्रवाल, और इसी के साथ आप तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी। प्रोफेसर अग्रवाल आपका, सुधीर जी आपका, सुजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब सीधा प्रसारण आप कुछ ही पलों में देख पाएंगे। ठीक 11 बजे सत्र की शुरुआत होगी और लगातार जो सीधी तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। और संसद टीवी पर बजट पेश होने की जो प्रक्रिया है वो भी आप पूरी देखेंगे, और उसके बाद भी जो लगातार विश्लेषण है बजट को लेकर वो भी संसद टीवी पर लगातार जारी रहेगा। जी हां, 8वां वित्त बजट पेश करने वाली है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ऐतिहासिक क्षण उनके लिए भी और पूरे देश के लिए भी। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। लोकसभा में वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, तब उनका बजट भाषण आप सुन पाएंगे आपकी अपनी भाषा में। ऑनरेबल स्पीकर, समझ पाएंगे देश का बजट कैसे जुड़ेगा आपके सपनों से, क्योंकि बजट के हर फैसले का असर होता है सीधा आपकी जिंदगी पर। बजट तय करेगा देश के विकास की दिशा और प्रगति की राह। संसद टीवी के YouTube चैनल पर देखिए बजट का सीधा प्रसारण 1 फरवरी सुबह 11 बजे से। अंग्रेजी और हिंदी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं में भी। What is indirect tax? In the case of indirect tax, the burden of tax can be shifted by the taxpayer to someone else. Indirect tax has the effect of raising the price of the products on which they are imposed. Customs duty, central excise, service tax, and value-added tax are examples of indirect tax. When the Finance Minister presents the Union Budget in the Lok Sabha, now you can listen to the speech in your own language. Honorable Speaker, understand how this budget aims to meet aspirations, empower the youth and shape India's future, because every budget decision impacts your life. Budget will define India's growth and progress. Watch it live on Sansad TV's YouTube channel on 1st February 11 AM in English, Hindi and other Indian languages. What is Finance Bill? It contains the government's proposals for levying new taxes and modifying the existing tax structure
or even continuing the existing one beyond the period approved by Parliament. It is submitted to Parliament along with the budget. What is GDP? GDP, or Gross Domestic Product, is total market value of all final goods and services produced in the country over a period of time, usually 1 year. Increase in GDP or GDP growth rate indicates the overall health of the economy. माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, आइटम नंबर 1 श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री सदस्यगण, बजट के बाद राज्यपाल अभिभाषण में आपको पर्याप्त अवसर दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखें। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे, प्लीज। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, राज्यपाल अभिभाषण पे चर्चा होगी। नो तरीका। Honorable Speaker, I present the budget for 25-26. This budget
continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As we complete the first quarter of the 21st century, continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term. However, our aspiration for a Vikasit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us to march forward resolutely. Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Appa Rao had said, "Deshamante matti kadoy, deshamante manushuloy," meaning a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas, focusing on Garib, youth, Annadata, and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy, and innovation, securing energy supplies, promoting exports, and nurturing innovation. For this journey of development, our 4 powerful engines are agriculture, MSME, investments, and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine. Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5.
facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In Phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oilseed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on tur, urad and masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Sri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of Makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, and 3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024. India ranks second largest globally in fish production and aquaculture. Seafood exports are valued at 60,000 crore rupees. To unlock the untapped potential of the marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian Exclusive Economic Zone and high seas, with a special focus
on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, I am pleased to announce a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties. The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. India Post, with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector. MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards
will be issued. Fund of funds for startups. The Alternate Investment Fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. These are supported by the fund of funds set up with the Government of India's contribution of 10,000 crore rupees. Now, a new fund of funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors, our government will undertake specific policy and facilitation measures. To enhance the productivity, quality, and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focused product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees, and exports of over 1.1 lakh crore rupees. Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high-quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. Support for food processing. In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium, and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance, and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment, and grid-scale batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region.
the cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 national centers of excellence for skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skills certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence. Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from high-interest informal sector loans. Building on this success, the scheme will be revamped with enhanced loans from banks, UPI-linked credit cards with 30,000 rupees limit, and capacity building support. Social Security scheme for welfare of online platform workers. Gig workers of online platforms
provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided health care under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 crore gig workers. Investing in the economy, public-private partnership in infrastructure. Each infrastructure-related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare PPP proposals. Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms. Building on the success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households, representing 80% of India's rural population, have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. Urban sector reforms. Building on the July budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an urban challenge fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced in the July budget. This fund will finance up to 25% of the cost of bankable projects, with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans, and PPPs. An allocation of 10,000 crore is proposed in 2025-26. Power sector reforms. We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies. Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033.
Shipbuilding. The shipbuilding financial assistance policy will be revamped to address cost disadvantages. This will also include credit notes for shipbreaking in Indian yards to promote the circular economy. Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list. Shipbuilding clusters will be facilitated to increase the range, categories, and capacity of ships. This will include additional infrastructure, facilities, skilling, and technology to develop the entire ecosystem. Maritime Development Fund. For long-term financing for the maritime industry, a Maritime Development Fund with a corpus of 25,000 crore rupees will be set up. This will be for distributed support and promoting competition. This will have up to 49% contribution by the government, and the balance will be mobilized from ports and from private sector. UDAN regional connectivity schemes. UDAN has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 airports, and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational, and northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, SWAMI, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed and keys handed over to home buyers. Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who were paying EMIs on loans taken for apartments while also paying rent for their current dwellings. Building on this success, SWAMI Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks, and private investors. This fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal will be provided. Tourism for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country
will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth: organizing intensive skill development programs for our youth, including in institutes of hospitality management, providing mudra loans for homestays, improving ease of travel and connectivity to tourist destinations, providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts, and introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance, in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and Heal in India. Medical tourism and Heal in India will be promoted in partnership with the private sector, along with capacity building and easier visa norms. Investing in innovation. To implement private sector-driven research, development, and innovation initiatives announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose. A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative. In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. The second gene bank with 10 lakh germplasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources. We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. We will set up a national digital repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing. Now I move to exports as the fourth engine. We will set up an export promotion mission with sectoral and ministerial targets driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance. It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net, for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria. Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related
to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. A national framework will be formulated as guidance to states for promoting global capability centers in emerging Tier 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry. Our government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable horticultural produce. Cargo screening and customs protocol will be streamlined and made user-friendly. Reforms as the fuel. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the Tax Department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. The services of India Post Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas. NABFID will set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Public sector banks will develop Grameen Credit Score Framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up. To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped Central KYC Registry will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024 to encourage sustained foreign investment, and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light-touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly, and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee
for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavour. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. I now move to fiscal policy. In the July budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavour will be to keep the fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26. Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes. My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidence will reduce marginally. 3. Levy not more than 1 cess or surcharge.
Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure their availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg, whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. I also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches. Export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year
further extendable by another 3 months if required. I also propose to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. I propose to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivize voluntary compliance. However, this will not apply in cases where department has already initiated audit or investigation proceedings. For industry to better plan their imports, I propose to extend the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. This will provide operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement. I now come to my direct tax proposals. In Part A, I have briefly underlined taxation reforms as one of key reforms to realize our vision of Vikasit Bharat. In respect of criminal law, our government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Bharatiya Danda Sanhita. I am happy to inform this august House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. Reforms, however, are not a destination. They are means to achieve good governance for our people and economy. Providing good governance primarily involves being responsive. The Tirukural captures this in verse 542, which reads, "Vaanokki vaazhum ulagallam, mannavan kol nokki vaazhum kudi," meaning, just as the living beings live expecting rains, citizens live expecting good governance. Our government is committed to keeping an ear to the ground and a finger on the pulse
and responding while balancing our national building efforts. The following measures will detail just how our government will, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address. I repeat that sentence, sir. The following measures will detail just how our government, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address the needs voiced by our citizens. My tax proposals are guided by this spirit. The objectives of my proposals are as follows. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Rationalization of TDS and TCS for easing difficulties. Encouraging voluntary compliance. Reducing compliance burden. Ease of doing business, employment and investment. I will come to my proposal on personal income tax towards the end. TDS and TCS, rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefiting small taxpayers receiving small payments. The threshold to collect tax at source, the TCS, on remittances under RBI's liberalized remittance scheme, the LRS, is proposed to be increased from 7 lakh to 10 lakhs. I also propose to remove TCS on remittances for education purposes, where such remittances is out of a loan taken from a specified financial institution. Both TDS and TCS are being applied on any transaction related to sale of goods. To prevent such compliance difficulties, I propose to omit the TCS. I also propose that the provisions of the higher TDS deduction will now apply only in non-PAN cases. In July 2024, the delay for payment of TDS up to the due date of filing statement was decriminalized. I propose to provide the same relaxation to TCS provisions as well. The government under the leadership of Prime Minister Modi believes in Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. In line with this, we brought in updated return facility in 2022 for voluntary compliance by taxpayers who had omitted to report their correct income. Our trust in taxpayers was proved right. Nearly 90 lakh taxpayers voluntarily updated their incomes by paying additional tax. Taking this trust further, I now propose to extend the time limit to file updated returns for any assessment year from the current limit of 2 years to 4 years. I propose to reduce the compliance burden for small charitable trusts and institutions by increasing their period of registration from 5 years to 10 years. It is also proposed that disproportionate consequences do not arise for minor defaults such as incomplete applications filed by charitable entities. Presently, taxpayers can claim the annual value of self-occupied properties as nil only on the fulfillment of certain conditions. Considering the difficulties faced by taxpayers, it is proposed
to allow the benefit of 2 such self-occupied properties without any condition. To streamline the process of transfer pricing and to provide an alternative to yearly examination, I propose to introduce a scheme for determining arm's length price of international transaction for a block period of 3 years. This will be in line with global best practices. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, the scope of safe harbor rules is being expanded. A number of senior and very senior citizens have very old national savings scheme accounts. As interest is no longer payable on such accounts, I propose to exempt withdrawals made from NSS by individuals on or after 29th August 2024. I am also proposing to allow similar treatment to NPS Vatsalya accounts as is available to normal NPS accounts subject to overall limits. In my speech in July 2024, I had promised that all processes, including giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. So I'm happy to announce that digitalization is being made operational now. In July 2024, we brought in the Vivad Se Vishwas scheme to resolve income tax disputes pending in appeal. The scheme has received a great response, with nearly 33,000 taxpayers having availed of the scheme to settle their disputes. I have a few proposals to promote investment and employment. It is proposed to provide a presumptive taxation regime for non-residents who provide services to a resident company that is establishing or operating an electronics manufacturing facility. I further propose to introduce a safe harbor for tax certainty for non-residents who store components for supply to specified electronics manufacturing units. Presently, the tonnage tax scheme is available only to seagoing ships. The benefits of existing tonnage tax scheme are proposed to be extended to inland vessels registered under the Indian Vessels Act 2021 to promote inland water transport in the country. Extension for incorporation of startups. We continue to support the Indian startup ecosystem. I propose to extend the period of incorporation by 5 years to allow the benefit available to startups which are incorporated before 1/4/2030. In order to attract and promote additional activities in the IFSC, I am inter alia proposing specific benefits to ship leasing units, insurance offices, and treasury centers of global companies which are set up in IFSC. Further, to claim benefits, the cut-off date for commencement in IFSC has also been extended by 5 years to 31/3/2030. Category 1 and Category 2 AIFs are undertaking investments in infrastructure and other such sectors. I propose to provide certainty of taxation to these entities on the gains from securities, to promote funding from sovereign wealth funds and pension funds to the infrastructure sector. I propose to extend the date of making an investment by 5 more years up to 31st March 2030. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab
was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle-class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income, other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income, other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honourable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2025.
प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. थैंक यू। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 3 फरवरी 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। What is indirect tax? In the case of indirect tax, the burden of tax can be shifted by the taxpayer to someone else. Indirect tax has the effect of raising the price of the products on which they are imposed. Customs duty, central excise, service tax, and value-added tax are examples of indirect tax. What is consolidated fund? The consolidated fund is made up of all revenues and loans raised by the government. It also includes receipts from recoveries of loans granted by it. All government expenses are paid out of the consolidated fund. No amount can be withdrawn from this fund without Parliament's approval. भारतीय सनातन संस्कृति का महाआयोजन महाकुंभ इस बार मात्र आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, आस्था व श्रद्धा को ही समर्पित नहीं होगा। इस महाकुंभ इस बार विश्व देखेगा भारत की डिजिटल शक्ति, प्रबंधन शक्ति, पर्यावरण संरक्षण और लोक संस्कृति। डिजिटल शक्ति से लैस महाकुंभ में यात्रियों के लिए है डिजिटल सहायक, जो 10 विभिन्न भाषाओं में महाकुंभ
Good afternoon, viewers. Welcome to this post-budget analysis telecast on Sansad TV. I am Tina Jha. With me is my colleague Manoj Verma. So, Finance Minister Nirmala Sitharaman has presented the Union Budget for the year 2025-26 in Parliament, which was her 8th consecutive budget presentation, and in which she outlined the core priorities of Budget 2025, emphasizing 5 key objectives, which are driving economic growth, ensuring inclusive development, boosting private sector investment, strengthening household consumption, enhancing the spending power of India's expanding middle class. The Finance Minister said this budget aims at transformative reforms in 6 areas, which include taxation, financial sector, the power sector, urban development, mining, and regulatory reforms. Also aiming to stimulate economic expansion, enhance infrastructure, improve governance and promote sustainable development across multiple sectors. She reiterated that these remain central to the government's agenda. We'll be talking about some of these broad objectives that the government has outlined in greater detail with distinguished experts who are joining us on the program. I'm delighted to welcome in the studio Dr. Priyadarshi Dash, Associate Professor at Research and Information System for Developing Countries, New Delhi. And also joining us virtually is Professor M.K. Agarwal, Professor of Economics, Lucknow University. Manoj? जी बिल्कुल जाहिर तौर पे जिस तरह के ऐलान किए गए हैं इस वित्त बजट में उसको लेकर अपेक्षा भी थी और वित्त मंत्री जी ने जो इनकम टैक्स को लेकर 12 लाख का जो ऐलान किया वो एक तरह से बड़ा तोहफा है। जाहिर सी बात है, समावेशी विकास की बात है, विकास को कैसे गति दी जाए इस पे जोर दिया गया है बजट में, खासतौर से शिक्षा और स्वास्थ्य के जरिए एक आत्मनिर्भर भारत और साथ ही विकसित भारत का लक्ष्य ये फोकस है पूरे बजट का। लेकिन इसके अलग अलग पहलू हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, उन सभी पहलुओं से आपको अवगत कराने की कोशिश करेंगे जिनका उल्लेख वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में किया है। टीना, Absolutely. So we'll get into the sector specific allocations, the kind of focus that the government has provided to the middle class, to different sectors as well. But before that, let me get in the first reaction from the guest we have with us in the studio. Professor, your first thoughts on this budget. How do you see it building up on the budget which was presented soon after the election 6 months ago? I think you are right. The finance minister presented the budget which sort of prepares the blueprint for the Viksit Bharat, and this is a continuation of the stand they have taken in the last 4-5 years to prepare the country to meet the emerging challenges of meeting sustainable development, making a smooth energy transition towards clean and other areas, solar energy and other areas. So if I see the budget, this sort of tells that story in a very deeper way compared to the past. This time you see that they have gone into the sectors, infrastructure sectors that are crucial to maintain economic growth. But at the same time, how to address the vulnerabilities that people are facing. We are growing, but we have price rises. By ensuring higher medical coverage, by bringing more life-saving drugs to the scheme, John this scheme and others. So there's a kind of blend of the growth objective with social security measures, taking into account the specific challenges faced by the manufacturing sectors, MSME sectors. So overall, the budget is more of a roadmap for the future India that we can visualize in the next 20-30 years. But of course, the immediate priority would be that people see that how the taxation reforms has happened. And it's a great relief for the people at least up to 1 lakh of their income, they are not liable to pay any tax. So overall it looks a balanced budget. So, it's a huge relief for the middle class, but that is one aspect, the taxation part that we'll come to in just a bit. Professor Agarwal, what would be some of the significant takeaways for you, particularly from this budget? Does it meet the expectations that all of us and the different sectors had from Finance Minister Nirmala Sitharaman? See, as far as expectation of different sectors, it is never completed.
but whatever we discussed and whatever we aspired for the, taking the economy forward at very high pace, while taking all on board, that is the inclusive growth strategy and pushing the economy forward, we believe that whatever we discussed in the morning, that came true. Whether it is for the middle class benefits, and in terms of middle class benefits, definitely it is the direct tax benefit. Other than that, there has been a procedural, you can say, smoothness that has been conducted. Senior citizens have been taken care of. Besides, if you are looking at the things through this, what has the Nirmala Sitharaman has done is, that is linking it with the growth strategy. It is not simply a dole out to the, in terms of income tax. There have been indirect taxes also, whether it is the basic custom duty, etc. There has been a great relaxation, and all are being done with an aim to promote Atmanirbhar Bharat Abhiyan. For example, if custom duty has been relaxed on the cancer drugs or other drugs, so what is the objective? Objective is to promote drug manufacturing in India. So given this type of thing, we believe that the budget is very well packaged for inclusive growth strategy and developing new growth centers. Whatever it is called, it is the growth engines that Nirmala Sitharaman has called. There are 4 growth engines she has defined through. And then efficient production structure that has been highlighted very well in this budget. So that is the hallmark. And it is in continuity with the earlier budget, whether it is for the 24-25 or even earlier budget, or it is linked with the next 5 to 10 budgets. You will find that it is the base or the ground for the next 5 to 10 budgets. You can read out what is going to come for the next few budgets. So I believe it is highly growth centric, highly it is equity oriented, and highly it is for the new growth momentum to be generated in the economy. So I believe it is a great source of इंस्पिरेशन फॉर द फर्दर बजट्स। जी बिल्कुल, देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट है, और जैसा निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में कहा कि समावेशी विकास को गति देगा ये बजट, सबका ख्याल रखा गया है इस बजट में। एक तरह से कहा जाए कि सभी वर्गों को कुछ ना कुछ देने का कोशिश की है निर्मला जी ने। मैं प्रोफेसर साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बात हम और दूसरे पहलू पर भी करेंगे, लेकिन बात मैं करना चाहता हूं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, किसानों की, क्योंकि अगर देखिए चाहे मखाना बोर्ड के गठन की बात हो बिहार में, या कपास के किसान की चिंता हो, या किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, इन तमाम सेक्टर्स का निर्मला जी ने अपने बजट में ख्याल रखा है और अधिक से अधिक देने की कोशिश की है। क्योंकि यह बात सच है, क्योंकि हमारी जो कृषि है वो हमारी जीडीपी को ग्रोथ देने का काम करती है, उसे गति देने का काम करती है। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? नहीं, बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को एक रेसिडुअल सेक्टर के हिसाब से नहीं मानना चाहिए जी। हम ये नहीं बोल रहे कि एग्रीकल्चर को हमने कभी इंपोर्टेंस नहीं दिया है, लेकिन कभी कभी ये मान लिया जाता है कि वहां पे डिपेंडेंस ज्यादा है, शायद इसी तरह ही एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन होगा। बट ये जो थोड़ा डीप थिंकिंग है इस बजट में, कॉटन बोर्ड, ये जो मखाना बोर्ड, ऐसा करके जो पोस्ट ऑफिस को एक ज्यादा तो रोल दिया गया है, मुद्रा स्कीम, ये जो स्कीम को प्रमोट करने के लिए विश्वकर्मा जो सब है उनको, तो ये एक तरीके से एक सॉर्ट ऑफ मॉनिटरिंग का अप्रोच रखा गया है कि जो स्कीम सरकार लागू करती है वह सही तरीके से इंप्लीमेंट होता है कि नहीं ग्राउंड में, और अगर कुछ गैप्स रह जाता है तो शायद ये पोस्ट ऑफिस का जो 2.5 लाख जो सेवक होंगे जी, उनके थ्रू ये इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कि प्रोग्राम का सक्सेस का पैटर्न क्या है, ये सच में मदद करता है कि नहीं टू जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अदर थिंग्स। उसको छोड़ के जो एमएसएमई और जो स्टार्टअप को जो बढ़ावा दिया गया है, जो क्रेडिट गारंटी के जरिए वो दिए रहे, वो भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे लास्ट जो पीछे प्रेजेंट किया गया कल, उसमें ये बोला गया है कि अर्बन डिमांड हैज स्लोड डाउन, लेकिन रूरल डिमांड अभी भी काफी फेवरेबल है, जो जिसके वजह से अभी कंजप्शन, ओवरऑल कंजप्शन जो इंडियन इकोनॉमी में वो अच्छा है। तो रूरल सेक्टर का ये जो मोमेंटम है, उसको मेरे ख्याल से बजट का जो
जो ऑप्टिमिज्म जो क्रिएट किया गया है, खाली फाइनेंस दे देने से नहीं होगा, फाइनेंस के साथ जो इंसेंटिव का पैकेज करना था थोड़ा बहुत इसमें हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा दिशा दिखा रहा है। जी बिल्कुल टीना, जैसे देखा जाए कि दलहन के मामले में देश आत्मनिर्भर हो, दालों के मामले में देश आत्मनिर्भर हो, इस दिशा से भी एक 6 साल का मिशन शुरू करने की सरकार ने, वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में घोषणा की है। टीना, You're right, Manoj. And since we're talking about agriculture, let me remind our viewers that in the budget that was presented soon after the elections in July, agriculture was among the top priorities in the list of 9 priorities that the government had announced. In this budget, we are seeing the consistent focus on the critical agriculture sector, which contributes significantly to the country's growth, also generates significant employment, very critical for the country's growth. Professor Agarwal, and towards agricultural focus, we're seeing a new scheme coming up, the Dhan Dhyan Krishi Yojana, which is going to cover 100 districts with low yields, modern crop intensity and below average credit parameters. Now, how do you see this strengthening our efforts, the existing efforts of the government towards increasing productivity and at the same time increasing resilience? Hey, this is the strategy. You know, those who were outside the, growth momentum of the nation or the economy, these were the outliers. Just look at it. These were the outliers, low productivity districts. Now they are being transformed into high productivity, high value addition crops. So that is the strategy, and this is, you can say, convergence. What we call in economics, it is the convergence moment, that is those who have been lagging, they are given a big push so that they are moving with high growth, so that they can come up with the mainstream growth momentum. And this is about it is not only in one state, it is across the states. Similarly, if you are looking, this is for the Atmanirbhar. So you will find many, objectives are being fulfilled through one stroke. That is, Atmanirbhar Bharat Abhiyan is being fulfilled. Similarly, if you are looking at the urea, you will find that it is being established in the eastern part of the country, so that we are Atmanirbhar in terms of urea supply to the farmers. Similarly, you will find that Kisan credit card, they are being recharged double. That is, instead of 3 lakh rupees, now it will be 6 lakh rupees. So credit flow has also been increased so that they don't feel any constraint with regard to the availability of funds for taking agriculture forward. So this is the way that this strategy is there, and you'll find the rural sector has been given a big push here. This is what we were discussing in the morning, that the economy is being pushed across the sectors, whether it is the agriculture sector. So what earlier we were thinking about, that agriculture is a lagging sector or a dependent sector, now no more it is a dependent sector. The way Modi government is putting thrust on the agricultural sector, it will be a great propellant in the coming years. Already the growth rate, if you are looking through the economic survey for the current fiscal, you will find the growth rate is much higher, after being higher in the earlier years also. So it will be a propellant for the overall economic growth rate, and that's why we are chasing a growth rate of 7% plus in the next few years. So that's why we should look with this perspective, and this is the strategy that rural income and farmers' income has to be doubled in the coming period very soon. जी बिल्कुल अग्रवाल साहब, मैं थोड़ा कृषि क्षेत्र से आगे बढ़ते हैं और एमएसएमई सेक्टर को जिस तरह से प्राथमिकता बजट में दी गई है और रोजगार को सृजन कैसे हो एमएसएमई सेक्टर के जरिए, इस पर खासा फोकस किया गया, काफी जोर दिया गया है। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? देखिए, इसमें सबसे बड़ा गिग वर्कर्स को अभी तक हम लोग अकाउंट फॉर नहीं कर रहे थे जी। अगर आप गिग वर्कर्स को देखते हैं तो एक बहुत बड़ा अर्बन वर्किंग क्लास डेवलप हो चुका है जो अपने दम पर काम कर रहा है। उनके लिए एक स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना, उनका रजिस्ट्रेशन कराना और उनके सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखने से क्या होगा,
ये जो सेक्टर इमर्ज किया है करोड़ों लोगों का, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सेक्टर बहुत बड़ा काम करेगा। अपने ऊपर काम करने के, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर है और जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम उनकी सोशल सिक्योरिटी को भी ध्यान में रख करके चलते हैं तो मुझे लगता है एक ये बड़ा बूस्ट हो रहा है। दूसरा, जैसे बात आ रही है कि एमएसएमई सेक्टर को, और इसमें एक विशेष रूप से ध्यान दीजिए, जिस सेक्टर को अभी तक हम लोग सुनते नहीं थे, अभी 2-4 वर्षों से सुनना शुरू किया है, टॉयज को लेकर के जो एक अलग बोर्ड गठित हो रहा है। भारत की अगर डेमोग्राफी को आप देखते हैं और विश्व स्तर पर प्रधानमंत्री जी का जो इस पर फोकस है, इस पर फोकस ठीक वैसे ही है जैसे स्टार्टअप पर है प्रधानमंत्री जी का। आप देखेंगे एक बहुत बड़ा इमर्जिंग सेक्टर टॉयज बन रहा है, एमएसएमई सेक्टर। तो आप सेक्टर स्पेसिफिक होकर के देखते हैं तो आपको लगेगा नए नए सेक्टर को सृजित किया जाए ताकि वो बहुत तेजी के साथ इमर्ज कर सके, न केवल डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए, न केवल जो है अच्छी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, न केवल अपने स्टार्टअप के माध्यम से या अच्छी पूंजी के माध्यम से, बल्कि उनको ग्लोबल लेवल पर भी कॉम्पीट कराने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो ये इस तरह के जो सृजन हो रहा है, मुझे लगता है ये भारत के लिए नए नए ग्रोथ इंजन का काम करेगा। Rightly said, Professor, and that's why the Finance Minister described the MSME sector as the second engine of growth in her budget speech. She said through the measures that she's announced today, the focus is on the 5.7 crore MSMEs, which include over 1 crore registered businesses, employing 75 crore people and contributing 36% to India's manufacturing. The MSMEs, remember, play a very crucial role in positioning India as a global manufacturing hub and accounting for 45% of the nation's exports as on date. Professor Dash, how significant are the measures that the Finance Minister announced for the MSME sector in her budget? Yeah, I mean, as I said, the credit guarantee cover by increasing from 5 crore to 10 crore and for the startups from 10 crore to 20 crore. And then a specific incentive for those who are exporting MSMEs. So this is kind of not giving incentive in a blanket way, but rather targeting the incentives the way it works. Like those who are exporting MSMEs, to giving them additional incentives so that they could sort of focus on what are the marketing strategies they need, how sort of product development efforts they should do. If you compare that with the overall manufacturing ambition, by creating national manufacturing mission, and then thinking about skilling, and then expanding the capacity of IITs and others. So overall, it's a mix of promoting the industry, preparing the people to sort of work in those sectors, and at the same time extending social security to the digital platform workers, gig workers. So all together, the industry push that they give in the third pillar, like investment as the engine, overall it looks quite impressive in terms of the intent of the budget. Now everything will boils down to the implementing ministries, that how do they target those implementation and see that this actually works, because manufacturing is the subject matter of discussion now. Despite of so much of policy announcement, made in India, make in India and other things, this PLI scheme, we have not been able to give the result which would sort of impress everybody that yes, we have done something. Sure. Before we proceed and discuss another sector, let me welcome on the program Professor Charan Singh, CEO, eGrow Foundation. Professor, glad to have you with us on this telecast. Your first reaction, sir, on this budget, which is in a way building up all the measures, all the announcements that the government had made back in July 2024. I'm very impressed with this budget, and I think firstly, the most important thing, the objective that they spoke about, Viksit Bharat 2047, I see that it is in the same direction. That is something very important. Secondly, I see continuity. In the last budget, the finance minister had spoken about youth, women, farmers, poor people. That continuity is there. The third, the FM has pointedly spoken about the fiscal policy, about the financial sector policy. I'm very impressed because the budget
is a tool of a fiscal policy, and so much of emphasis directly being given to both is very impressive. I'm also very impressed. We all knew in the last few months there's a big problem coming up on consumption, and we were all saying that the middle class needs to be now supported. For the categories for which policies and the budget has been announced, you would notice that the emphasis on the middle class has improved significantly. Consequent to that story on the middle class, the tax reforms, firstly, the ones which are being announced to be presented in the parliament next week, as well as the tax rates which have been announced today, specifically on senior citizens, and tax exemption for incomes less than 12 lakhs, I think is path-breaking. So the middle class has been catered to, and that means this government listens and they analyze, and whatever is possible, then they accommodate. With tax buoyancy taking place, little headroom available, I think the budget has done great justice to the objective of the middle class. Overall, I would say, given the situation of the economy, a slowdown that has happened, the government is trying to correct that, giving it an impetus on MSMEs, as you heard it. They have also been talking about female labor force participation, daycare centers and what all, that's going to happen, as well as industry. The last point I would like to mention in this is the trust factor. The trust factor is being emphasized, and I'm very happy with that, because in case you have trust on the private sector, then you can invite the private sector to shoulder work in Viksit Bharat March. Otherwise, for the public sector, yes, you can crowd in investment, capital expenditure can increase, which has increased. The fiscal deficit is in control, so rating agencies must be happy. The exchange rate will be in control. All that is being done. But the trust that is being now inspired through the private sector, I think is very, very good. So I'm very impressed. प्रोफेसर चरण सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि इनकम टैक्स में जो 12 लाख तक की छूट का ऐलान किया गया है, जाहिर तौर पर इसकी उम्मीद एक बड़े वर्ग को थी। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं, और हमें विस्तार से बताएं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इकोनॉमी पर, लोगों के जीवन पर, क्योंकि एक वर्ग है देश में जो पिछले 10 साल में गरीबी रेखा से ऊपर उठा है। एक नया मध्यम वर्ग ऐसा है जो देश की अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है, जिसकी तरफ सरकार बार बार इशारा कर रही है। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? देखिए, जो हमारा मध्य वर्ग है, ये कुछ वर्षों से आप जानते ही हैं, कुछ इन्फ्लेशन की मार थी और कुछ एम्प्लॉयमेंट का भी जोर था, अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का आपने आंकड़ा देखा है, कल इकोनॉमिक सर्वे में आया है कि 6% से 3% पर आ गया है। इसका मतलब वहां पर भी, उस पहलू पे भी थोड़ा काम किया गया है, लोग रोजगार उनको मिल रहा है। पर क्योंकि थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन थी, तो वो आपकी जो अर्निंग होती है, जो कमाई होती है, उसकी वैल्यू गिरती जाती है। एक बात आपने देखा होगा, और कुछ लोगों ने और हम सब लोगों ने, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंज्यूम करनी बंद कर दी थी, और तो और पीछे रह गया। जो जीवन बीमा है या जो लाइफ इंश्योरेंस है, वो लोग नहीं देते हैं, क्योंकि अगर पहली कटौती करते हैं तो वहां करते हैं। उन तरीके से एक स्ट्रेस दिख रहा था कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो थोड़ा अपना खरीदा खरादी में कमी कर रहे हैं, या कुछ चीजों में ऐसे दिख रहा है कि उन पे प्रेशर बढ़ रहा है। जबकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, कीमतें बढ़ रही थी, आपकी आय में उस तरीके से कुछ कटौती होती जा रही थी, इरोजन हो रही थी, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, मेडिकल का खर्चा, ये सब बढ़ रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हैं? तो जिस तरीके वित्त मंत्री ने आज सीधा 12 लाख पे कह दिया कि आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का, इसका मतलब 12,75,000 तक टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये मध्य वर्ग के लोग, कुछ तो जैसे आपने कहा कि लो इनकम ग्रुप से या पॉवर्टी रेखा से ऊपर आ रहे थे, पर कुछ जो ऐसे थे जिनको एम्प्लॉयमेंट का चैलेंज आ रहा था या इन्फ्लेशन का चैलेंज आ रहा था, उस मध्य वर्ग के जो लोग हैं उनके हाथ में भी कैश ज्यादा आ गए। तो जब उन्होंने कहा कि अब टैक्स स्लैब्स में भी उन्होंने चेंजेस किया है, पर उन्होंने जो अपने कैलकुलेशन बताया कि जो एंट्री लेवल पे या मिडिल इनकम ग्रुप है, उनका इस
12 लाख तक लिमिट ले जाने से 80,000 रुपए का उनको जैसे हाथ में फायदा हो गया। 80,000 का मतलब आप देख लीजिए कि करीब 6,500 रुपया हर महीने का उनका हाथ खुल जाएगा। वो कहाँ जाएगा पैसा? वो खर्च होगा। जब पैसा खर्च होगा, जिन चीजों को रोक के रखा हुआ था, जब पैसा खर्च होगा डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उससे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, उससे एक साइकिल शुरू हो जाएगा अर्थव्यवस्था में। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, कुछ ट्रेडिंग बढ़ेगी, तो जो पिछले सेकेंड क्वार्टर में 5.4% ग्रोथ आया था, जो हमारे अनुमान से काफी कम था, उस अनुमान के कारण कंजम्पशन के प्रेशर दिख रहा था, उसको इन्होंने रेक्टिफाई किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये लोग विश्लेषण करते हैं, बात सुनते हैं ये सरकार, और उसके बाद एक उपाय निकालते हैं। मेरी राय में ये उपाय ठीक निकाला है। इससे कंजम्पशन भी बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसा भी आएगा, इकोनॉमी का साइकिल दोबारा शुरू हो जाएगा। मेरी राय में ये कदम बहुत अच्छा हुआ है। और जो लिमिट इन्होंने 12 लाख पे रखी है, वो भी बड़ी अच्छी लिमिट रखी है। आप कह सकते थे 6 से 9 कर सकते थे जी, 6 से 10 कर सकते थे, पर जिस तरीके इन्होंने लिमिट रखी है उसका बड़ा अनुमान लगा के रखी है कि 80,000 रुपए का फायदा एक पुरुष महिला को मिल जाएगा जो कमा रहे हैं, उससे इकॉनमी को कितना फायदा होगा। तो मैडम ने, एफएम ने, ऑनरेबल एफएम ने कहा कि ये सारी जो हम लोग इनकम टैक्स पे रियायतें दे रहे हैं, उसका हम लोगों को कितना एक चोट पड़ रही है। पर क्योंकि टैक्स बॉयंसी है, जीएसटी का रेट अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, हम लोग इसको अफोर्ड कर पाए हैं। You're right, Professor. So while you know that increased income tax exemption, Professor Dash, provides a massive welcome relief to the middle class who is rejoicing, the markets have turned red to this kind of announcement. What are the implications that you see in the coming days of this measure, which benefits the middle class, and they had been anticipating, demanding this from the finance minister, but on the government's purse, on the markets? See, I think we have to see it holistically. On the fiscal front, the macroeconomic management has been good, as she reiterated in the budget, that the fiscal consolidation will continue. But if you see the media coverage in the last, on the run-up to the budget, there have been a few concerns as well, that the wage has not grown the way it should have increased. I'm not going into the statistics, whoever has written, that may be subject to methodology and data they have used. Urban demand has gone down. Yes. So the multiplier role that the consumption demand that will play in fueling growth, along with capex, it is going to happen as Dr. Singh mentioned. But the whole thing would depend on how are they sort of managing the burden on the exchequer. The burden on the exchequer is that the pay commission has been announced. Now in 1 year down the line, there will be a large payout. So there is a lot of optimism that it will go into 2.57 more than 2.57 than 7th pay. So the fiscal room that the government is enjoying now probably will not worsen, but it will kind of be a situation where they have to choose what sort of incentives they can offer. But otherwise, the consumption is going to increase because the disposable income will increase because of this thing, because you are not paying more in terms of the tax. So that is less leakage from your income. So you will spend more. Capex is generating more income anyway because that is project expenditure and building of infrastructure. So overall, it looks quite favorable on the consumption side. So investment and the consumption, the two critical enablers of the economy, for the time being looks quite favorable. Now, how the global uncertainty will play out, how will be the response of the Trump administration to some of the things that the Biden Trump administration has indicated in terms of tariff and other things. So if those things doesn't escalate and the global uncertainty sort of meddle down or sort of precipitate around what has been already mentioned or what has been highlighted through the World Economic Outlook by IMF and World Bank Outlook,
then I think domestic economy will be on the rail, on the track. Not much mismanagement is going to happen that way. Right. So we're going to talk about, discussing about some of the other important announcements made by the Finance Minister in her speech this morning. But for those of you who missed listening to her 1.5 hour long speech, here is a quick highlight of some of the important announcements made by the Finance Minister in her 8th consecutive budget. Vikasit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas, focusing on Garib, Youth, Annadata and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our four powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. जाहिर तौर पे जिस तरह निर्मला जी ने अपने बजट में इस बात का जिक्र किया कि सरकार का फोकस पिछले 10-11 वर्षों में खास तौर से गरीब कल्याण योजनाओं पर रहा है, यूथ पे रहा है, अन्नदाता को किस तरह से आर्थिक दृष्टि से मजबूत किया जाए, इसका फोकस भी इस बजट पे देखने को मिलता है। पहले भी इस तरह की जो हमें देखने को मिला है, और साथ ही नारी शक्ति को किस तरह से आर्थिक सामाजिक दृष्टि से मजबूत किया जाए, इस बार भी उस पर फोकस रखा गया है। निर्मला जी ने इसका जिक्र किया। प्रोफेसर चरण सिंह जी, मैं आपसे और समझना चाहूंगा, खासतौर से जो 12 लाख की इनकम टैक्स का मुद्दा है, मैं इसलिए इस पर चर्चा करना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, क्योंकि एक देश में एक सर्विस क्लास है जिसको लंबे समय से बहुत अपेक्षाएं थी। सरकार ने जीएसटी जैसा सुधार किया, सरकार के पास पैसा भी आया और सरकार ने उस पैसे को एक अपने खजाने को, एक तरह से मैं कहूं राजकोषीय घाटा एक चुनौती है, लेकिन साथ ही देने की भावना जो है सरकार की, वो दिखाई देती है। आप कैसे देखते हैं जो सर्विस क्लास है? 8वां वेतन आयोग भी सरकार ने अनाउंस किया है। बिल्कुल, सरकार ने 8वां वेतन आयोग अनाउंस किया है, तो उससे भी तो मिडिल क्लास को फायदा हो ही रहा है। उसके ऊपर हाउसिंग जो इन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण और प्रधानमंत्री अर्बन हाउसिंग स्कीम्स अनाउंस की, उसमें भी फायदा हुआ। उड़ान स्कीम जो किया है, और अभी इस बार के बजट में भी किया है, जहां वो कह रहे हैं कि 120 और एयरपोर्ट्स बनेंगे और उड़ान स्कीम का फायदा होगा। सो जो हवाई चप्पल से हवाई जहाज की जो स्कीम थी वो भी हुई। उसके अलावा जो आयुष्मान स्कीम्स निकाली, जो इंश्योरेंस स्कीम्स निकाली, वो सब, और मुद्रा लोन में जैसे लिमिट बढ़ाया, वो सारा एक मिडिल इनकम ग्रुप को ही एड्रेस कर रहा है। और मेरी राय में हम ठीक कह रहे हैं कि मतलब जिस तरीके का बजट से पहले काफी लोग कह रहे थे कि मिडिल क्लास को नहीं मिल रही है राहत और वो कंजम्पशन पे इम्पैक्ट दिख रहा है, वो ठीक बात है। पर क्योंकि ये बात सामने आई और क्योंकि थोड़ा स्लो डाउन इकोनॉमी में सेकंड क्वार्टर में स्पेशली हुआ, तो सरकार ने उसका रेमेडियल मेजर निकाला, जिसके नीचे ये जो 12 लाख की बात हुई। अब जो डायरेक्ट टैक्स कोड की बात आ रही है, जो अगले हफ्ते कह रहे हैं कि हम लोग अनाउंस करेंगे, उसमें भी जो समझ में आ रहा है कि सिंप्लीफाइड होगा, कॉम्प्लायंसेस भी सिंप्लीफाइड होंगी, और स्टैंडर्ड डिडक्शंस के अलावा जो बाकी के डिडक्शंस आती थी जो कॉम्प्लेक्स कर देती थी टैक्स सिस्टम को, वो सारी जैसे वो रैशनलाइज कर दी जाएंगी। उससे टैक्स सिस्टम एकदम सिंपल हो जाएगा।
एक साइड में जो कंप्लायंस का डर था कि इतना अनसर्टेनिटी रहती है टैक्सेस में, इतने टैक्स के स्लैब्स हैं, इतने उसमें डिडक्शंस हैं, उनको आप एक किस्म का कंफ्यूज ही रहते हैं कि कहाँ पे मुझे किस उसके नीचे राहत मिल सकती है। वो सारी चीजें सिंप्लीफाई कर दी जाएंगी अगले हफ्ते। तो उससे दो तरीके से एक मिडिल इनकम जो ज्यादातर टैक्स का बर्डन हैंडल करता है उनको फायदा होगा। एक तो टैक्स का अमाउंट कम हो गया क्योंकि डिडक्शन बढ़ गई। उसके बाद टैक्स स्लैब्स रिवाइज कर दिए गए, और टैक्स स्लैब्स भी जो रिवाइज किए गए वो बड़ा सिंपल से कर दिए गए। 4 लाख रुपए तक निल है, 4 से 8 5 है। देखिए अब मल्टीपल ऑफ 5 पे चल रहे हैं, बड़ा सिंपल चल रहा है। 4 से 8 5 है, 8 से 12 10, 12 से 16 15, 16 से 20 20, 20 से 24 25 और अबव 24 लाख 30% है। टैक्स कलेक्शन तो करना है, टैक्स कलेक्शन जरूरी है। टैक्स कलेक्शन के कारण आप फिर आगे एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज ये सब दे सकते हैं। वैसे भी जो टैक्स कलेक्शन हमारे देश में है कुल मिलाकर, इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉरपोरेशन, लोकल टैक्सेस, स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस, कुल मिलाकर 17% ऑफ जीडीपी बनते हैं। विदेश में जिस अमेरिका से हम लोग हमेशा अपने आप को कंपेयर करते हैं, वहां पर 35% ऑफ जीडीपी का टैक्स कलेक्शन है। स्वीडन वगैरह में 40% से ज्यादा है, हमारे यहाँ पे 17% है। सो टैक्स कलेक्शन तो करना है क्योंकि हम लोगों ने जो पहले ऋण ले रखा है उस पर भी इंटरेस्ट पे करना है, सब्सिडी है, सरकार चलनी है, पुलिस फौज सब चलना है, तो टैक्स कलेक्शन तो करना है। पर उसमें जो थोड़ी सी गुंजाइश जीएसटी के बॉयंसी से मिल रही है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की बेटर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रही है, वो सब का लाभ फिर अभी मिडिल इनकम ग्रुप को दिया जा रहा है। जिस हद तक दिया जा रहा है, जैसे कहते रहे जितनी चादर है उतना ही आप पैर पसार सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, आप कह सकते हैं कि 18 लाख क्यों नहीं किया है, या टैक्स स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों नहीं बढ़ा दिया है। पर मैं बार बार एक बात कहता हूं, जितनी हमारी टैक्स कलेक्शन है, जो हमारे कंपलसरी एक्सपेंडिचर हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए आप उतना ही कर सकते हैं जितनी आपकी चादर है। तो मेरी राय में ये उस मुताबिक ही किया गया और उतना ही किया गया है। एक बात मैं और आपको कहनी चाहूंगा, जो मेरा इन सरकार के साथ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहा है, और खास करके कोविड के टाइम पे, और मैं एक अर्थशास्त्री होने के नाते कोविड के टाइम पे बोल रहा था दिल खोल के आप थोड़ा सपोर्ट करिए। पर उस टाइम पे सरकार से मुझे मैसेज आया था कि अगर बुखार 102 है और 2 क्रोसिन की जरूरत है तो 2 ही दी जाएगी, 4 नहीं दी जाएगी। मैंने ये देखा है कोविड के टाइम भी जितना दवाई की जरूरत है और जितनी नौबत है उतनी दी जाती है, क्योंकि हमारी चादर उतनी है, हम ज्यादा पैर पसार नहीं सकते हैं। वो एक चीज मैं आज तक देख रहा हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, वो भी जरूरी है, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है, वो क्राउडिंग इन करता है, वो भी बढ़ाना है। साथ में मिडिल इनकम को थोड़ा राहत भी देनी है, साथ में कंटिन्यूटी रखनी है एग्रीकल्चर सेक्टर, फार्मर्स के लिए, पुअर पॉपुलेशन के लिए, वो भी हमने कायम रखना है। ये सारी चीजों का एक मेल जोल, बैलेंस्ड अप्रोच करके जो हो रहा है वो मुझे ठीक लग रहा है। अगर आप टैक्स कलेक्शन देखेंगे तो जो आप कह रहे थे ना अभी कि मार्केट क्यों नीचे गिर रही है, देखिए अगर टैक्स कलेक्शन देखेंगे, ये नहीं कि इनकम टैक्स एकदम क्रैश कर गया है। इनकम टैक्स में भी अगर आप ध्यान से देखें तो जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं, रिवाइज्ड एस्टिमेट का आंकड़ा है 12,57,000 करोड़ का है, और वो बढ़कर 14,38,000 करोड़ तक आ रहा है। मतलब ये नहीं कि इनकम टैक्स में आप लुट रहे हैं, वैसी बात नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि अगर इस टाइम पे मार्केट थोड़ा रेड में जा रही है, जैसे जैसे वो आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे वो देखेंगे कि बैलेंस्ड है। जहां तक जीएसटी का सवाल है, जीएसटी तो अपनी बॉयंसी कर ही रहा है। अब आपका सवाल यह हो सकता है कि टैक्स कलेक्शन इतना अच्छा कैसे हो रहा है, सब ठीक ठाक है कि आंकड़ों में कुछ आर्टिफिशियल बॉयंसी डाली गई है? नहीं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा हुआ। आपने आज भी देखा है कि वॉलेंट्री टैक्सेशन के लिए स्कीम्स जारी कर दी गई हैं, और वॉलेंट्री टैक्सेशन के अंदर भी 2 साल के लिए और पिछले 5 साल का आप करेक्शन कर सकते हैं। तो जहां तक मुझे याद है, स्पीच में मैं सुन रहा था 9 लाख के करीब लोगों ने उस वॉलेंट्री स्कीम का फायदा उठाया है। तो उससे भी तो टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ रही है, और उसका यह मतलब है कि जो टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस हो रहा था उसके ऊपर थोड़ा कर्टेल किया जा रहा है। उससे क्योंकि टैक्स बॉयंसी बढ़ रही है, आप ये सब कर पा रहे हैं।
Professor Agarwal, since we're talking about income tax exemptions and the relief that it provides to the middle class, let me also ask you a related question on the new income tax bill which the government intends to bring and which has been announced. Professor Agarwal, what is your sense? How is the bill going to look like? What is going to be its objective, if I may ask you, sir? With regard to income tax, it has been a great relief to the middle class because they have been asking this type of relief for last several years, although there have been some relief. But it has been my assessment, and it has been properly aired, that this time government is not going to provide a small benefit. They are going to provide a big shift in the income tax limit besides the new slabs. So already they are there. The purpose is there. Number one, everyone may ask that any budget is to please the public. Definitely it is for the political bosses to please the public. But more than that, there is economic sense in providing this great relief. Already the Indian economy is towards the buoyancy in terms of the growth momentum and in terms of investment. So what the government wants, that there is a private capital formation. It is there, and they are going to save, they are going to spend. Both activities are going to be enhanced. If they are going to save, this will lead to capital formation for fresh investment in the economy. Secondly, if they are going to spend, this will boost the demand in the economy, and Indian economy is now blessed because of its large population and because of the possibility of demographic dividend that Indian economy may benefit. So this may invite foreign investment also, because the foreign players are looking for a safe haven when there is a growth possibility. So Indian economy, in the current global perspective, it is only the Indian economy that has a very big market as well as big investment opportunity. So that's why this income, because Nirmala Sitharaman ji, when she was deliberating upon this, she was definitely articulating this type of approach, that this is not simply a relief to the middle class. Simultaneously, middle class may contribute through their spending, through their savings for the investment, and this will generate new growth momentum in the economy. So this is a great relief. Besides that, what is more, that there are two more things that should be linked again with the growth. One is in terms of rent earnings. There has been raising the limit from 2.4 lakhs to 6 lakhs. Secondly, there has been a raising in the income ceiling for the senior citizens for TDS. So both will lead to, in terms of the savings, capital formation, as well as expenditure. And where it will lead to expenditure by the things, it will generate investment in the real sector, and real sector generates employment in the unorganized sector. Besides, it generates demand at the masses level. So that's why I say that things will be better through this model. Professor Dash, a related question on the income tax bill, because it's something which is going to be announced next week, and the provisions, of course, we'll know in greater detail in the days to come. But how do you see it in continuity with the several reforms that the government has brought about over the last few years, which include faceless assessment, taxpayer charter? Also, there have been ways to facilitate ease in self-assessment. With this bill now coming about, do you think the ecosystem that the government is trying to build, wherein trust first and scrutinize later, that will in a way take shape and strengthen itself? I strongly agree, because what the economy survey yesterday emphasized, if you want to imagine an economy which is promoting market deregulation, self-regulation, so all these new mantras of success that the market economies have promoted over time, it's basically giving freedom to people. So what you emphasized is not a one-off reform that has happened. Over time, the Indian tax administration has learned that you cannot go with a carrot and stick approach.
you can only mop up higher tax revenue if the people are convinced that they are contributing to the development by paying taxes. So that has been the convincing factor in the last several budget speeches. In fact, Finance Minister herself has given 8 budgets. So over time, they have prepared people to take the responsibility to pay tax. And we have seen enough of digital technology applications in income tax simplification. So both have made it so easy for people. So that they realize that they are not burdened to pay tax. They feel that it's a responsibility to pay tax, and they are cooperating with the government. So what you said, that people voluntarily coming and paying, that is definitely happening. And more than that, the reforms that has happened in the simplification of the forms, the sufficient time to file the returns, and timely refund of the taxes. So all these have sort of prepared the new generation, actually the young mass, to take part in nation building exercise. So I see it as a overall paradigm shift, and you have to match with the economic survey ambition that we are making a smooth transition towards a deregulated economic system. I think there are a lot of stigma attached to deregulation, so it's better to say that more market-friendly economy. So if we say that, I think people are cooperating with that. And this ecosystem is one can say that we can prove as one of the leading emerging market if we can live with that sort of ecosystem and make people convinced to be part of that transition. जी बिल्कुल प्रोफेसर साहब, अगर बात हम कर प्रबंधन की करें, जिस और प्रोफेसर चरण सिंह जी ने इशारा किया था कि जो कर प्रबंधन का बेहतर तरीके से पिछले 10 वर्षों में सरकार ने उपयोग किया, जनता को प्रेरित किया कि अधिक से अधिक अपने इनकम टैक्स के लिए भरने के लिए आगे आए, और उसका दायरा बड़ा है और उसका परिणाम कर प्रबंधन के जरिए ही हुआ है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है, क्योंकि भारत का जो उभरता हुआ मध्यम वर्ग है उसके खर्च करने की शक्ति बढ़े, इस ओर इशारा किया है। सरकार चाहती है कि निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, सरकार ने उसके लिए प्रावधान किए हैं, साथ ही घरेलू खर्च में वृद्धि हो, इस पे भी सरकार का जोर रहा है। जो उभरता हुआ मध्यम वर्ग है, इसको आप कैसे देखते हैं, खासतौर से सरकार की जो अर्थव्यवस्था को लेकर घोषणाएं रही हैं इस बजट में? बहुत सही प्रश्न आपने पूछे। जैसे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन बोले, ग्लोबल हब फॉर टॉयज, ये जो स्पेसिफिक सेक्टर्स है, टर्मरिक बोर्ड कुछ दिन पहले बनाया गया है देश में, ये जो है ये एक फोकस्ड अप्रोच है, क्योंकि देश में अगर इनकम बढ़ेगा तब जाके पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, और उसमें से इंडस्ट्री जो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी है उनका इनकम बढ़ेगा। जब हमारा इनकम बढ़ेगा ही नहीं तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा नहीं। तो इनकम बढ़ने के लिए इस बजट में क्या प्रावधान किया गया है, जैसे उन्होंने एक्सपोर्ट मिशन बनाए हैं, एक एक्सपोर्ट मिशन बनाने के लिए जो अनाउंस किया गया है, उसी का सोच वही है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट को हमने फोकस करके प्रमोट करें, क्योंकि देश हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमी काफी बड़ा है, इसके वजह से हम कभी कभी जो ग्लोबल क्राइसिस होता है उससे बच जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम निर्यात को ना बढ़ा दें। तो निर्यात के क्षेत्र में जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन बनेगा, जो टॉयज के क्षेत्र में जो खादी सेक्टर्स है, जो अदर MSME सेक्टर्स है, उसमें जो फोकस गया है, उनका कुछ बुनियादी चैलेंजेस रहता था। क्रेडिट टाइम पे मिलता नहीं था, उनका मार्केटिंग में कोई असिस्टेंस नहीं हो पाता था। तो ये जो इकोसिस्टम कुछ मिसिंग था, जो उनको कनेक्ट नहीं कर पाता था ग्लोबल मार्केट के साथ। आप देखेंगे पिछले कई सालों से कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लिए गए हैं जो मार्केटिंग क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट क्षेत्र में, लॉजिस्टिक्स में जो एक ओवरऑल चेंजेस लाए हैं, वो शायद हमारा देश का जो मध्यम वर्ग है उनको अवसर देता है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट प्रमोशन, रिसर्च एंड इनोवेशन, ये कुल मिला के जो एक माहौल बनाए हैं, ये अगर हम सस्टेन कर पाए तो ये एक अच्छा एक दिशा दिखाता है और एक ऑप्टिमिज्म
मतलब यंग मास को दे सकता है कि आप देश में कुछ अपना उद्यम कर सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप जॉब क्रिएट कर सकते हैं। इस टाइप का एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिल सकता है। लेकिन एक बजट है, 1 साल के लिए वो एलोकेशन होता है, आगे कैसे होगा ये सारा डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको लागू करें और लोगों का इसमें भागीदारी कितने रहे और मार्केट कितना सपोर्ट करता है। जैसे प्रोफेसर सिंह बोल रहे थे, प्राइवेट सेक्टर हैज टू प्ले ए वेरी बिग रोल इन दिस। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर का पीपीपी स्कीम भी अनाउंस किए हैं। तो कुल मिला के इस सारे इशू को आप जोड़ के अगर देखेंगे तो कुछ है जो रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करेगा, कुछ है जो इमीडिएट प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए है, जैसे क्रेडिट वगैरह ये सब है, कुछ है जो प्रिपेयर करता है इकोनॉमी को आगे, जैसे यूथ एंड वुमेन स्टार्टअप के जरिए ये सब है। तो मेरे ख्याल से इसी तरह हम सोच सकते हैं। Right. So we will talk about some of these reforms that you're indicating to. What are some of the measures that have been announced to enhance participation of the private sector, particularly in our growth story? At the same time, how have the other sectors gained, for example, the infrastructure sector, the financial sector? So the discussions with our guests is going to continue. But for now, we'll have to move to Rajya Sabha to witness the live proceedings in the upper house. Do stay tuned.
राष्ट्रपति जी। Please. Honorable members, I take the opportunity to wish birthday greetings to honorable members of Parliament, Shri V. Vijendra Prasad, please, Shri Ajit Kumar Bhuiya, Shri Parimal Nathwani, whose birthday falls today, and Shri Sant Balbir Singh, whose birthday falls on the 2nd February. Honorable members, Shri V. Vijendra Prasad, nothing is going on record. Please take your place. Shri V. Vijendra Prasad joined the August House in July 2022 and is serving his first term. Shri Vijendra Prasad is a renowned script writer, celebrated for his exceptional storytelling and creative prowess. His engaging and relatable stories often blends rich cultural elements with universal appeal that invokes emotions and thoughts of the audience. His visionary approach and mastery of weaving emotions with grandeur have made him a trailblazer in Indian cinema. Fellow members, Indian entertainment industry has already emerged as a significant source of employment across the country. Honorable members, I would like to invite your attention to an apt statement issued in the year 2023 by the then Honorable Minister of Information and Broadcasting at 55th International Film Festival of India. I quote that, with an annual growth of 20%, this industry is hailed as the 5th largest and globalized industry in the world, unquote, which I think really makes a difference in generating employment in the entertainment industry. Shri Vijendra Prasad was married to late Srimati Raja Nandini and is blessed with one son, SS Raja Mauli. Honorable members, Shri Ajit Kumar Bhuiya, journalist and social worker by profession, joined this August House in April 2020 and is serving his first term. Shri Bhuiya, a prominent Assamese writer and journalist, has been associated with the Consultative Committee for the Ministry of Development of Northeastern region. This amply showcases his unwavering commitment to the progress and prosperity of the Northeastern region, a cause close to his heart. Honorable members, his knowledge reservoir of the cultural diversity, traditions and geopolitical activities of northeastern part of the country, who still is actively enriching his knowledge. For recording such deep knowledge, as a guiding memoir, he has authored 9 books focused on the society and policy of Assam. As a journalist, he started his journey as a staff reporter to become the editor-in-chief in Northeast Television, the first satellite channel in Northeast. Honorable members, now birthday wishes to Sri Parimal Nathwani. He is a member of this August House since June 2020 and is serving his 3rd term. His engagement in rural development initiatives in the several villages of Gujarat, spread over 25 districts, has been really remarkable in improving infrastructure and quality of life in rural areas. Besides professional commitments, his passion for conservation of wildlife has been evident through his untiring efforts for the conservation of the Gir lions, instrumental in safeguarding their habitat. While promoting sustainable development in the region, he has also authored books titled Gir Lion, Pride of Gujarat and Jharkhand, Meri Karm Bhumi. Sri Nathwani is married to Srimati Varsa Nathwani and the couple has been blessed with one son, Sri Dhanraj Nathwani. Honorable members, now I take the opportunity to extend advance birthday greetings to Honorable members Sri Sant Balbir Singh, whose birthday falls on the 2nd February, that is tomorrow. Sri Sant Balbir Singh, a spiritual icon, social reformer and environmentalist, has been a member of this August House since July 2022. He has been serving tirelessly for social reform and rendering services for the upliftment of the poor and downtrodden. He has been instrumental in cleaning
the rivulet to resolve the problem of water scarcity by establishing Sichewal model. Method to treat and rescue wastewater for agriculture purposes, be it conserving holy rivulet Kali Bean, providing free education to the children of migrants in the state of Punjab, undertaking relief work and to provide food to the displaced masses at the time of natural calamities, and other numerous social awareness campaigns are some of which works to be named. Honourable members, he has been praised as the preacher of a noble mission by former President of India, Honourable Dr. APJ Abdul Kalam. He has been recipient of Padma Shri in the year 2017 and Nirmal Gram Puraskar 2008. On behalf of the House and myself, I extend heartfelt birthday greetings to all of them and wish them to be blessed with good health and happiness. The Union Budget 2025-26, Srimati Nirmala Sitharaman, please, nothing is going on record, please. With your permission, sir, I rise to lay on the table a statement in English and Hindi of the estimated receipts and expenditure of the government for the year 2025-26. Fiscal Policy Statements 2025-26, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, the Medium-Term Fiscal Policy Fiscal Policy Strategy Statement, Macroeconomic Framework Statement. Thank you. Honourable members, the House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, the 3rd February 2025. जी ने संसद में बजट पेश किया और 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगाने का ऐलान किया। टैक्स पेयर को लेकर जो केंद्र सरकार का एक बड़ा तोहफा देश को मिला है। निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2025 के फोकस क्षेत्रों की जो प्राथमिकता बताई है वो खासी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विकास में तेजी लाना, सुरक्षित समावेशी विकास, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना, घरेलू खर्च में वृद्धि और भारत के उभरते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाना है। जाहिर तौर पर इनकम टैक्स का जो ऐलान है वो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार का फोकस ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि सरकार का सबके विकास पर जोर है। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि इनकम टैक्स पर
एक अलग से भी बिल आएगा अगले हफ्ते और उसमें भी बहुत कुछ इनकम टैक्स को लेकर एक आगे की दिशा नीति देखने को मिलेगी। जाहिर तौर पर कृषि क्षेत्र को लेकर, किसानों को लेकर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर निर्मला जी ने कई महत्वपूर्ण ऐलान अपने बजट में किए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। As the first engine, Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oil Seed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tuar, Urad and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Shri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of Makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government.
जाहिर तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने इस वित्त बजट के जरिए देश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने, खास तौर से दलहन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने और किसान आर्थिक दृष्टि से मजबूत कैसे हो, इस लिहाज से कई महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। अगर कहा जाए कि अगले 6 साल में मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए एक विशेष मिशन चलाया जाएगा, जिससे भारत दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। इसी प्रकार कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का एक विशेष अभियान सरकार चलाएगी, ताकि देश का कपड़ा बिजनेस मजबूत हो और उसका फायदा किसान को मिले। साथ ही बात अगर करें किसान क्रेडिट कार्ड की, तो कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, इसका भी ऐलान वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में किया है। जाहिर तौर पे कई महत्वपूर्ण ऐलान देश की कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया है। लेकिन प्रोफेसर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस मुद्दे को, क्योंकि अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं, जिस तरह से ऐलान वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में किए हैं, बिहार में मखाना बोर्ड का मैं जिक्र खासतौर पर करूंगा, क्योंकि उससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, बिहार की और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जो कपास महाराष्ट्र का जो किसान है, उसका भी ध्यान बजट में रखा गया। इन पहलुओं को आप कैसे देखते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार के लिहाज से? देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो काफी सालों से बहुत परेशान रहते थे कि ये ग्लोबल इकोनॉमी में कंपटीशन का बहुत दौर चल रहा है, हम उसमें लघु उद्यम का क्या मतलब उनका वायबिलिटी के ऊपर प्रश्न हो रहा था। अभी ये जो स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट ने लिए है, इससे एक एक कमोडिटी ग्रुप में फोकस कर रहे हैं। उससे जैसे वित्त मंत्री ने बोल रही थी कि वहाँ पे वैल्यू एडिशन, उनका निर्यात बढ़ाने का जो क्या क्या मार्केटिंग का उनको हेल्प मिलेगा, वो सब करने से वो हैंड होल्डिंग जो होगा, उनको भरोसा मिलेगा कि हम जो प्रोडक्ट यहाँ पे कर रहे हैं उसको हम खाली दूसरे जगह पे बेच पाएंगे, ऐसे नहीं है, हम बाहर भी निर्यात कर पाएंगे। तो एक तरीके से एक उनको भरोसा दिलाने वाली बात हो रही है। आपने चाहे मखाना बोर्ड बोलिए या फूड प्रोसेसिंग के दिशा में जो एक इंस्टीट्यूट को ये किए हैं, उसके वजह से एक काफी अच्छा क्या है, एक मैसेज लोगों को गया है कि आप एक ग्लोबल इकोनॉमी के डर से आप ये सब छोड़ मत दीजिए, आपको ये भी जो लघु उद्यम है उसमें भी भरोसा कर सकते हैं और उसमें भी रोजगार का अवसर मिलेगा। तो ये जो फोकस प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी है, वैल्यू एडिशन होगा, उसको कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, मेरे ख्याल से ये काफी दिन से होना चाहिए था। क्योंकि जो चाइना वगैरह से हम जो कंपटीशन फेस कर रहे हैं, वहाँ से स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फोकस्ड प्रोडक्ट, फोकस मार्केट, ये सब काफी मतलब ये अप्रोच रहा है। तो ये अभी भारत कर रहा है, ये बहुत बड़ी दिशा है देश को आगे लेने वाले के लिए। जी बिल्कुल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का भी ऐलान किया है। जाहिर तौर पर राज्यों के साथ सरकार ये योजना चलाएगी और इससे करोड़ों किसानों को फायदा होगा। टीना, कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कृषि और किसानों को ध्यान में रख के सरकार ने की हैं। जी, You're right, Manoj. We've spoken about some of these crucial reforms that the agriculture sector was in need of. Agriculture has been one of the key priorities for this government. We saw 6 months ago as well in the budget presented for 2024-25. Agriculture was among the top priorities. This budget, in a way, has sought to build up on all of those measures that were announced in the first full budget of the Modi 3.0 government. But another critical sector, Professor Dash, that we would like to speak about is infrastructure. The Economic Survey has pointed out that over the next 2 decades, investment in the infrastructure sector has to be significantly scaled up. Yes. How do you see the budget, or what are the kind of measures that you see the budget having taken through which the infrastructure sector has gained? I think infrastructure sector has got enough of attention in the last few budgets, and that should have happened also. This year, if you see, the measures announced are broadly in continuation of what they have done in the past, but it signals much more than that. That investment is playing the role of creating or pushing that, fueling that growth process. Now, continuing with the
say, interest-free loan of 50 crores and engaging the state. She has emphasized categorically you have to engage the state. So engaging the state and thinking of innovative financing instruments. They have said that each ministry will come with a 3-year pipeline of projects that will be implemented in PPP mode, public-private partnership mode. So these are some of the things that you see in academic discourse people are discussing over the world. That we have to move into innovation, innovative financing, engaging private sector investors, engaging institutional investors. And if you categorically see the specific focus on broadband connectivity, because rural area they have been facing the issues of the speed of the internet. They have internet, kiosks are there, but the speed of the internet has been an issue. So laying the optical fiber there and expanding the broadband connectivity to secondary schools, primary health centers. So these are some of the forward-looking infrastructure sector measures which will help the economy in long run. And we have already seen the capex growth. For the last 4 years, the capex has gone up from 2.1% of GDP in 2021 to 3.2% last year, and which is going to increase. So overall, what has been announced for the infrastructure sector was much needed, and we need to continue to focus on infrastructure, but not infrastructure for sake of infrastructure creation, infrastructure as an enabler of inclusive and sustainable development, which will ultimately translate the goals of Viksit Bharat. Right. Before we proceed further, let me introduce another guest joining us in the studio, Dr. Sabyasachi Saha, Associate Professor, RIS. Professor, glad to have you with us on this telecast. We've been talking about how different sectors have gained from the budget presentation, the 8th consecutive one by Finance Minister Nirmala Sitharaman. Before we delve deeper into what you think or which sector, according to you, has been the biggest gainer, your first thoughts on an overview of the budget, what it's like, and how does it set the roadmap towards achieving the goals of Viksit Bharat? Thank you very much for having me on the show. First of all, let me congratulate Honorable Finance Minister for presenting this wonderful budget. I may call it a happiness budget because it has generated a lot of happiness among people. And she has been able to meet the expectations that were there from certain sections of the population, and which was much more required. If we see what Honorable Prime Minister said yesterday, that the focus would be on innovation, inclusion and investment, and that is what is getting reflected in the budget today. As you know, the external sector and the world geopolitics is in a very difficult shape at this point. So the larger context in which a country of India's size and population needs to set its strategy and agenda for Viksit Bharat is extremely important in a very difficult external sector scenario at this point. So rightly, what Honorable Finance Minister has done this time in her budget is to strengthen the domestic drivers of economic growth, and that's what is coming out primarily from the budget. So let me talk about education, because Professor Dash did mention about some of those measures and announcements related to education and skilling. So the Finance Minister has announced 50,000 Atal Tinkering Labs to be set up in government schools in the next 5 years. The Bharatiya Bhasha Pustak scheme, that seems to be quite interesting, which provides a digital form to Indian language books for schools and higher education. At the same time, new national centers of excellence for skilling. How do you see all of these measures strengthening the education sector at the same time? Because while we move towards a Viksit Bharat vision, we have to realize that our strength lies in the youth of the country. They are going to be the major drivers. So unless you put them in the driving seat, all of this vision will not be realized. So putting them in this center of the growth story.
You are absolutely right, and this again I see as a continuation from last year's budget when youth and entrepreneurship and skill building was squarely the focus last year, with lot of new initiatives like the Pradhan Mantri internship schemes and others being announced. And this year we see lot of new announcements coming in to expand the technical education part of higher education, when it comes to increasing number of seats in the IITs, when it comes to increasing the number of medical seats, and that the concomitant commitments on infrastructure development around the infrastructure for higher education, scientific research and innovation. And this again is a continuation from the past few years where we have seen considerable commitments and investments in this sector, and definitely along with higher education, along with broad-based innovation, implementation of the national education policy and others, this is creating the right kind of, because today's youth are going to be the workers for tomorrow and also the leaders for tomorrow, and they are going to be the pillars of Viksit Bharat. And I think this momentum needs to be retained, and we are going to see the benefits soon. Hopefully, Professor Dash, while the capacity of IITs is set to be expanded, another measure which is straddling the domains of both education and healthcare is the proposal to add 10,000 additional seats in medical colleges and hospitals. How timely, how significant for a country which now has the world's largest population? You see, we have already made that point before. There should be enough of provision to make sure that the social safety net is quite broad, yes. And you are preparing the nation for the future. When we are thinking of Viksit Bharat in a larger perspective, now this is the time to invest in education and health, and we have a good story to tell. If you see the economic survey, the out-of-pocket expenditure has gone down drastically from 62% to 39.2%, which is remarkable. Now, what does it mean? That people are paying less from their pocket for the services they are getting. Now, by increasing the medical seats, what you are doing, you are adding more doctors in the workforce. And we have seen in our own ways, the rural primary health centers, very often the doctors would not be there. Yes. Or they have difficulty to attend the job. They must be saying connectivity issues and others. So maintaining this steady supply of doctors, we are actually matching the requirement of the demand for medical services, both private and public. So combining with the overall research, innovation, and the capacity of the IITs, so this is a consistent approach to sort of look into the supply side of the infrastructure. Investing in people is I stressed on that point. She referred to schools, she referred to medical education, and then technical education. You refer to that language thing that you said. No, let me tell you one more initiative they have taken recently. One nation, one subscription. Yes. That all the research scholars, students of universities will have equal access to the library resources, which is fundamental to any sort of research environment that you create in a country. There are many universities which are privileged because they have resources, they are better placed in location-wise, but by making this scheme, all the universities are made into one common net, that you will have access to the library resources that are available. So overall, the research and environment space is also equally sort of credible sort of move. 6,500 additional IIT seats will probably take into account the students of the communities, those who are not getting chance. Yes. So that will expand the technical education spectrum.
and which is needed for India of 2047. जी, जाहिर तौर पे वित्त मंत्री निर्मला जी ने जो टेक्निकल एजुकेशन है उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में, उस शिक्षा के क्षेत्र में कैसे अनुसंधान के और अवसरों को बेहतर किया जाए इस दिशा में भी खासा जोर दिया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो बीमा क्षेत्र में FDI का है, उसको लेकर भी एक बड़ा फैसला उभर के सामने आया है इस वित्त बजट में। साथ ही मेडिकल पॉलिसी पर जो छूट मिलती थी उसको लेकर भी सरकार ने राहत दी है, और भी तमाम जिस तरह से जन कल्याणकारी योजना है उसके जरिए सरकार ने आम आदमी को राहत देने की प्रयास किया है। मैं आपसे समझना चाहता हूं जो खासतौर से बीमा क्षेत्र में FDI का फैसला है, 74% की सीमा को बढ़ाकर 100% कर दिया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? खासतौर से बीमा क्षेत्र जो सेक्टर है जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, लोगों की आकांक्षाएं भी इससे जुड़ी हैं, लोगों का हित भी इससे जुड़ा हुआ है, साथ में देश की अर्थव्यवस्था, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो हमारा सर्विसेज सेक्टर्स हैं जी, इस जो डायनामिक सेक्टर्स हैं उसमें से आते हैं ये बीमा सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर। इसमें FDI का जो सीलिंग है अगर हम बढ़ा देते हैं, 100% कर देते हैं, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट पे आएगा, FDI फ्लोज बढ़ेंगे। इसमें काफ़ी लोग बाहर जो हैं वो चाहते हैं कि इस सेक्टर को और ज़्यादा एक्सप्लोर करें। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि जो हमारा FDI का जो गार्ड रेल्स हैं कुछ सेक्टर्स में हम रखते हैं, वो सेंसिटिविटी के तहत रखते हैं, कुछ सेक्टर्स में चाहते हैं कि कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है वो हार्म ना हो, उसके लिए हम रखते हैं, लेकिन उस पर भी हम रिव्यू करेंगे। और इसका जो लिमिट है हम 100% तक कर रहे हैं, उसमें भी कुछ राइडर्स हैं कि वापस वो निवेश हमारे देश में ही होना चाहिए जी। और इसका जो फायदा भी, क्योंकि बीमा क्षेत्र जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगा ये जायज़ है कि बीमा क्षेत्र बढ़ेगा। आज के डेट में जो भी बहुत जगह पे जो लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, आपके व्हीकल इंश्योरेंस है, तमाम चीज़ों पे इंश्योरेंस का जो प्रोविजंस हैं उससे ओवरऑल वेलफेयर हम देख पाते हैं, तो इसमें कंट्री का अच्छा होगा जी। You know, while we are talking about insurance, Manoj ji, it's also important for us to talk about another critical sector. And after the COVID setback, the healthcare system, we see the government has allocated 95,957 crore rupees for developing, maintaining and improving the healthcare system. And all of this includes the various schemes, the existing schemes which are catering to different sections of the society, such as the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, which has got an allocation of 9,406 crore rupees, and 4,200 crore rupees have been allocated for Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission. So very critical, because these are ongoing schemes and which are benefiting crores of people of different sections in our society. But one aspect which caught the eye, Professor Dash, was how we are working towards making India a hub of medical tourism. So at the, simultaneously when we are talking about making India a global manufacturing hub, we are enhancing and putting in a lot of money towards infrastructure development. We are also working towards creating a system which provides affordable and the best healthcare system, not just to the people of India, but to those who are seeking to come here and enjoy the hospitality here. No, I think you are right. As you rightly mentioned that we still provide affordable health care. We receive many foreign patients coming to India. If we just see any private hospital, whatever we visit, the international patients, we just chat over there, they say that they have much better experience in India. So it is precisely because despite of whatever infrastructure deficiency in the face of in terms of hospital beds or sort of there may be lacuna in terms of the overall infrastructure in some pockets, but we have kind of ensure that we provide the health services that are affordable and of global quality. By expanding the AIMS network of institutions and providing greater support to the state medical colleges. I'm telling in terms of the overall policy push that has happened over past few years, that has propelled India's medical sector globally known that yes, and please don't forget that the medical tourism
also refers here to the alternative medicine that we have. Yes. Ayurvedic, homeopathy, and so the Ayush Ministry over time has done a lot of awareness generation about the products, the services they can give. There are Ayurvedic hospitals in the various parts of the country. I personally party to study at my institute that we didn't know so many foreign patients visit that hospital. So, and that is not specific to certain diseases. There are many diseases which we believe that traditional medicine perhaps would not address those issues. So overall, the medical tourism being attracted towards India, or the patients choosing India as a destination for treatment or for happiness and the overall well-being, is an outcome of the policy initiative that we have taken in the past. And this budget gives a thrust to that, to sort of continue with that sort of momentum and thrust that we have. Professor, that leads me to the question on the thrust towards digital advancements. India is witnessing and is in a phase of rapid digital transformation. We've seen several schemes, even in the last budget, that were announced to drive forward the digital transformation that our country is currently witnessing. How has this budget sought to accelerate or give momentum to that kind of transformation digitally, at the same time keeping in balance and sort of having a cautionary approach towards the rampant use of artificial intelligence? Digital India has been one of the most prominent modes of governance in this country for the last 1 decade or so. From the time we started with Jan Dhan account, Jan Dhan mobile revolution, the massive infrastructure of digital public, what we call as digital public infrastructure, is aiding governance at all levels. It is aiding direct benefit transfers at all levels. It is helping healthcare delivery. It is helping support for farmers, among others. So we are the global leaders in digital public infrastructure, and that is the story of our digital transformation. It is because of our policies, it's because of the startup ecosystem, it is because of public-private partnerships, it is because of investments, etc. But definitely, having created this wide base, we are transforming towards a new era where much more complicated technologies are in front of us. We see them as force for good, like artificial intelligence. Government has already announced AI mission in the past, and several initiatives. When we are talking about the infrastructure investment, we are talking about scientific research across various fields. They are actually leveraging the wide infrastructure that has already been created in the last few years. Professor Dash, while artificial intelligence is creating a lot of new opportunities, is there need to have a regulatory framework to check the misuse of how this technology is going to impact people in our country? And especially the economic survey also has a very balanced approach when it comes to dependence, and especially in context of India's labor class being dependent on the use of this kind of technology. No, I think, the problem with the advanced digital technologies has been that are they misusing the data that they have access to, and which they call the ethical aspects of artificial intelligence. Now, artificial intelligence behaving like humans and providing solution to all critical areas of human action is a good thing. I mean, we have created the AI mission, and we see that AI could generate a lot of jobs. But what about the misuse of the data they get? I mean, there are apps where you can put some search and you get very fancy response to that. So that may not be the valid kind of information or the true information that you are looking for, be it a map of a country or be the origin of any particular species. So these AI-based digital solutions many times could generate misleading information.
and relying on entirely, we have seen the application of AI in terms of driverless cars. That has not been foolproof technology yet. So relying on AI generated information for taking certain policy for, say, any welfare scheme or any sort of developmental thing could be misleading also, in addition to its benefits. So the ethical dimensions of AI needs to be regulated. So while promoting AI at the side, on the sidelines, we need to prepare our regulatory preparedness so that AI adoption does not become a craze, but AI adoption becomes a purpose-driven टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन इन आवर सोसाइटी एंड इकोनॉमी। जी बिल्कुल प्रोफेसर साहब, अगर बात टेक्नोलॉजी की जाए, डिजिटल इंडिया की या एआई की, उसके जरिए भारत ग्लोबल लीडर के तौर पे उभर रहा है दुनिया में। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा प्रोफेसर साहब जो आम लोगों के जीवन से जुड़ा है, अगर कस्टम ड्यूटी को मैं बात करूं, उस पर एक महत्वपूर्ण फैसला वित्त मंत्री जी ने इस बजट में लिया जो सीधे सीधे कैंसर जैसे जो मरीज हैं उनके जीवन से जुड़ा है। 36 ऐसी दवाओं से कस्टम ड्यूटी को हटा लिया गया है। जाहिर तौर पर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट उन लोगों को होगा जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। इस फैसले को आप कैसे देखते हो? क्या इसका इंपैक्ट होगा? दवाइयों पे क्या होगा? अर्थव्यवस्था पे क्या होगा? इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण एक फैसला है और आप अगर दुनिया भर का तजुर्बा देखेंगे, बहुत कम देशों में इतना सेंसिटिविटी के साथ ये मुद्दे को देखा जाता है। फार्मास्यूटिकल प्राइसेस, ड्रग प्राइसेस दुनिया भर में एक गंभीर समस्या है। सिटीजन को वेलफेयर देने के लिए जो ड्रग प्राइसेस का रेगुलेशन होना जरूरी है वो काफ़ी देश में नहीं है, तो ये मार्केट फोर्सेस द्वारा ही डिटरमिन्ड होते हैं बहुत जगह पे। हमारे देश में ऐसा है कि बहुत ऐसे ड्रग्स हैं जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, उस पर अगर हमारा ड्यूटी हम ज़ीरो कर देते हैं, 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स दैट आर मेंट फॉर कैंसर, इसमें हमने बीसीडी को ज़ीरो कर दिए हैं। उसके बाद 6 और लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट ड्रग्स हैं, उसमें हमारा 5% बीसीडी है। और बल्क ड्रग्स, जो बल्क ड्रग्स इस तरह के ड्रग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम में आएगा, उस पर भी हमने बीसीडी को ज़ीरो कर दिया है। इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। आगे चल के हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कैंसर एक बहुत बड़ा बर्डन डिजीज़ है हमारे कंट्री में, तो लोगों को इसमें बहुत रिलीफ मिलेगा, ये तो जायज़ बात है। और इस तरह से अगर गवर्नमेंट के बहुत पॉजिटिव वेलफेयर इंप्रूविंग स्टेप्स है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बात की गई है अभी, तो ये सारा मुद्दा उसी के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें सिटीजन्स को फ़ायदा होगा ये, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फाइनेंस मिनिस्टर को इतना बड़ा एक डिसाइसिव अनाउंसमेंट करने के लिए फॉर लाइफ सेविंग ड्रग्स। Certainly, 200 cancer care centers have also been announced by the finance minister in this budget. Professor Dash, a question on innovation and research. Yes. Has the budget been able to address concerns related to strengthening India's research ecosystem, answering all of those concerns related to the research conundrum? One thrust has to be on research, on strengthening research if we are to realize the goal of Viksit Bharat, because we are looking at reducing dependency and creating our own indigenous technologies. So how has the budget sought to address all of those concerns? See, the first thing is that they have kind of increased the PM fellowship to IITs and Indian Institute of Science, 10,000 more fellowships. More than that, by increasing the student strength itself is a major move in that direction, because by increasing the student strength indirectly you are putting the creating the demand for more faculty, and all the faculty of IITs and IICs are encouraged to do cutting edge research. Bilkul. So the more faculty you bring, more support you provide in terms of that. Bilkul. So indirectly you are pushing research to another level, Bilkul. Which is a continuation, as I mentioned, the one library, one subscription scheme, one nation, one subscription scheme. So I could see that the research and innovation focus is a continuation of the past 2 years of budget, and it should continue.
there is enough of indication in the budget to promote research and create the enabling environment for research. बिल्कुल डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर ये जो बजट की सारी चर्चा है, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बजट में लोगों के लिए प्रावधान किए गए हैं, किस तरह से उनको राहत दी गई है और किस तरह से ये समझा गया है कि बजट एक खुशहाली लाने वाला बजट है, आम लोगों के लिए बजट है, किसानों के लिए बजट है, कारीगरों के लिए बजट है, बेरोजगारों के लिए बजट है, युवाओं के लिए बजट है, महिलाओं का बजट है। और इस बजट को समझने की कोशिश करेंगे। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। Namaskar, welcome to Sansad TV's continuous day-long coverage of the Union Budget 2025-26. I am Namrata Singh and joining me is my colleague Ramveer. So we have been bringing you all the updates and key takeaways from the budget presentation by Finance Minister Nirmala Sitharaman earlier today. This marks her record-breaking 8th consecutive budget, the second of the Modi 3.0 government. So to understand what this budget means for the nation, the economy and each one of us, we have an esteemed panel of guests with us who will help us understand the implications across sectors and how different stakeholders might benefit from these proposals. So to get the detailed understanding, we're joined by our esteemed panel of experts. Mr. Gopal Krishna, former Secretary Shipping. We also have in the studio Dr. Sabyasachi Saha, Associate Professor, RIS. I'm delighted to have you both on Sansad TV, sir. I'll begin with you, Mr. Krishna. Your big read from the budget speech. Yes. So if we see the last two budgets, great emphasis was placed on investment in infrastructure sector. There was a huge jump of 30%, more than 30% in each of the last 2 years. This year has been a slightly different kind of emphasis on infrastructure. Infrastructure is recognized even in the economic survey, which was released just last year, that infrastructure over 20 years
or a long-term period will remain the main driver of growth in the country, and growth obviously has been placed at the pedestal of government policies. This budget, while recognizing that particular aspect, has been a very different kind of budget because it lays now direct emphasis on employment creation. That has been a big, I would say, story. Obviously, a lot of us have also had a, look at the direct tax, proposals which are there. But from the economic point of view, I think so. Emphasis on employment, emphasis on MSME has been a big takeaway from the sector. Let me come to the sector which where I was working up till 3 years back. I was secretary of the Ministry of Shipping, Ports and Highways. If we see, for the first time, such great emphasis has been placed on shipbuilding. I have not seen in the last 15 years so much emphasis being placed on shipbuilding. Shipbuilding is a very important sector. Our nation has made huge strides in automobile sector. I think so time has come, and that has been recognized with this budget very clearly. The emphasis is very clear. We need to emphasize that the shipbuilding sector is another sector which is a great opportunity for India as far as employment generation is concerned. And that emphasis has been placed on a number of things which has happened. Yes. इस चर्चा को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। सव्यसाची, अगर हाइलाइट्स की बात करें तो सुबह से लेकर माननीय वित्त मंत्री ने भी और हमारे एक्सपर्ट्स ने भी सारे हाइलाइट्स को कवर किया ही है। भले ही वो किसानों की जो क्रेडिट लिमिट है उसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनाने की अनाउंसमेंट की गई हो, चाहे वो गांव के सरकारी स्कूलों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की बात की गई हो, चाहे वो बिहार में मखाना बोर्ड के एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई हो, डेयरी डेवलपमेंट, फिशरीज के लिए उन्होंने 5-5 लाख रुपए की लोन की स्कीम उसको किया हो। ऐसे एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर मैं देखूं तो इस तरह की बहुत सारी अनाउंसमेंट हैं और इसके अलावा बहुत अनाउंसमेंट बाकी पूरे बजट में है। ये बजट कुल मिलाकर 50,65,000 करोड़ रुपए का था, जिसमें से 2.25 लाख रुपया जो है वो एग्रीकल्चर के लिए अलोकेटेड किया गया। इसमें जो मैं कुछ सेक्टर देख रहा था, एग्रीकल्चर में स्पेशली जो आर्थिक सलाहकार, भारत के आर्थिक सलाहकार ने जो जब इकोनॉमिक सर्वे के बाद पीसी की और उन्होंने कहा कि एरिया ऑफ फ्यूचर क्या है, तो उन्होंने एग्रीकल्चर की तरफ इशारा किया, उन्होंने एमएसएमई की तरफ इशारा किया। तो इसको लेकर के जो पूरा एक नजरिया है, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, क्योंकि जब आप विकसित भारत की बात करेंगे तो 2 चीजें आपके पास होना शायद जरूरी होगा। आप निर्माण कर सकें, प्रोडक्शन कर सकें और एक्सपोर्ट कर सकें। तो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और आप उसे एक्सपोर्ट कर सकें उस लेवल पर, इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तैयारी आपको इस बजट में कितनी दिखती है? ये जो बजट है, ये हमारा उम्मीद ऐसा था कि जो इकोनॉमी का बेस है, बिल्कुल उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी उपाय किए जाना चाहिए वो आएंगे। ये जो नजरिया है, ये हमारे जो पिछले 1-2 साल के बजट देखेंगे, पोस्ट कोविड जो हम रिकवरी की बात करते हैं, उसमें एग्रीकल्चर पे हमारा बहुत ज्यादा फोकस रहा है। ये बहुत ही ये जो एग्रीकल्चर को लेके एक नेगेटिव सेंटिमेंट हर टाइम उभर के आता था, उसको दूर करने के लिए जो पॉजिटिव कदम उठाए जाने चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, पिछले कई बजटों से वो हम देख रहे हैं। इसका 2 कारण है। एक तो हमारा आबादी इतनी ज्यादा है, फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंसर्न है। दूसरा है फार्म लाइवलीहुड का कंसर्न, बिल्कुल जो हमारे जो किसान है उनका आय बढ़े, अर्निंग बढ़े। तीसरा ये है कि ग्लोबली जो सिचुएशन है वो कंड्यूसिव नहीं है फूड सप्लाईज के लिए। हम बहुत ज्यादा कुछ प्रोडक्ट्स में इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं हो सकते। डॉक्टर साहब, एक बात मैं कहना चाहता था कि एग्रीकल्चर वैसे तो दूर से वैसा दिखता है कि नहीं, इसमें कहाँ, इसमें रोजगार कहाँ होगा या इसमें व्यापार कहाँ होगा, इसमें इंडस्ट्री कहाँ होगी, लेकिन जब आप फूड को प्रोसेस में डाल देते हैं तो इंडस्ट्री बन जाता है। तो इस दिशा में जो है वो कितना काम हुआ है इस बजट में जो दिख रहा है? डॉक्टर साहब देखिए, अभी आपने ही बताया कि हमको एक्सपोर्ट की तरफ देखना। एक फूड प्रोसेसिंग तो देश के अंदर हुई, बिल्कुल। दूसरा ये है जो डिमांड है
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की पूरे दुनिया के अंदर, अगर हम उसको ठीक से मान्य जो स्टैंडर्ड्स हैं एक्सपोर्ट के, अगर वो ठीक से हम मेंटेन करें तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है। पोर्ट्स बोले आप अपने एयरपोर्ट्स बोले, तो नए नए एयरपोर्ट्स बनाना, इस बार नए एयरपोर्ट्स बनाने की बात हुई है, और चाहे डायरेक्टली बात पोर्ट्स की नहीं हुई है, ग्रीन एयरपोर्ट बनाने की बात हुई है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं कि मुंबई में जो JNPA हमारा जो पोर्ट है, उसमें एक पूरा नया वेयर हाउसिंग बन रहा है जो रीफर से जिसे मतलब एयर कंडीशन, जहां से जितने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पूरे महाराष्ट्र और उसके आसपास के एरिया होंगे वहां आके स्टोर होंगे, उसको एग्री जोन ही बोल रहे हैं वो, और वहां से फिर वो पूरे जो है स्पेशली मिडिल ईस्ट के अंदर एक्सपोर्ट होंगे। तो वो एम्फेसिस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो कायम है इस बजट में, और जैसे मैंने पहले भी बोला बहुत ज्यादा एम्फेसिस एम्प्लॉयमेंट पर है, वो जहां MSMEs और एम्प्लॉयमेंट पर इस बजट पर दिख रहा है इसमें। सो डॉक्टर साहा, एंड productivity is the main focus this time, last time also, but you know, this time what we could see that government is set to launch mission for Atmanirbharta in Pulse, again focusing on productivity. Pulses में ये अनाउंसमेंट हुआ है। वी हैव सीन इन पल्सेस, वी हैव सीन इन सी फूड एक्सपोर्ट्स, फोकस ऑन सी फूड एक्सपोर्ट जो हमारा बहुत बड़ा एक सेक्टर है, और कॉटन का क्वालिटी, जो क्वालिटी कॉटन, इस पे बात हुआ है। अभी हम पल्सेस में ऑफ कोर्स में जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ कमोडिटीज ऐसे हैं जिसपे हम इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हम वो जो है फूड सिक्योरिटी के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, डाइवर्सिफिकेशन के दृष्टिकोण से वो इम्पोर्टेंट है। जैसे लोगों की रोजगार बढ़ेगी, जो हमारा फूड बास्केट है वो डाइवर्सिफाई होगा, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी वहां से आता है। तो इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हाई क्वालिटी सीड्स पे आज बात हुई है, सी फूड एक्सपोर्ट्स पे बात हुआ है। इसके साथ हर लेवल पे आप अगर ICAR का पूरा जो एक्टिविटी देखेंगे, रिसर्च से लेके एक्सटेंशन सर्विस तक, ये जो रिसर्च को स्ट्रेंथन करने वाला जो मुद्दा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, और इस पे लगातार काम हो रहा है। दुनिया में बहुत बेहतरीन सिचुएशन में हम हैं व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर। विनीत कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, संस्थापक हैं साइबर पीस फाउंडेशन के। आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में विनीत जी। और यहाँ पर बजट को लेकर जो चर्चा यहाँ शुरू हुई है, इस चर्चा में हम एग्रीकल्चर को अभी कवर कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो जो इस बजट के जरिए जो एक तरह से जो बिछाया गया है पूरा, इसमें जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसमें ग्रीन इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन कितना हो सकता है? आई थिंक मेजर कंट्रीब्यूशन ग्रीन इकोनॉमी का हो सकता है, और यही मैं बोलना चाहूंगा, ये बजट इनफैक्ट बहुत ही इंप्रेसिव है, और साथ ही साथ जिस तरह से ये टेक्नोलॉजी एरिना को बूस्ट कर रहा है, और ये एक तरह से हमारा विकसित भारत जो 2047 का जो सपना है उसको इनफैक्ट हमें अचीव करने में बहुत मदद करेगा, जिसमें एम्पावरिंग यूथ, विमेन, स्टार्टअप्स, MSMEs, ये सब चीज को देख के किया गया है, जो कि इनफैक्ट अभी देखा जाए तो जिस तरह से बाकी कंट्रीज हैं, जो भी टेक्नोलॉजी टेक से भी कंट्रीज हैं, जैसे अभी चाइना की बात करें और तो AI का एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है, और यहाँ पे पोजिशनिंग इंडिया और एक तरह से एक रिसर्च और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुपर पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और ये एक सिग्निफिकेंट हाईलाइट इसका रहा है कि जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं AI के एजुकेशन में, बैक्ड बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 करोड़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, जिससे एजुकेशन फ्रेमवर्क को भी बूस्ट मिलेगा, इनोवेशन को बूस्ट मिलेगा, और लर्निंग को भी डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा। इसमें अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी सरकार का एक गोल है जिसमें AI इंफ्रास्ट्रक्चर और एक इनफैक्ट फैसिलिटी की भी अभी स्थापना की जा रही है, जिसमें करीब 18,000 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स और GPUs एस्टैब्लिश किए जाएंगे। अभी हम देख रहे हैं किस तरह से वहां AI रिवोल्यूशन चल रहा है, तो आई एम वेरी श्योर कि AI की बात करें, रिसर्च इनिशिएटिव्स की बात करें, अगर बात करें हम मैन्युफैक्चरिंग मिशन की बात करें, ये हर तरह से अगर देखा जाए, डेटा सेंटर्स की बात करें, क्योंकि हमारा इंडिया में अभी डेटा सेंटर्स का भी अभी बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि डेटा इज द नेक्स्ट ऑयल, और यहाँ पे इस पे टैप करना ताकि हम ये डेटा सेंटर्स का इकोसिस्टम बनाएं, डेटा हमारे यहाँ स्टोर हो। आई थिंक आने चल के हम देख सकते हैं कि ये हम एक तरह से सुपर पावर बन सकते हैं इस तरह के बजट से, और ये आई थिंक एक स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस है जो हमारा 2047 का सपना है।
इवन अटल टिंकरिंग लैब्स जो बन रहे ATLs, ये भी बहुत बूस्ट करेंगे इस सेक्टर को, और जो भी बच्चे हैं स्कूल्स में वहां पे उनको एक रिसर्च इनोवेशन और एक एनवायरनमेंट मिल रहा है, एक इकोसिस्टम मिल रहा है जो कि शायद इनफैक्ट पहले था, लेकिन अब उसको और बूस्ट मिलेगा इनसे। तो ये सब ओवरऑल देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा ये बजट है, और खास करके ये मिडिल क्लास फैमिली की बात की जाए और इनफैक्ट लोगों की बात की जाए तो मैं तो देख रहा हूं कि लोग काफी खुश हैं। हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है क्योंकि एक्सपेंशन भी हो रहा है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का, टैक्स रिफॉर्म्स हो रहा है, एक नया बिल भी आने वाला है, और ओवरऑल MSMEs और स्टार्टअप्स, आई थिंक मैं कहूंगा द हार्ट ऑफ दिस इज MSMEs एंड स्टार्टअप्स, उनके लिए बहुत ही मेजर इनफैक्ट अपलिफ्ट मिला है इस बिल। और हम आपको सुनवाते हैं कि माननीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजट के बाद क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। देश के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण बजट निर्मला जी ने आज पार्लियामेंट में पेश किया है। ये जो बजट की विशेषता ये है कि हमारी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने वाला ये बजट है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर को हर समय वित्त मंत्री प्राथमिकता देते हैं, इस समय भी हमारा बजट बढ़ा है, जिसके कारण इंफ्रा रोड सेक्टर में इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि कृषि विभाग की ओर उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया है। तिलहन हो, विशेष रूप से तेल बिया हो, इसके उत्पादन कैसे बढ़े और किसान आत्मनिर्भर कैसे बने, इसका भी विचार किया गया है। विशेष रूप से इनकम टैक्स के बारे में एक रिफॉर्म करके नया कानून लाकर इसको और सरलीकरण उसका करना, ये जनता के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। और 12 लाख रुपए की उत्पादन के लिए इनकम टैक्स में जो राहत दी गई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से मिडिल क्लास का विचार किया गया है और मध्यम वर्गीय, उसके साथ लोअर मिडिल क्लास और गांव गरीब मजदूर किसान, इसमें रोजगार कैसे निर्माण हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसी हो, इसका विचार करते हुए इस बजट ने पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके कारण नए रोजगार निर्माण होंगे, ग्रोथ बढ़ेगी और निश्चित रूप से देश के विकास में उसका योगदान होगा। जहां तक ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, हम 22 लाख करोड़ के फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी समस्या है, पर उसके साथ साथ अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल को प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए विशेष रूप से लिथियम आयन बैटरी अब सस्ती होगी। स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, अब इलेक्ट्रिक ट्रक, इनकी कीमतें कम होगी। जो $150 पर किलोवाट पर आवर थी वो $105 पर किलोवाट पर आवर आई है, वो $100 के नीचे जाएगी। और इलेक्ट्रिक के वाहन और लोकप्रिय बनेंगे, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और देश में नए रोजगार निर्माण होंगे। इसके लिए भी उन्होंने विशेष रूप से जो टैक्स में रियासत दी है वो निश्चित रूप से बहुत उपयोगी है। मैं निर्मला जी का बहुत अभिनंदन करता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और विश्व की हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की प्रक्रिया में है, उसमें निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं। नमस्कार। Also, we are joined by Mr. Anand Singh Behel. He's former Principal Economic Advisor, Government of India. Welcome, Mr. Singh. Thank you. Namaskar. Namaskar, sir. This budget focused on 10 broad areas, including Garib, youth, women. Sir, your first takeaway from this budget? The important thing which strikes me about this budget is responding to the claims of the middle class. The middle class for long has been feeling neglected, and rightly or wrongly so, they've had a grievance against the government. So this government has gone out of the way to appease the middle class, which was definitely required through the tax benefits. And that will unleash a lot of money into the economy that will also boost demand in the economy. So one of the biggest takeaways for me from this budget is appeasing the middle class, and of course then the emphasis on agriculture and manufacturing and startups. So these two together are the standout points for me. जी,
हम आपके पास वापस आएंगे आनंद जी, और यहाँ पर इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं अगर सव्य सची। कुल मिलाकर जो विकसित भारत है, जो बात की जा रही है, उसके लिए ये बात आई थी कि अगर 20 साल तक लगातार 8% की ग्रोथ भारत लेता है तब हम विकसित भारत के लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप इस बजट में लेते हुए देश को दिखाया गया है, सरकार को दिखाया गया है? ये विकसित भारत का जो हमारा लक्ष्य है, ये सिर्फ जीडीपी ग्रोथ दर से देखा नहीं जाना चाहिए, ये एम्पावरमेंट का एक रोड मैप है। ठीक है। सारे जो सेक्शंस हैं सोसाइटी के, ये जो अभी हमने बात की है कि नारी शक्ति, वो सबसे सामने की एक बात है, यूथ, वीमेन, तो इस पे सरकार का ध्यान तो है ही, लेकिन इसको जिस तरह से अभी आर्टिकुलेशन मिल रहा है, जिस तरह से फोकस मिल रहा है, हर जगह पे स्कीम्स में जो नए प्रोविजंस किए जाते हैं, स्टार्टअप, सोशल इंक्लूजन तो ठीक है, लेकिन पैसा जो है उसकी पावर जो है वो तो बजट का मतलब तो वहां उसको माना जाएगा। हाँ बिल्कुल, और पैसा जो है, पैसा में आपका ग्रोथ ड्राइवर्स वो इम्पोर्टेंट है कि आप तैयार होंगे कि मेरा इंडस्ट्री इतना एक्सपेंड करेगा, एग्रीकल्चर इतना एक्सपेंड करेगा, सर्विस इतना एक्सपेंड करेगा, लेकिन इसके लिए आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट। गोपाल कृष्णा, एक बात यह भी है कि भाई अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए आप एमएसएमई को और ज्यादा स्ट्रेंथन करते हैं, आप उसके लिए फिर प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं उनको बैठाते हैं, जो आपने मुंबई का एग्जाम्पल दिया वो सब है। इन सब के भी बेस में जो मैं देख रहा हूं वो है बैंक, और बैंक कई बार सरकार के इशारों पर नहीं चलता है। मतलब यहां से जिस तरह से पॉलिसी बनती है, बैंक देखता है कि पैसा रिकवर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और कई बार ये आरोप तो बहुत पुराने हैं कि वो छोटे उद्यमियों को वो थोड़ा सा हिचकता है कर्ज देने से, बड़े लोगों को कर्ज उनके घर जाकर देता है। देखिए, क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू MSME एंड इन दी रूरल सेक्टर बहुत ही एक अहम चीज है, और जिसकी तरफ आपने इशारा करा है। इसी बजट को अगर आप देखें, कितने तो फंड बनाए गए हैं स्टार्टअप के लिए फंड, मैं तो जिक्र करूंगा आपको जैसे मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड, तो विभिन्न तरीके के फंड इस बजट में हैं, जिससे जो MSME सेक्टर है उसको ज्यादा चांस मिले। अच्छा, मुद्रा जो है, जो अभी तक टूरिज्म सेक्टर में लाया गया है, इस बजट में जो अनाउंसमेंट हुआ है वो इस बार वंचित था टूरिज्म सेक्टर। तो विभिन्न जो सेक्टर के फंड्स हैं और नए नए फंड्स घोषित करे गए हैं, इस सब का तात्पर्य यही है कि किस तरीके से हम पूरे सेक्टर और जो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी उनकी ठीक से अच्छे से कर सके। एक और चीज जो शायद मिस हुई है, मिस मैं नहीं बोलूंगा लेकिन इतनी हाईलाइट नहीं हो रही है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब महिलाओं के लिए एक स्पेशल स्कीम लाई गई है, जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको किस तरीके से 50 लाख का सरकार लोन दे और उस लोन से फिर वो उद्यम चालू करें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये पूरा एम्फेसिस इस बजट का जो है वो MSME और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ है। Dr. Saha, changing consumption patterns have been a major concern. If you talk about agriculture, if you talk about industries and everything, this was the major talking point this time during the budget. So, what impact does it have on the farmers and productions? नहीं, ये कंजम्पशन में जैसे अभी बताया आपको, विथ राइजिंग पर कैपिटा इनकम, आपको ये डाइवर्सिफाइड बास्केट जो कंजम्पशन के लिए है वो आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है, हम फूड सिक्योरिटी से न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। इसमें जो रिटेल सेक्टर है उसका भी ग्रोथ उस तरह से हो रहा है। आप देखेंगे जो आंकड़ा है, हमारा रिटेल सेक्टर पिछले कई वर्षों में कितना एक्सपेंड किया है, लेकिन हम ऐसा एक स्ट्रेटेजी देश के लिए सोचे कि जो मेक इन इंडिया है वो हम जो हमारा जरूरतमंद चीज है यहीं पे बने, तो इसके लिए ही सारा कोशिश है। मेक इन इंडिया, इतना इंसेंटिव जो जा रहा है, इशारा किया गया है चाइना से जो खिलौने आते हैं सारे के सारे, उसको रिप्लेस करने के लिए भारत को खिलौना टॉय हब बनाने की बात की गई है बजट में। बिल्कुल, और टॉय तो हमारा सक्सेस स्टोरी है। लगातार अटेंशन जो हम सरकार ने टॉय सेक्टर को दिया है उसका फल हमें मिल रहा है, एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी आई है और ये जायज है, लेकिन उसमें भी एक
छोटी सी शब्द फाइनेंस मिनिस्टर बोली है विच इज वेरी सिग्निफिकेंट कि सस्टेनेबल टॉयज, ये प्रदूषण में कंट्रीब्यूट ना करे। तो हमारा जो कल्चरल ट्रेडिशन है उसको भी सामने रखते हुए जो सस्टेनेबल मटेरियल से बना हुआ टॉय उसको भी बढ़ोतरी मिलेगा। अभी मैंने भूटान से एक स्टोरी पढ़ी, वहां एक शब्द आया है नम्रता, उन्होंने कहा है सजग पूंजीवाद, अवेयर कैपिटलिज्म। मतलब डेवलपमेंट हो, कैपिटलिज्म आए, लेकिन वो अंधाधुंध तरीके से नहीं आना चाहिए। वो जो टिकाऊ टॉय की बात है या उस तरह की बात है, ये भी शायद इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, जिस भी इकोनॉमी में बहुत सारे कम लोग शक्तिशाली होते हैं इकोनॉमिकली, वहां ये समस्या होती है इनइक्वलिटी की भी। बिल्कुल। जैसे जैसे और जिस देशों में विकसित देशों में एमएसएमई ज्यादा सेक्टर मजबूत होता है, वहां ये प्रॉब्लम अपने आप नहीं रहेगी। तो इशारा उसी तरफ है। हमारा देश जो है, हम बहुत ज्यादा बड़े बड़े उद्योग, सारे उद्योग कुछ ही लोगों के हाथ में सीमित हो जाए। तो मुझे लगता है गांधीयन मॉडल है डेवलपमेंट का, क्या कहेंगे इस? देखिए, पूंजीवाद का एक जो मोमेंटम है वो तो है, क्योंकि वी हैव टू रेज पैरेलली जब हम सोशल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं बजट में, तो फिर वो गांधीयन मॉडल की तरफ ही चला जाता है। बिकॉज रूरल इकोनॉमी को जब तक हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, आज भी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि माइग्रेशन इज ए ऑप्शन। आप बाहर, गांव से बाहर जा सकते हैं, लेकिन अगर गांव में ही आपको काम मिल जाए, आप वैल्यू एडिशन कर पाए, नॉन फार्म लाइवलीहुड आपको मिल जाए, फार्म लाइवलीहुड के साथ नॉन फार्म भी मिल जाए, तो आप बाहर क्यों जाएंगे? तो ये गांव, ऑफ कोर्स गांधी के जी के जो इतना बड़ा स्टेटमेंट है कि भारत गांव में बसा है, अब हम उससे काफी आगे बढ़ चुके हैं, शहर में भी बसा है, लेकिन गांव का जो गुरुत्व है वो रहता है। और हमारी पॉपुलेशन दोनों, मतलब शहर में भी है, गांव में भी है। मैं एक और चीज जोड़ना चाहता हूं डॉक्टर साहब के वक्तव्य में, कि गांव से बाहर जाने के और भी बहुत सारे फायदे हैं। और स्पेशली जो ये हम समरसता की बात करते हैं, सब लोग समान रहें, एक साथ रहें, और जो कुछ हम चेंज करना चाह रहे हैं, सोशल एटीट्यूड्स, वो भी बहुत बड़ा सहयोग देता है कि अगर लोग माइग्रेट करें, लेकिन उनको माइग्रेट करने के बाद हमें अच्छी तरीके से बसाना चाहिए। बस इतना है, ये नहीं है कि सब लोग गांव में ही रहें। माइग्रेशन का मतलब झुग्गियां नहीं होता है। नहीं, देखिए, माइग्रेशन का अगर डेटा देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट तो आपने भी किया है, हमने भी किया है, नम्रता ने भी किया है, सबने किया है। लेकिन भारत में अगर आंकड़े देखेंगे, माइग्रेशन डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जो माइग्रेशन होता है, इंटर डिस्ट्रिक्ट जो माइग्रेशन, वो सबसे ज्यादा है। गांव से सिर्फ शहर लोग नहीं आते, गांव से छोटे शहर जाते हैं। गांव के बीच जो सीजनल लेबर का रिक्वायरमेंट होता है, इस राज्य से दूसरे राज्य में जाता है। तो ये सब कुछ इस डिस्कोर्स में आ जाता है। एक गोपाल कृष्णा जी, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक बात जो है वो इस तरह से इशारा किया गया, जो मैं देख रहा हूं कि अभी वो कागजों से ग्राउंड पर तो नहीं दिख रही है उस तरीके से, और कहीं कहीं दिख भी रही होगी। वो एक तरह से हर कॉलेज को एक इंक्यूबेशन सेंटर के तौर पर देखते हैं। वो देखते हैं कि वो एक तरह से स्किल डेवलपमेंट का एक सेंटर भी होगा साथ में। वहां पर कुछ नए इनोवेशन होंगे, वहां पर कुछ स्टार्टअप होंगे, और वहां कुछ एग्जीक्यूट होगा। ठीक इस तरह का कुछ होगा। लेकिन कई बार ये लग रहा है कि जो एजुकेशन है, ठीक है, उसमें इस चीज की शायद सबसे ज्यादा जरूरत है, और उसमें जो हर्डल्स आ रहे हैं उनका जिक्र हम मॉर्निंग में कर भी रहे थे। तो वो भी कुछ चीजें हैं जिनकी ओर समझना चाहिए। रामवीर, आप बिल्कुल ठीक इशारा कर रहे हैं। अगर आप हमारा पुराना मॉडल को देखें एजुकेशन का, बिल्कुल ज्यादातर रोट लर्निंग पर वो निर्भर है। आप उसको याद करें और उसके बाद एग्जाम्स में बैठे और उसको किसी तरीके से एग्जाम पर अपने याददाश्त से कुछ इनोवेटिव करके आप नहीं करते हैं। आप जो डेवलप्ड सोसाइटीज हैं, वो सारा का सारा जो इनोवेशन आता है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस से ही आ रहा है। सब कुछ, इवन उनका जो डिफेंस में जो नई नई प्रगति हो रही है, वो सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज से और प्राइवेट सेक्टर से आता है। हमारे यहाँ वो लैकिंग है। अब आप एलन मस्क का ही एग्जांपल दीजिए। पूरा स्पेस प्रोग्राम इस समय जो यूएसए का है, वो एक प्राइवेट इनिशिएटिव से चल रहा है और बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ट्रंप साहब भी उसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सुनीता विलियम्स को आसमान से ले आइए, वापस लाइए। बिल्कुल ठीक आप बोल रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो ये नई पद्धति, हमारी जो शिक्षा नीति है, उसके अंदर जो ये बदलाव है, उस तरफ अगर जाए कि हमारे जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, मतलब कॉलेज से निकलने के बाद आज भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।
ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। साथियों, इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। लेकिन मैं दो चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन रिफॉर्म्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा जो आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी और हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार से देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और टूरिज्म जो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, एक प्रकार से चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करने वाला एक क्षेत्र को ऊर्जा देने वाला काम करेगा। आज देश विकास भी विरासत भी इस मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में भी इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। 1 करोड़ पांडुलिपियों के लिए संरक्षण के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी। यानी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाएगा और हमारा जो परंपरागत ज्ञान है
उसमें से अमृत निचोड़ने का भी काम होगा। साथियों, बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। साथियों, इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस है ताकि एंटरप्रेन्योर्स को, एमएसएमईज को, छोटे उद्यमियों को मजबूती मिले और नई जॉब पैदा हो। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से लेकर क्लीन टेक, लेदर, फुटवियर, टॉय इंडस्ट्री जैसे अनेक सेक्टर्स को विशेष समर्थन दिया गया है। लक्ष्य साफ है कि भारतीय प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में अपनी चमक बिखेर सके। साथियों, राज्यों में इन्वेस्टमेंट का एक वाइब्रेंट कॉम्पिटिटिव माहौल बने, इस पर बजट में विशेष जोर दिया गया है। एमएसएमईज और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी को दोगुना करने की घोषणा भी हुई है। देश के एससी, एसटी और महिला जो नए उद्यमी बनना चाहते हैं उनको 2 करोड़ रुपए तक के लोन की योजना भी लाई गई है और वो भी बिना गारंटी। इस बजट में न्यू एज इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए गीग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। पहली बार गीग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद इन साथियों को स्वास्थ्य सेवा और दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ मिलेगा। ये डिग्निटी ऑफ लेबर, इसके प्रति श्रम एव जयते के प्रति सरकार के कमिटमेंट को दर्शाता है। रेगुलेटरी रिफॉर्म से लेकर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, जन विश्वास 2.0 जैसे कदमों से मिनिमम गवर्नमेंट और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के हमारे कमिटमेंट को और बल मिलेगा। साथियों, ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। स्टार्टअप के लिए डीप टेक फंड, जियोस्पेशियल मिशन और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ऐसे ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी देशवासियों को एक बार फिर इस ऐतिहासिक पीपल्स बजट की बधाई देता हूं और फिर एक बार वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
So that was Prime Minister Modi congratulating the Finance Minister, saying the budget is a force multiplier for India. It is a people's budget. He emphasized that this budget will boost Atmanirbharta in different sectors like shipping, tourism, infra, hospitality. Mr. Krishna, so what do you have to say on this? I'm extremely happy that the Honorable Prime Minister, in his address on the budget, mentioned the importance of shipbuilding right at his start, and I think so. We have been seeing, pronouncements, budgets, announcements for a very long time. Automobile sector was always at the forefront of, job creation, technology, economy, Right. We have reached now, after that effort of 20-25 years, we are the third largest automobile manufacturer. But I must tell you that shipbuilding is a very, very important sector. It has got an investment multiplier of 2 and a employment multiplier of 6 to 7. Very important. Each one direct job creates 7 or 8 or 6, 7 employment in the indirect and the associated fields. Very important. And this Prime Minister is giving so much of importance. Finance Minister, the Shipping Minister, I must congratulate them that they have highlighted this. And India presently is at about 2021st. We only produce 0.03% of the total shipbuilding which is happening in the globe. China at 47% is number 1, and then number 2 and number 3 are Korea. काम करने के लिए खुला आसमान। अब इस समय खुला आसमान है, और जो उन्होंने चीजें बताई हैं, इकोनॉमिक जो पैकेजेस दिए हैं, वो इंडस्ट्री को बहुत आगे आना चाहिए, और उसको लाभ लेते हुए एक शिप बिल्डिंग को भी हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसके बराबर पहुंचाना उनका काम है। डॉक्टर सव्यसाची, एक बात और है जो प्रधानमंत्री ने कही, वो उन्होंने टूरिज्म को लेकर बात कही। टूरिज्म वास्तव में ही जब एक जगह लोग आते हैं तो वहां कितना एम्प्लॉयमेंट खड़ा होता है, अगर पूरे देश का कैलकुलेशन करें तो 4.5 करोड़ लोग टूरिज्म में एम्प्लॉयमेंट पाते हैं। टारगेट ये है कि 10 साल में ये 523 अरब डॉलर का ये कुल मिलाकर एम्पायर खड़ा हो। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इस बजट में उन्होंने बाकायदा प्रावधान किया कि 50 ऐसे टूरिस्ट प्लेसों को नोटिफाई करके, आइडेंटिफाई करके उनको डेवलप किया जाएगा। और चूंकि हम एग्रीकल्चर सेक्टर से बात कर रहे थे, तो ये नीचे तक भी जाता है। अब जो है एग्रो टूरिज्म, फार्म टूरिज्म, विलेज टूरिज्म, ये सब भी जो है चीजें शुरू हो गई हैं। आप क्या कहेंगे? टूरिज्म पे जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा है, टूरिज्म लगातार गवर्नमेंट की जो नई सोच है, मैं सिर्फ इसको पॉलिसी नहीं बताऊंगा, ये सोच है। सोच का परिणाम है कि आज टूरिज्म सेक्टर इतना थ्राइव कर रहा है कंट्री में, और हम लगातार देख रहे हैं उसमें बजट एलोकेशन हो रहे हैं, पॉलिसी के सुधार हो रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप हो रहे हैं। हम छोटा सा एक उदाहरण देंगे, पिछले कई सालों में हमने पिलग्रिम सेंटर्स को सामने रख के टूरिज्म को बढ़ावा दिए हैं। अभी देख पा रहे हैं कि महाकुंभ का जो उत्सव हो रहा है, वो भी एक प्रकार से हम देखें तो हमारे लिए टूरिज्म का एक पार्ट है, जो उत्तर प्रदेश में उसका भारी लाभ मिल रहा है, ऐसे बाकी राज्यों में भी मिले। और इसके तहत जो हम लॉजिस्टिक्स है, इसका जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है टूरिज्म सेक्टर में, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बोला कि इसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाया जाए, तो इसमें ऑफ कोर्स सो ये बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, बहुत इसको फॉर्मलाइज किया जाए, इसको और सपोर्ट दिया जाए तो आगे चल के एक बहुत बड़ा क्षेत्र, हमारा तो पुराना सिविलाइजेशन है ही। बिल्कुल। एक कृष्णा जी, एक बात ये भी आ रही थी साथ के साथ, जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे थे, कॉलेजेस को जो है एक तरह से स्टार्टअप और इंक्यूबेशन, उन सब चीजों पर वहां से इस चीजों को शुरू करने की बात कर रहे थे। एक कोऑपरेटिव्स जो है वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो एग्रीकल्चर, MSME इस सब को इनकॉर्पोरेट करता है। और इस बजट में कोऑपरेटिव्स को स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। अमित शाह जो सहकारिता मंत्री हैं वो इसे लीड कर रहे हैं। और मैंने देखा कि 130 साल बाद भारत में दुनिया भर की कोऑपरेटिव्स का गेट टुगेदर हुआ, जिसमें 1000 से ज्यादा डेलीगेट अभी पीछे इकट्ठा हुए। तो ये जो कोऑपरेटिव कल्चर है, इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, किसानों के साथ कैसे उसको एसोसिएट कर सकते हैं, वो उनमें है, बस उसको थोड़ा सा और ज्यादा
देखिए रामवीर जी, आप देखें तो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जो है वो अभी 2 साल पहले ही तो बनाई है, इससे पहले कभी थी नहीं। बिल्कुल। तो सरकार का क्लियरली ये दिख रहा है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को किस तरीके से बढ़ाया जा सके। महाराष्ट्र के अंदर शुगर जो है वो अपने आप में एग्रीकल्चर एक प्रोडक्ट है, लेकिन उसका जो बढ़ावा मिला वो पूरे कोऑपरेटिव सेक्टर से मिला। क्योंकि माने वैल्यू एडिशन जितना शुगर के अंदर महाराष्ट्र में होता है शायद कहीं और इतना नहीं होता है, और उसी का नतीजा है कोऑपरेटिव मूवमेंट। इसी तरीके से अगर हम देखें दूध उत्पादन में हमारा जो रेवोल्यूशन आया वो गुजरात में वो कोऑपरेटिव सेक्टर से आया। बिल्कुल। अब हमें आवश्यकता है कि सेक्टर वाइज हम देखें कि क्या क्या किस स्टेट में क्या स्ट्रेंथ है किसी सेक्टर की, और उसमें हम किस तरीके से कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ा सकें। क्रेडिट, थिंकिंग, उसमें के बाद ट्रेनिंग, लोगों का एक कोहेसिवनेस करना, लोगों को बहुत सारे कोऑपरेटिव सेक्टर की रिक्वायरमेंट्स भी हैं। ऐसा नहीं है सब जगह ये सक्सेस ही होगा, लेकिन हमें पहचान करनी है, बेसलाइन सर्वेस करने हैं, पहचान करनी है कि कहां क्या चीज सक्सेस हो सकती है, कहां गुंजाइश है कि कोऑपरेटिव सेक्टर को हम आगे बढ़ाएं। लाभ बहुत मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए मंत्रालय बनाया गया। और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जो हमारा फिगर है, पॉलिटिकल फिगर और एडमिनिस्ट्रेटिव फिगर है, आदरणीय उनको उसका दायित्व दिया गया। तो सरकार की क्लियरली एक सोच तो है कि इसको बढ़ावा दिया जाए। Dr. Saha, one thing I would like to ask, because AI is the buzzword, right? So in agriculture, in every sector we have it, including AI. So what do you think? How will AI impact agriculture, and what kind of transformations can we expect in this sector? ये आज जैसे बजट में अनाउंसमेंट हुआ, इंडिया हैड ऑलरेडी लॉन्च्ड इट्स AI मिशन, लेकिन आज उसके लिए बजट एलोकेट किया गया। बजट एलोकेशन हुआ। आई थिंक मैं देख रहा हूं फिगर 500 करोड़ रुपया है शायद। 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की आज अनाउंसमेंट हुई है, एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, अर्बन सेक्टर में और एजुकेशन में। जो हम बताए जा रहे हैं कि AI का पावर बहुत ज्यादा है। मतलब आज देख ही रहे हैं कि पिछले 2 साल में इसका जो एक्सप्लोजन हुआ है, बच्चे इसका जो लाभ है वो ले रहे हैं, उसका सही लाभ पहुंचे वो हमें देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जो एग्रीकल्चर, हेल्थ, ये सारे सेक्टर्स है, उसमें इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है, वेलफेयर की रिक्वायरमेंट है, पब्लिक डिलीवरी की रिक्वायरमेंट है। एक सिंपल सा उदाहरण है, जो इमेज प्रोसेसिंग होता है वो अगर AI आपके लिए करके दे, आपका काफी काम आसान हो जाता है। वो जो ब्लॉकचेन के जरिए आपका वेरिफिकेशन होता है, आपका जो सर्टिफिकेशन होता है, बैंकिंग सेक्टर में उसका जो लाभ है, सारा कुछ इससे जुड़ा हुआ है। तो रिसर्च, इनोवेशन और लाइवलीहुड, सब चीजों में AI का अगर पॉजिटिव पावर हम इस्तेमाल कर सकें तो उसका नतीजा हमें 2-3 साल में दिखने को मिलेगा। बिल्कुल। And there have also been key technologies and schemes we are adopting to modernize farming and enhance productivity through AI. And a lot of countries have been using this. जैसा कि आप देखेंगे, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया है, उसमें बताया गया कि इंडिया का जो प्रिपेयर्डनेस है AI के लिए वो काफी आगे है, क्योंकि हमारे ये जो पूल ऑफ इंजीनियर्स है, सॉफ्टवेयर टैलेंट है, इसको अगर हम रिट्रेन करें और नए जो कोहॉर्ट ऑफ इंजीनियर्स बनेंगे उनको अगर AI इनोवेशंस की तरफ हम लेके जाए तो देश को सीधा हम उस लेवल पे है, काफी देशों से हम आगे हैं, और हमारा जो रियलिटी है वो भी डिमांड करती है हमसे कि हम इस पे फोकस करें। गोपाल कृष्णा जी, एक अनाउंसमेंट जो है धन धान्य योजना को लेकर के हुआ है, 100 जिलों को इससे कनेक्ट करने की बात हुई है, और प्रधानमंत्री ने अभी अपने भाषण में ये इशारा किया कि इस योजना के तहत वो क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए वो जो एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे, माइक्रो इरिगेशन को एस्टेब्लिश करेंगे, वहां कैसे ठीक है बाकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो प्रोसेसिंग यूनिट है या बाकी चीजें हैं वो सब एस्टेब्लिश होंगी। तो मैं देख ये रहा हूं कि माइक्रो इरिगेशन के चलते 2 काम हो रहे हैं। एक तो उससे 3 गुना जो रकबा है, क्षेत्रफल है, वो कवर हुआ है अभी तक, मतलब उसमें बहुत तेजी से अपनाया है लोगों ने। और दूसरा, पानी की खपत कम हुई है। तीसरा, उत्पादन ज्यादा हुआ है, कई जगह 1.5 गुना और कई जगह 2 गुना। और जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो इनकम भी बढ़ती है। तो ये सारी चीजें तो केवल इरिगेशन से हैं। उसके साथ फर्टिलाइजर भी उसी के साथ चला जाता है, और बाकी चीजें फिर आगे की तरफ चलती हैं उस तरह से। तो ये इस पर कुछ
हम समझ सकते हैं? देखिए रामबीर जी, आप ये देखें कि कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले नीति आयोग ने 100 जिलों को चिन्हित करा जहां की पॉवर्टी लेवल्स बहुत खराब थे। बिल्कुल, बिल्कुल। उस पर जिससे फोकस्ड एक इंटीग्रेटेड फोकस हो, पूरे इंटर डिपार्टमेंटल, इंटर गवर्नमेंटल सब फोकस करें, जिससे उसको हम बढ़ा सके। और फिर उसके बाद रिपोर्ट्स आई जो हम ट्रैक भी कर रहे थे कि उसका लाभ मिला, बहुत फायदा हुआ। तो इस तरह का आप देखें, एग्रीकल्चर का भी जो ग्रोथ भारत देश में हुआ है वो ग्रीन रेवोल्यूशन से हुआ, लेकिन उसका जो लाभ है वो सीमित रहा कुछ ही राज्यों में। आप चाहे पंजाब बोले, हरियाणा बोले, वेस्टर्न यूपी बोले, कहीं कहीं क्षेत्र महाराष्ट्र, तो कुछ ही एरिया में उसका लाभ रहा। अब हमें जो, अगर हम पल्सेस की बात करते हैं, ऑयल सीड्स की बात करते हैं, कॉटन की बात करते हैं, जहां हम अभी भी इंपोर्ट करते हैं, कॉटन हम एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन क्वालिटी का इशू है। अगर उसको हमें बढ़ाना है, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है इन सारी चीजों पर, और पल्सेस प्रोटीन के लिए, ऑयल सीड भी जो हमारे यहाँ जो बहुत सारे मेलन्यूट्रिशन के जो साइंस हैं उसको दूर करने के लिए बहुत जरूरत है, उसकी खपत बहुत बढ़ानी है हमें। तो उसको अगर हमें बढ़ाना है, ये होते हैं ज्यादातर सेमी एरिड जोन्स में जब पानी की कमी है। तो ये जो इशारा अगेन है कि हमें एग्रीकल्चर को बढ़ावा अगर हमें देना है, तो ये हमें बढ़ावा देना है उन जिलों में जहां अभी तक ग्रीन रेवोल्यूशन के चिन्ह नहीं पहुंचे हैं। और साथ ही उसके लिए खरीदार भी तय कर दिया है कि नेफेड उसको खरीदेगा। ठीक है, उस तरह की नोडल एजेंसी भी बना दी गई है। बिल्कुल, और ये एक इम्प्रिंट है सीधा सीधा। अगर आप देखें, शिवराज जी चौहान है जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में एक तरीके से रेवोल्यूशन करा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। बिल्कुल, तो उनकी सोच भी इस बजट में किसी तरीके से दिख रही है। डॉक्टर सब्यसाची, एक चीज ये भी है कि सरकार ने घोषित किया कि वो 13 करोड़ किसानों में से 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग की ओर ले जाएगी। ये भी उसका अनाउंसमेंट है। उसके लिए बजट भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करना है। मैं कई बार कहता हूं कि अब वो तो नहीं हो सकता कि एक कोऑपरेटिव फार्मिंग का जो पंडित नेहरू का जो विजन था वो उतना पॉसिबल है। उसके लिए किसानों को बहुत तैयार करने की जरूरत है। वैसे जो एफपीओ वगैरह हैं वो उसी तरह का काम कर रहे हैं और उसी दिशा में, लेकिन फर्टिगेशन वगैरह को लेकर तो पूरा गांव जो है, कम से कम इरिगेशन और फर्टिगेशन, इसका एक मॉडर्न मॉडल जो है वो हर गांव में आसानी से खड़ा किया जा सकता है, जिसमें वहां का पशुधन है, उससे बनने वाली बायोगैस है, बायोस्लैरी है, और पानी के साथ में माइक्रो इरिगेशन है। वो सब कुल मिलाकर के वो तो कहीं ना कहीं एक एक किसान अपने यहां पर उस तरह का छोटा छोटा एस्टेब्लिशमेंट करे, इसके बजाय शायद पूरे गांव को एक फर्टिगेशन और इरिगेशन के मामले में एक तरह से डेवलप किया जा सकता है। बिल्कुल, और ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का जो मसला है वो पार्ट है, लेकिन अब हमारे पास अभी डिजिटल टेक्नोलॉजीज का सहारा है। हम अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, अवेयरनेस जनरेशन का काम करें, ट्रेनिंग का काम करें ग्रास रूट्स में, तो ये जो सेल्फ सफिशिएंट रूरल इकोनॉमी के जो हम बात करते हैं वो हम कर सकते हैं। ये और इसी की तरफ पिछले कई सालों से फोकस रहा है, और मेरा उम्मीद है कि ये जो ग्रास रूट लेड डेवलपमेंट है इसका भी हमें फायदा मिलेगा। Right, we are keeping you updated on what the budget holds for various sectors, especially for the common citizen. Over the next half an hour, we will bring you all the key details focusing on sectors like agriculture, infrastructure, women welfare and other crucial aspects of the budget. So stay tuned, don't go anywhere. We'll be back after a short break.
Welcome back. We are discussing the key aspects of the union budget, analyzing its impact and what it means for you, the citizens of India. Joining me now is my colleague Pratibim. Let me also introduce our esteemed panel of guests who will help decode the nuances of this budget. So we have in the studio Mr. Sachin Bhanushali. He's advisor, transport and logistics, FICCI. We also have Sanjeev Jha, CFO, India and director on board, Persol Kelly, India. Welcome both of you to Sansad TV. Thank you. वैसे तो बहुत सारी चीजें हुई हैं इस बजट में जी, लेकिन जिस तरीके से टैक्स को लेकर लास्ट में हैमर किया है वित्त मंत्री ने, उसने सबको ओवरशैडो कर दिया है मुझे लग रहा है। आप कैसे देखते हैं सचिन जी इस पूरे बजट को? मेरे ख्याल से इसमें तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तो जो पिलर्स दिए हैं इन्होंने इस बजट के एम्फेसिस के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। आई थिंक इसमें भारत अभी भी एग्रीकल्चर पे काफी डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर में जो नई स्कीम्स बताई गई है आज के बजट में, वो एक अहम भूमिका निभाएगी। पर्टिकुलरली कॉटन और ऑयल सीड्स, ये दो एरिया में जो एम्फेसिस दिया गया है, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और एरिया अंडर क्रॉप भी बढ़ाना, इसमें मेरे ख्याल से फार्मर्स के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। थोड़ा सेल्फ रिलायंस आने की ज्यादा उम्मीद है इसमें। दूसरा है दी टैक्स रिलीफ विच हैज बीन गिवन टू द मिडिल क्लास। आई थिंक हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ मात्रा में टैक्स रिलीफ मिल जाएगा मिडिल क्लास को, लेकिन यदि नए टैक्स कोड के हिसाब से यदि देखा जाए तो जो दिया गया है उतनी उम्मीद किसी को नहीं थी। करीबन 1 लाख करोड़ रुपए की रेवेन्यू इसमें फर्गो की गई है डायरेक्ट टैक्सेस में, और ये सब पैसा लोगों के हाथ में खर्चा करने के लिए रहेगा। और इसके साथ साथ यदि क्रेडिट अवेलेबिलिटी मॉनिटरी पॉलिसी के थ्रू विथ रिड्यूस लेंडिंग रेट्स यदि अवेलेबल हो जाता है तो मेरे ख्याल से इसके कारण डिमांड साइड जो है उसको जो फिलिप मिलने वाला है, उसको जो पुश मिलने वाला है, उससे काफी फर्क पड़ेगा। ये कॉइन का दूसरा पार्ट है जिसकी तरफ शायद ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। लग रहा है कि सरकार का बहुत खर्चा हो जाएगा। सिग्निफिकेंट ऑनेस्टली बिकॉज दैट्स एरिया ऑफ डिबेट, but it's a great boost. I think the messaging is very clear that we want to increase the consumption and vis-a-vis the demand. So I think I agree with you. हाँ, पशुपति गोपालन जी भी जुड़े हुए हैं वर्चुअली। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देखते हैं पूरे बजट को? Thank you, sir. My primary interest has been on renewable energy. और अगर आप renewable energy में देखेंगे तो पूरा जो बजट है तकरीबन 53%, 50% से ज्यादा इंक्रीज किया गया है पिछले साल और इस साल में, एक ही साल में। तो दैट शोज गवर्नमेंट का जो फोकस है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, डीकार्बनाइजेशन और एनर्जी सिक्योरिटी में काफी ज्यादा हो चुका है। तो उस बजट में सबसे जो बड़ा गेन है वो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का है, जिसमें घर घर में सोलर लग रहे हैं। इंडिया में तकरीबन 8 लाख लग चुके हैं और गवर्नमेंट का टारगेट है कि 1 करोड़ अगले 2 या 3 साल में 1 करोड़ घरों में सोलर लगेगा और उसके वजह से 200-300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हर घर के लिए मिलेगी जो उनकी सब्सिडी से आती है। लेकिन इसमें बस एक ही बात है कि गवर्नमेंट को और ध्यान देना पड़ेगा कि ये गरीबों को नहीं पहुंच रहा है। हालांकि looks like the mood is to praise the government, which I also have to do given the good budget that they've given. But I think ये सूर्य घर योजना गरीबों के लिए नहीं पहुंच रहा है और उसके लिए उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि गरीबों के पास छत नहीं होता है और छत में जगह नहीं होती है उनको सोलर पैनल लगाने के लिए। तो उसके लिए what is the way forward? The way forward will be what is called virtual net metering. तकरीबन 3-4 साल से ये पॉलिसी बन रही है कि गरीबों के लिए हम प्लांट जो है सोलर का दूर लगा दें, कहीं पर भी 10, 15, 100 किलोमीटर दूर लगा दें और वो इलेक्ट्रिसिटी हम फीड कर देंगे ग्रिड को। लेकिन जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी फीड करते हैं, इट कैन बी एलोकेटेड 2,000, 2,000, 3,000, 5,000 पुअर पीपल। उनके मीटर को हम
डिपॉजिट कर सकते हैं वो एनर्जी, तो उसकी सब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। बस पॉलिसी की बात है कि सूर्य घर योजना को हम वर्चुअल नेट मीटरिंग एलिजिबल कर देंगे तो इससे बहुत बढ़िया हो सकता है और गरीबों के लिए फायदा होगा, नहीं तो गरीबों के लिए मुश्किल है इस प्रोग्राम से बेनिफिट लेके आना। सचिन जी, ऐसा लग रहा था कि जैसे सूर्य घर योजना गरीबों को ही केंद्र में रखकर बनाई गई है कि आप मुफ्त में बिजली भी खर्च कर सकते हैं और जो उससे बिजली जनरेट करेंगे वो आप बेच भी सकते हैं, उससे आपके खाते में पैसे भी आएंगे। लेकिन जो एक दूसरा एस्पेक्ट बताया है इसमें, वो कितना इंपॉर्टेंट? मेरे ख्याल से इसमें नेट मीटरिंग इंडिया में अभी भी जिस मात्रा में आनी चाहिए उस मात्रा में आई नहीं है। और जैसे कि अभी हमारे साथी ने कहा कि अवेलेबल एरिया ऑफ the roof which is available in denser population because of vertical development as well is available to a very limited extent. इसी के साथ में मैं एक और चीज में आपका ये लाना चाहूंगा, आकर्षित करना चाहूंगा। तीसरा बात जो मैं कहना चाहता था बजट में वो है न्यूक्लियर एनर्जी। 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर लक्ष्य केंद्रित किया गया है। उसमें दोनों एडवांटेजेस है। एक तो न्यूक्लियर एनर्जी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये अब यूरोप में भी लोगों ने मान लिया है कि फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट करके या तो आप रिन्यूएबल में जा सकते हैं, नहीं तो न्यूक्लियर एनर्जी में जा सकते हैं। और ये न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो एम्फेसिस दिया जा रहा है, मेरे ख्याल से रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी के लिए जितना दिया जा रहा है उतना ही इतनी अहम भूमिका निभाएगा। मुझे याद आ गया मनमोहन सिंह सरकार में ये न्यूक्लियर एनर्जी में अमेरिका से हम लोगों को कुछ जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था और माना जा रहा था कि हमारी एनर्जी की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी, लेकिन वो प्रोजेक्ट उस तरीके से काम नहीं कर पाए। क्या उनको भी फिर से शुरू किया जाएगा, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे बेसिकली अभी 7 जगह पे न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन होती है और एक हमेशा उसमें जो कठिनाई मानी जाती है कि लोगों के पास पहुंच के उसका लोगों का बाइन ले लेना। इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम पीपल। आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ वी ओवरकम दैट एस्पेक्ट ऑफ इट, देन वी विल बी एबल टू रैम्प अप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एट द एग्जिस्टिंग लोकेशंस एज वेल एज एस्टैब्लिश न्यू लोकेशंस, because over a period of time it has been very clearly established that India is in for peaceful use of nuclear energy. I think that is a very big advantage that we have. Right. Mr. Jha, you know, Finance Minister also opens about the nuclear power sector to private players and incentivizes distribution reforms. So what do you have to say on this? See, I think as we are moving forward towards our development goal, you know, in terms of our economy, I think every sector you see we are trying to invite a lot of partnership from the private sector, right? Today, of course, insurance is done completely 100%. So I think it's a step towards that. Even in aerospace, even in defense, there is a lot of initiative now, because I think without PPP, which is public-private partnership, you know, वो आपको वो growth और वो speed नहीं मिलेगी जो you know आपको चाहिए। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप। और एक और मैसेजिंग जो इस बजट में मैंने देखी है बहुत क्लियरली, आई थिंक कि देयर इज अ लॉट बीइंग मैसेज्ड इन टर्म्स ऑफ दैट वी वांट टू बी ओपन टू द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड वी वांट टू बी कंप्लायंट, वी वांट टू बी यू नो कंप्लायंस फ्री, लेस कॉम्प्लिकेटेड, ईज ऑफ डूइंग in terms of you know everything. So there is also a lot of messaging that come invest in India, and I think it's one of those areas where you know we can really do well. Yeah. पशुपति जी, आपने अभी यहाँ पर सूर्य घर योजना की बात की है, उसमें जन भागीदारी तय करने का प्रयास प्रधानमंत्री पहले कर चुके हैं और उसको आगे कह सकते हैं कि उसको विस्तार देने का, उसको एक्सपेंड करने का प्रयास इस बजट में किया गया है। एक और जो है बिंदु पर ध्यान आकर्षित करवाया सचिन जी ने, और वो है न्यूक्लियर एनर्जी। उसको लेकर वो जन भागीदारी से तो वो चीज जो है उस तय नहीं हो सकती है, लेकिन सरकार के पक्ष में आपको क्या लगता है कि कौन से पार्ट्स पर अभी काम करना बाकी है और वो प्रावधान क्या इस बजट में नजर आते हैं? सर, ये जो नया न्यूक्लियर मिशन अनाउंस किया है बहुत बड़ी बात है। मतलब हम बात कर रहे हैं 8 गीगावाट से 100 गीगावाट न्यूक्लियर को बढ़ाने के लिए, लेकिन जो टेक्नोलॉजी या सिलेक्शन जो है वो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की,
जिसके लिए सरकार ने इस बजट में 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ का R&D बजट तय किया है, जिसमें 5 या 6 कंपनीज पार्टिसिपेट करेंगी और 2033 से पहले वो अपना पायलट सेटअप कर लेंगी। और इसका क्या एडवांटेज है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ये छोटे रिएक्टर होते हैं, मान लीजिए 200-300 मेगावाट के, तो लगाने का जगह भी कम होता है और जो तेजी से आप लगा सकते हैं। मतलब आप ये भी सोच सकते हैं कि एक फैक्ट्री में रिएक्टर बन के सेटअप होके डायरेक्टली जाके इंस्टॉल हो सकता है। दुनिया का ये सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है न्यूक्लियर में। बहुत सारे कंट्रीज इस पे काम कर रही हैं और नंबर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स काफी इंक्रीज होंगे। मतलब दुनिया में आज देखेंगे 450 रिएक्टर्स हैं और इस प्रोग्राम की वजह से काफी बढ़ने वाला है। और इंडिया ने ये अनाउंस करके बहुत ही एक फ्यूचरिस्टिक एडवांस स्टेप लिया है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके वजह से कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी will become nearly 95%, which will help us in reducing the cost of hydrogen. Hydrogen will become the new oil, and this is a great way to deliver green electricity for making green hydrogen 24/7, which is not possible right now. Right now you can get to about 60-65%, which reduces the utilization of hydrogen equipment. So this is very good. Although the hydrogen budget itself is very modest, we're dealing with numbers like 300-600 crores. It has increased 100%, but still very small numbers compared to our energy consumption. But this will really boost hydrogen costs in the coming decade. और सबसे बड़ी बात है कि एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए भी ये कदम काफी कारगर सिद्ध हो सकता है। लगातार आम और खास लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं बजट को लेकर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का क्या कहना है बजट को लेकर, एक बार सुन लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, ये 4 मेजर इंजन बताए और कहा कि सुधार हमारे लिए बहुत जरूरी है। कैसे देखते हैं आप आज के बजट? नहीं, बहुत ठीक कहा आपने, लेकिन इसके अतिरिक्त एक और क्षेत्र जिसका भी आप जिक्र नहीं कर रही, धीरे धीरे होगा क्योंकि इसका जिक्र विश्वव्यापी होने वाला है, वो है जो न्यूक्लियर मिशन की घोषणा हुई है। ये एक ऐसा क्रांतिकारी निर्णय है जिसकी कल्पना मुझे लगता है कि 50, 60, 70 वर्ष तक किसी ने नहीं की थी। जिस प्रकार से आज से 4-5 वर्ष पूर्व मोदी जी ने एक बड़ा ही क्रांतिकारी साहसी निर्णय लेते हुए स्पेस फॉर्म लगाई थी और प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन की अनुमति दी गई थी, उसी प्रकार एटॉमिक एनर्जी एक्ट में अमेंडमेंट ला करके, संशोधन ला करके प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना और साथ ही साथ 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर सन 2047 तक टारगेट रखना। यानी विश्व को यह भी संदेश गया वो जमाना जाता रहा कि हम उनसे सीख लेते थे, अब हम टारगेट रखते हैं, हम अगुवाई करते हैं। 20,000 करोड़ रुपया स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए, ये कुछ एक ऐसे निर्णय है जिनकी अभी धीरे धीरे चर्चा होगी क्योंकि अभी शायद इसका बहुत ज्यादा विश्लेषण नहीं हो, लेकिन ये विश्व भर को चौंका देने वाले हैं। उसके अतिरिक्त जैसे आपने कहा मिडिल क्लास के लिए तो है ही है, आपने किसानों की बात की, फार्मिंग में भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात की है। डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए जो 10,000 स्कॉलरशिप्स IIT के माध्यम से स्टार्टअप्स के लिए, तो मुझे लग रहा है कि इस बजट में संवेदनशीलता भी है, दूरंदेशी भी है और निर्णय लेने के साहस भी है। अगला प्रश्न मेरा यही था, वर्ष 2047 तक हम कहते हैं कि हम विजन विकसित भारत की ओर जाने वाले हैं। ऐसे में अगर इस बजट की बात करें तो कितना कारगर बजट और किस तरह से कदम बढ़ाता है उस विजन? जब हम 2047 की बात करते हैं तो ये भी प्रश्न उठना चाहिए विश्लेषण के लिए कि हम उस शिखर पटल पर पहुंचेंगे तो वो वैल्यू एडिशन कहां से होगा। जैसे हम फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में आए, फिर 4 पे जाएंगे, फिर 3 पे जाएंगे, फिर उस शिखर पर, तो वैल्यू एडिशन कहां से होगा? वो वैल्यू एडिशन इन्हीं निर्णयों से होगा। जैसे स्पेस इकोनॉमी देखते ही देखते क्वांटम जंप हो गया, हम कहीं नहीं थे, आज 8 बिलियन डॉलर है और 8-10 साल के भीतर हम 5 गुना बढ़कर के 44 बिलियन तक, यही अब दृश्य आपको एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार स्टार्टअप्स की दुनिया में कृषि को आधुनिकीकरण करना, उसका फिशरीज में भी आपने टेक्नोलॉजी की बात की है। ग्रीन टेक मिशन कहने का तात्पर्य ये कि जहां से ये वो ऐसे क्षेत्र है जिनकी ओर शायद उतनी तवज्जो नहीं दी गई गत वर्षों में जितने के दी जा सकती थी, और विश्व ने भी ये सोचना शुरू कर दिया कि ये हमारी समझ से बाहर है। लेकिन इन क्षेत्रों की ओर जब आप इनको तलाशेंगे तो ना केवल वैल्यू एडिशन होगा, 2047 की तरफ जाने के लिए एक बल मिलेगा, बल्कि साथ ही साथ विश्व को ये भी समझ में आएगा कि अब भारत
उनसे पीछे नहीं है, बल्कि उनकी अगुवाई करने की स्थिति। जब हम नए भारत की बात करते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि नवीनता तो जरूरी है, लेकिन हम अपनी प्राचीनता को साथ लेके चलते हैं। बजट में जिक्र है नेशनल रिपोजिटरी ऑफ डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज, यानी हम जब आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ेंगे तो साथ ही साथ अपनी विरासत को साथ लेकर के चलेंगे, उसको आधार लेकर के, और उसको आधुनिक ढंग से, यानी ट्रेडिशनल नॉलेज को हम जब उसका जब सरमाया इकट्ठा करेंगे तो डिजिटल मीन्स के थ्रू। Now Union Minister Gajendra Singh Shekhawat has reacted on the budget. Let's listen in. आज वित्त मंत्री ने खास तौर पर एक लाइन कोट की कि कोई भी देश मिट्टी से नहीं बनता, उसके लोगों से बनता है। और लोगों के उत्थान के लिए बात करें तो अन्नदाता पर फोकस किया गया, गरीबों के उत्थान पर फोकस किया गया, युवाओं पर फोकस किया गया। आप इस बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार की डे वन से जो सरकार की सोच थी, उसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ही कहते हैं कि देश के लोग मिलकर के देश का निर्माण करते हैं, और हमको अल्टीमेटली अपने देश को विकसित करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और आपने देखा सरकार ने जिस तरह से पिछले 10 साल में सामान्य मानवीय की जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो इनिशिएटिव लिए, आज 25 करोड़ लोग जो है वो गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके नियो मिडिल इनकम ग्रुप में शामिल हुए। देश के मिडिल इनकम ग्रुप जो आज देश का सबसे बड़ा ग्रुप हो गया, सेगमेंट हो गया, उसको फैसिलिटेट करने के लिए जिस तरह से आज करा जो है टैक्स स्ट्रक्चर में रिबेट दिया गया है, राहत दी गई और बड़ी क्वांटम राहत दी गई, निश्चित रूप से देश में इन्वेस्टमेंट को भी ग्रो करेगा, देश में एक्सपेंडिचर को भी ग्रो करेगा और देश की जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करेगा। सर, भारत की संस्कृति सबसे प्राचीन है और सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम महाकुंभ भी चल रहा है, जिसका आयोजन हो रहा है और देश विदेश से वहाँ लोग आ रहे हैं। संस्कृति की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण ये बजट और क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, भारत की संस्कृति में भारत का पुराना ज्ञान वो निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में 1 करोड़ से ज्यादा ऐसी पांडुलिपियां सरकार के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, विश्वविद्यालय, इंस्टीट्यूशंस, इनके साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर के पास में है, जो हजारों साल पुरानी है। कुछ छाल पे लिखी गई हैं पेड़ों की, कुछ भोजपत्र पे लिखी गई हैं, कुछ ताड़पत्र पे लिखी गई हैं, कुछ सिल्क के कपड़े पर लिखी गई हैं, कुछ पन्नों पर लिखी गई हैं। अब समय बीतने के साथ में वो धीरे धीरे जो है वो डिलैपिलेट हो रही थी, वो खराब हो रही थी। उनको कंजर्व करने, उनको डिजिटाइज करके या हमारी बौद्धिक संपदा को विश्व पटल पर ले जाना एक बड़ा सोच था, और माननीय वित्त मंत्री जी ने उसके लिए एक नेशनल मिशन की घोषणा की है। वो निश्चित ही अत्यंत स्वागत के योग्य है। बिहार के उत्थान के लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे मखाना बोर्ड की स्थापना की जा रही है, नहर परियोजना की बात करें, ग्रीन फील्ड की बात करें। निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में बिहार में वेस्ट कोसी नहर बनाना बहुत लंबा प्रतीक्षित काम था, और प्रधानमंत्री जी ने क्या आशीर्वाद से आज वो संपन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। 50,000 हेक्टेयर में खेती करने वाले लाखों किसानों का जीवन निश्चित रूप से उसके कारण से परिवर्तित होगा। मखाना को पूरे विश्व भर में सुपर फूड के रूप में अब मान्यता मिली है, और वो भारत के मखाना उत्पादक किसानों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है। उन सबको फैसिलिटेट करने के लिए, इस सेक्टर को और अधिक ऑर्गेनाइज करने के लिए ये जो बोर्ड बनाने की कल्पना की गई है, केवल बिहार ही नहीं, मखाना उत्पादक जितना भी क्षेत्र है उन सबको निश्चित रूप से उन सब किसानों को उचित मूल्य मिल सके, और मूल्य संवर्धन के साथ साथ में आने वाले समय में नई तकनीकी के साथ में अधिक उत्पादन कर सके। इस दृष्टिकोण से ये बजट अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विजन दिया है, विजन 2047, यानी विकसित भारत का विजन। ऐसे में ये बजट कितना कारगर और कितना अहम कदम? देखिए, 2014 में सरकार में आने के साथ में जिस कल्पना के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया था, पहले 5 साल के कालखंड में जो कुछ न्यूनताएं वर्षों तक रह गई थी उनको परिपूरित करने के लिए काम किया गया। 2019 से विकसित भारत का एक संकल्प लेकर के देश में अमृतकाल में प्रवेश करने के साथ में उस दिशा में काम प्रारंभ हुआ, और ये जो अभी वर्तमान का बजट जो आज माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया गया है, ये एक साथ एक लंबी छलांग विकसित भारत बनाने की दिशा में लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में होगा। सचिन जी, मैं शेखावत जी की बातों पर भी प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन उससे पहले जितेंद्र जी ने जो कहा कि हम अब अगुवाई करने लगे हैं विश्व की, हम बहुत सालों तक अलग अलग क्षेत्र में दूसरों को फॉलो करते रहे हैं, अब उस स्थिति में आ गए हैं कि हम लीड
करने लगे हैं, और लीड करने के लिए क्या एनर्जी को लेकर जो प्रावधान रखे हैं इस बार बजट में वो कारगर हैं क्या? मेरे ख्याल से कई सेक्टर्स है जिसमें भारत एक देश के रूप में, एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस के रूप में, एज वेल एज स्किल सेट के रूप में लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है। और यदि उसमें 2 या 3 एरियाज हम लोग देखें, अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो भी काम करना जरूरी है, उसमें ना ही सिर्फ भारत सरकार ने उसके ऊपर एम्फेसिस दिया हुआ है, लेकिन ये भी हम मान के चले कि जग भर में जहां जहां पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एफर्ट लगाया जा रहा है उसमें भारतीयों का काफी बड़ा योगदान है। तो लीडरशिप या अगुवाई करना आगे रह के, इसमें मेरे ख्याल से भारत कभी कम नहीं रहा है। एक ही एरिया में मेरे ख्याल से जिसमें हम लोगों की कमी रही है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और यदि आज के बजट में जो 4 अहम पिलर्स दिखाए गए हैं उसमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग ये चौथा पिलर दिखाया गया है। और यदि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग हो या हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग हो, इसमें यदि हम लोग अपनी लीडरशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं तो हम डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों में हम इंटरनेशनल लीडर बन सकते हैं। लेकिन ये सब कहने इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए हम लोगों को स्किल डेवलपमेंट करनी होगी, इसके लिए हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हम लोगों को इंप्रूवमेंट लानी है वो लानी होगी। क्योंकि आज के दिन में भी इंडिया में सप्लाई चेन के जो लीकेजेस है, सप्लाई चेन के जो ऑब्स्ट्रक्शंस है, बॉटलनेक्स है, उसको हटाना जरूरी है। उसी के कारण हम लोग इंटरनेशनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो प्रोडक्शन है उसमें कॉम्पिटिटिव बन सकते हैं। सो कठिनाइयां काफी है, लेकिन कदम सही है। कदम सही है। और संजीव जी, अगर बात करें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो एक नया सेक्टर खोल दिया है पिछले कुछ वर्षों में, जिसमें बहुत बड़े हम आयातक हुआ करते थे, अब हम निर्यातक भी बन गए हैं, वो है डिफेंस सेक्टर। जी देखिए, ऐसा है कि जो हमारा पार्टिसिपेशन है ग्लोबल इकोनॉमी में, उसको बड़ा करने का एक तरीका है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। और इसलिए आप देखोगे एक एक्सपोर्ट मिशन एस्टैब्लिश किया गया है विद अ वेरी क्लियर टारगेट इन दिस बजट, कि टारगेट भी फिक्स होगा कि हम किस चीज में कितना एक्सपोर्ट करेंगे। तो सभी सेक्टर्स में उसका फोकस है। ऑब्वियसली स्पेस और इवन एरोस्पेस, इवन डिफेंस, इन सब में हमारा, क्योंकि अब हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्निक से हम अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें बना पा रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा इंडोनेशिया के जब प्रेसिडेंट आए थे एज ए गेस्ट, तो इंडोनेशिया ने डील की है डिफेंस की हमारे साथ। सो काफ़ी लोग हमारे दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अस कि इफ वी कैन एक्सपोर्ट टू देम। सो डिफेंस इज वन ऑफ द एरियाज, बट द मैसेजिंग आई थिंक इन दिस बजट इज दैट we should focus on exports. We should become the leaders in the export for the whole world, so that जैसे इन्होंने बताया है कि जैसे सप्लाई चेन में हमको प्रॉब्लम्स है आज की डेट में, तो वो आई थिंक कमी पूरी करने के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा। जैसे हम टॉयज के लिए ग्लोबल हब बनाना चाह रहे हैं, और सेमीकंडक्टर के लिए हमने ऑलरेडी इस पे बहुत काम हो रहा है। आप देखोगे आईफोन जो है 30% अब इंडिया में ही बन रहा है। तो ये सब इट्स ऑल टुवर्ड्स दैट। आई थिंक विल हैव मोर टू सी। डायरेक्शन बहुत मैच्योर और बहुत अच्छे तरीके से इसको लिया जा रहा है। पशुपति जी, हमने देखा कि कल ही अश्विनी वैष्णव जी का एआई को लेकर एक बड़ा बयान आया था। बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि चीन के एक स्टार्टअप ने बहुत कम लागत में एआई का एक कारनामा करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि इससे आगे बढ़कर हम जो है विश्व को चकाचौंध कर देंगे, ऐसा कुछ करने वाले हैं। वो करने के लिए जो कंपोनेंट्स हमें चाहिए, क्या वो बजट में उसका प्रावधान रखा है इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने? पशुपति जी, आवाज आ रही है? सॉरी सर, आई थिंक आई मिस्ड द क्वेश्चन। सो मैंने स्पेसिफिकली ऐसे कुछ देखा नहीं है, लेकिन ये बहुत रीसेंट डेवलपमेंट है और इंडिया को भी नेशनली ऐसे कुछ करना पड़ेगा। मैंने ठीक से मेरा फोकस एनर्जी में है, तो मैंने एआई के बारे में देखा नहीं है। नहीं, अगर एनर्जी की भी बात कर ले, जिस तरीके से हम लोग आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी वजह यह भी है कि जिस तरीके से वैश्विक पटल पर तनावपूर्ण माहौल चल रहा है, वातावरण जो है बहुत टेंस है, उसको देखते हुए भी हर क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर होना बेहद आवश्यक है। और आत्मनिर्भर बनने की और ही कहीं ना कहीं इस बार का वित्त बजट है। बिल्कुल, ये एक एनर्जी कंजम्पशन अगर आप देखेंगे
जो कंप्यूटिंग पावर है जिसके लिए जिसमें एआई रन करती है और कंप्यूटर्स, ये सबसे बड़ा ग्रोथ है और इंडिया में बहुत बहुत होने वाला है आने वाले सालों में। तो एनर्जी सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज होती है और इसमें अगर आप देखेंगे क्लियरली जो जितेंद्र जी बोल रहे थे पहले, द नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी मिशन इज अ revolutionary announcement for today. Really very, very big announcement. Just like last year, the Prime Minister had announced Pradhan Mantri Surya Ghar Yojana, and even today it has been increased. 80% allocation has been increased, almost doubled. But ये जो 100 gigawatt का इंडिया ने डिसाइड किया है, by 2047 विकसित भारत तक हम लेके आएंगे, बहुत बड़ी चीज है. That gives us the ability to become self-sustainable and improve our energy security so that we can meet the demands of new technology like AI and the computing power. So energy में बहुत ही मतलब बहुत ध्यान दिया है फ्यूचर को रख के. Right. Mr. Bhanushali, Finance Minister said that, the government will support domestic manufacturing capacity and sectors will be identified with the objective criteria. But one thing I'd like to ask, because we have been, before the budget, we have been hearing this term consumption. So with consumption being a key driver of India's GDP, we have witnessed a downturn lately. So what factors contributed to this and what measures can help revive demand? Okay, so I think there are a couple of things. One is that there has been an international headwinds as far as consumption is concerned. We don't see great things happening internationally. It also has an impact on Indian consumption. Secondly, that over a period of time, both because of inflation, which results into erosion in the purchasing power value of money, as well as the conditions that prevail in India, over a period of last 3 to 4 quarters, we have seen a little bit of softness. I won't say reduction, but softness in consumption. And India's strength is consumption. You have the largest population, almost 150 crore population, which has to be supported by India. Of course, there are many people who have not been touched as far as development is concerned. They are still on the periphery, etc. However, going forward, the rest of the world is looking at us as a potential market. And if we ourselves don't kind of harness the market potential of our own population, I don't think we are going to achieve whatever we want to achieve. In that regard, I think domestic consumption is going to result into domestic consumption-led investment. The virtuous cycle of infrastructure spent by government has already come to a point where we roughly get a 1:1, 1:1.3, 1:1.4 magnification as far as investment of government in infrastructure is concerned. And I am sure it will continue the way we have seen the sectoral allocation which has been done. Particularly in railways, we have seen that we are not only increasing our gross budgetary support to railways, but over a period of time, we have maintained it at the same level. This year also, I think about 265,000 crore rupees are allocated, whereas road is now 172,000 crore rupees. So going forward, emphasis on rebuilding consumption, and consumption के लिए दो ही चीजें हैं, that there has to be more purchasing power in the hands of people and there has to be credit availability. So by doing, let's say, giving up 1 lakh crore rupees by way of direct tax revenue by the fiscal side of it, and by having an appropriate measure from the monetary side of it, wherein I think I'm sure we will see some amount of softening of interest rates in the next monetary policy statement which will come from Reserve Bank of India. We will be able to create an environment wherein domestic consumption-led growth can be brought back into India. The rest of the world may not develop, but India has no reason to complain on that count because we have enough number of people, enough number of skilled people, we have enough production capability available, and we have land. And from that point of view, I think the steps which have been taken, if supported necessarily by the credit policy, the monetary policy, I am sure we will definitely move in that direction. अगर बात करें एमएसएमई, एक ऐसा क्षेत्र है जिसको लेकर बहुत बड़ी घोषणाएं आज के बजट में हुई है. एक तो है ये वर्गीकरण में जो बदलाव हुआ है, क्लासिफिकेशन में जो चेंजेस आए हैं, वो क्या कुछ कहते हैं, और सीधा जो लोन गारंटी है वो 5 करोड़ से 10 करोड़ और 20 करोड़ तक जो है आपको लोन मिल पाएगा सीधे तौर पर. ये कितना बड़ा कदम है? सी आई थिंक एमएसएमई एक मेजर टॉपिक रहा है आज के बजट का. अगर आप देखेंगे तो एमएसएमई में सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है कि जो क्राइटेरिया है टर्नओवर का
देयर आर 2 क्राइटेरियाज टू क्लासीफाई एज MSME, वो डबल कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब MSME में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्रेडिट गारंटी को 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया है। माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दी गई है। और आई थिंक ये सब अनाउंस करने से पहले अगर आप MSME का कंट्रीब्यूशन देखेंगे वो बहुत ही इंप्रेसिव है। जैसे कि दे कंट्रीब्यूट 46% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, they have 7 crore people employed in MSME. There are total 1 crore MSMEs in the country, and they have 26% share in the export in manufacturing. So I think keeping all this in mind, and even in developed economy, you will see that the MSMEs are many more stronger. I heard in the earlier panel also. MSME segment is generally the backbone of the country. So I think focus बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और जितना किया जाए MSME के लिए उतना कम है। बट इस बजट में ऑब्वियसली फोकस है कि मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए या डिमांड क्रिएशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए MSME को अगर हम टारगेट करेंगे तो जो हमारे रिजल्ट्स हैं उसमें हमें काफ़ी अच्छा अचीवमेंट मिलेगा। पशुपति जी, ये सोलर पैनल जो है वो ज़्यादातर हम लोग इंपोर्ट किया करते हैं और काफ़ी महंगे पड़ते हैं, इसलिए सोलर एनर्जी उतनी वाइबल नहीं हो पाई है भारत में। मेरी बात हुई थी MSME से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों से अलग अलग कार्यक्रमों में। उन्होंने कहा था कि हमें फ्री हैंड दिया जाए सरकार की तरफ से और हमें कुछ थोड़ी सी रियायतें दी जाएं तो हम वो कंपोनेंट भारत में बना सकते हैं। तो क्या उस और ये कदम मानते हैं, जिस तरीके की घोषणाएं की गई हैं, ऋण गारंटी जो है वो डबल कर दी गई है, उसको वर्गीकरण जो है उसमें बदलाव के संकेत दिए हैं सरकार ने? पशुपति जी आवाज सुन रहे हैं? लगता है शायद डिस्कनेक्ट हो गए। मैं आपसे जानना चाहूंगा सचिन जी, सॉरी, ये इस सवाल का जवाब आप सोलर एनर्जी को लेकर। हाँ। सोलर ये कहा जा रहा था कि लोगों तक उस स्पीड में ये नहीं पहुंच पा रही है। इसकी वजह ये है कि सोलर पैनल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत महंगे पड़ते हैं, वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसलिए यहां पर अगर भारत में इसका निर्माण हो, और वो निर्माण करेगा MSME सेक्टर, और MSME सेक्टर तैयार भी था, लेकिन उसको थोड़ी सी रियायत चाहिए थी, थोड़ा सा सहयोग चाहिए था। उस रियायत और सहयोग के तौर पर क्या इस बजट में ये प्रावधान देखते हैं? मैंने जो बजट के डॉक्यूमेंट्स पढ़े उसमें ये तो खैर मैं पा नहीं पाया हूं कि इसके लिए डायरेक्ट कोई इंसेंटिव दिया गया है। लेकिन एक चीज जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में हुई है कि सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया गुजरात में शुरू हुआ है और बड़ी मात्रा में शुरू हुआ है। अडानी ग्रुप उसमें इन्वॉल्व है, और मेरे ख्याल से जब तक हम लोग सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंट नहीं हो सकते तब तक मेरे ख्याल से इस एरिया में हम लोगों को जो भी उपलब्ध पानी है वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। मेरे हिसाब से ये एरिया MSME सेक्टर में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग नहीं आता है, क्योंकि इसके लिए काफी बड़ी लागत की जरूरत होती है। लेकिन इसके जो कंपोनेंट्स है या असेंबली प्रोसेसेस है, इसमें MSME काफी मात्रा में मदद कर सकता है, क्योंकि सोलर पैनल के अलावा उसके कंट्रोल पैनल्स रहते हैं, उसके बैकएंड के इक्विपमेंट जो रहते हैं वो MSME बड़ी मात्रा में प्रोवाइड कर सकता है। तो मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज MSME कैपेबिलिटीज आर बोथ द थिंग्स व्हिच आर नेसेसरी फ्रॉम इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू इन जनरल एंड पर्टिकुलरली इन केस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सोलर एनर्जी इज कंसर्न। जी, और दूसरा स्टार्टअप के लिए भी उसी तरीके की घोषणाएं की गई हैं। लोन कवर जो है 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है। 10,000 करोड़ के लिए एक नए कोष के निर्माण की भी घोषणा कर दी गई है। तो लगातार ये है कि लोग जो हैं अपने उद्यम की ओर किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि स्टार्टअप के क्षेत्र में हम देख रहे हैं हम लोगों ने लंबी छलांग लगाई है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे मैंने बताया कि आई थिंक इस बजट में फोकस किया गया है कि किन किन सेगमेंट्स को टारगेट किया जाए, जो हमको हमारे अचीवमेंट या हमारा जो टारगेट है GDP का, या जो हमारा एम्प्लॉयमेंट का टारगेट है, और जो हमारा ग्लोबल एक्सीलेंस का टारगेट है, वो कैसे अचीव किया जाए। सो वन ऑफ द वेज टू ग्रो इज थ्रू स्टार्टअप्स, राइट। और इसमें आप देखोगे एक जो SC ST 5 लाख लेडीज को एज ए एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छा है। ये पहली बार ऐसा इस तरह का कोई प्रोविजन रखा गया है, वो MSME से लिंक्ड है। लेकिन आई थिंक मैसेजिंग बड़ी क्लियर है कि स्टार्टअप, और उनको कुछ बेनिफिट्स भी दिए गए हैं, और लास्ट ईयर भी टैक्सेशन में बेनिफिट्स दिए गए थे स्टार्टअप्स को। सो आइडिया ये है कि हम जितने से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर इंडिया में
बना सकें, वो भी एक हमारी पूरी ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। और आई थिंक इसलिए जो स्टार्टअप सिस्टम, इकोसिस्टम है, उसको पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है, जिस तरीके से भी उसको सपोर्ट दिया जा सके। लेकिन एक और घोषणा भी है इसमें, लेदर स्कीम है, 22 लाख लोगों तक इसका सीधा लाभ उठाएगा। ये इस तरीके की घोषणा आमतौर पर पहले कभी शायद किसी बजट में नहीं हुई है। मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर बजट में सेक्टरल एलोकेशन, स्पेसिफिक सेक्टरल एलोकेशन काफी माइक्रो लेवल पे किया गया है। कई सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो लेट्स से एलोकेशंस है वो अभी तक बजट पेपर में नहीं थे और वो एनेक्शर में जाने के बाद ही पता चल पाएंगे। लेकिन सेक्टर फोकस्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो एग्रीकल्चर में भी, जैसे मैंने पहले कहा आपको कि ऑयल सीड्स एंड कॉटन, लॉन्ग स्टेपल फाइबर कॉटन, इसमें फोकस रहेगा। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक, या जैसे अभी हमारे साथियों ने कहा मखाना बोर्ड के बारे में, सो दीज आर बिग स्टेप्स बिकॉज इफ यू गिव नेसेसरी input for a particular sector, then possibility of that sector developing and becoming a leader increases. Similarly, leather products in India are also are considered to be one of the one area where both artifacts as well as quality leather products, काफी international sourcing India से होती है कि leather products India में बनते हैं और विदेशी ब्रांड में बेचे जाते हैं। So from that point of view, in order to get the maximum benefit to India, it is necessary to have this kind of sectoral focus, which is I think सराहनीय है ये बिल्कुल। In fact, India announced a new scheme providing terms loans up to 2 crore for the first time borrowers, especially women and SC/ST entrepreneurs. Yeah, so aiming to foster inclusive economic growth. Absolutely. And reduce barriers to financing of these groups. Yes. आई थिंक एक्सेस टू क्रेडिट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि आप यदि कमर्शियल बैंक्स के पास जाके यदि आप लोन लेना चाहते हो और आप नए एंटरप्रेन्योर हो तो आपके पास क्रेडिट रेटिंग नहीं रहती है, आपके पास कोलैटरल्स नहीं रहते हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन यदि सरकारी स्कीम के थ्रू, यदि यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के थ्रू यदि इस टाइप का एक्सेस टू क्रेडिट यदि मिल जाता है तो उसमें काफी फर्क पड़ता है। एक तो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लिमिटेड रहती है, दूसरा आपको जो कमर्शियल बोरोइंग के नॉर्म्स है, जो काफी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स रहते हैं, उनको फॉलो करना जरूरी नहीं होता है। एंड मतलब जैसे माइक्रो क्रेडिट है, माइक्रो क्रेडिट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द सपोर्ट ऑफ यूनियन सेंटर और स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम। सिमिलरली फ्रॉम एन MSME पॉइंट ऑफ व्यू, any let's say scheme which makes credit available in the hands of the entrepreneurs, particularly sectoral entrepreneurs, makes a lot of difference. एक चुनौती रही है बैंकिंग सेक्टर के सामने एनपीए की। एनपीए कंट्रोल हो गया है, क्योंकि एनपीए कंट्रोल नहीं था, आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था, तो लोन देने में थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, इसलिए भी थोड़ा सा उद्यमी उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। अब जब एनपीए कंट्रोल में है तो माना जाए लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन उपलब्ध होगा, और जो एक व्यवसायीकरण की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपना उद्यम शुरू करने की बात करते हैं, उस और ज्यादा देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए, बैड डेट्स इज अ रियलिटी, वेदर इट इज इन फाइनेंस सेक्टर और वेदर इट इज इन नॉन फाइनेंस सेक्टर। एनपीए फाइनेंशियल सेक्टर का बैड डेट्स है, और एनपीए को कंट्रोल रखना ये एक इंटीग्रल पार्ट है डिसिप्लिन का, ताकि आप देखेंगे कि इंडिया में बेसिकली कमर्शियल लेंडिंग में दो हिस्से हैं। एक तो कमर्शियल बैंक्स डायरेक्टली लेंड करती है और उसमें उनका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ज्यादा रहता है, और नॉन बैंकिंग फाइनेंस का ऑपरेशंस एनबीएफसीज जो है, जिनको शैडो बैंक्स कहते हैं हम लोग, शैडो बैंक जो रहती है वो हायर रिस्क कैपिटल प्रोवाइड करती है। तो ये दोनों का यदि सुगम मिलाप रहा और ये इन दोनों ने यदि अपने क्रेडिट के जो क्राइटेरिया है वो फॉलो करके यदि क्रेडिट दे दिया तो डिसिप्लिन रखना आसान है। अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स मार्केट में हमेशा रहेंगे, लेकिन वो अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करके आपका जो लेंडिंग है वो, क्योंकि लेंड होने वाला मनी जो है लोगों का इन्वेस्टमेंट सेविंग्स है, it is basically people's savings and corporate savings which results into an investable surplus, which then is given as loans and advances by the banks, whether it is commercial banks or NBFCs. So from that point of view, maintaining this discipline is very important, and a reduction in NPA is a good sign of maturity of the financial sector of the country, and I think we are moving in that direction. Mr. Jha, shifting your focus to the income tax rebate, which is, it's a big relief to the middle class. So one thing I'd like to understand from you, like if the government puts more money in the hands of common man, where does it get the funds to invest in infrastructure, and how does this impact the fiscal targets?
See, that is one mathematics which, people are trying to figure out. I was very curious to know. Yeah, so I still don't have the answer, but yeah, people are saying that if there is an outgo on account of tax benefit and overall, the tax revenue is not growing up more than 10%, where is the money going to come from? But I think, and the fiscal deficit, how will it remain below 4.5%? So yeah, I'm sure there is a clear provision because its budget is like, adding up the revenue and deducting the expenditure. I'm sure you go to the fine prints, you will find the answer for it. But आप देखेंगे यदि तो बजट के इनिशियल स्पीच में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने एक चीज कही थी कि सरकार ने जो करना था वो किया है और कर रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को जो करना है अभी वो लीडरशिप आपको दिखानी पड़ेगी. Even in the economic survey, there was a big push on the private. Now, the way probably it can work, and it is not necessarily that it works like clockwork, is that if you put more purchasing power in the hands of people by reducing their tax liability, then they will spend money on primarily 4 or 5 sectors. They will either buy automobiles, they will buy houses, they will buy fast moving consumer goods. That means consumption बढ़ जाएगा लोगों का, ज्यादा पिज्जा खाना शुरू करेंगे लोग, या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लेना शुरू करेंगे. और मेरे ख्याल से ये चारों सेक्टर्स में काफी 4 या 5 सेक्टर्स में काफी अच्छी तरीके से स्प्रेड आउट रहेगा. इसके अलावा लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, एसआईपी में भी डालेंगे. सो ये 5 एरिया में मान के चलिए यदि लोगों के पास जो बचे हुए पैसे हैं वो यदि चले जाते हैं, वो 1 लाख करोड़ रुपए बचे हुए 1 लाख करोड़ रुपए जाते हैं, तो दिस push of demand in demand-led economics, as the economists would like to call it, will result into private sector investing in additional production capacities in those sectors. Right. Currently, because of the international headways as well as a little bit of softness that we have seen in consumption, many industrial houses have held back their investment in additional capacities. So I believe that to some extent, to give a fillip, it is not necessarily that it always works, but in order to give fillip to the production of the country, and in order to increase the investment in productive capacity of the country, it is necessary that the golden path of consumption is shown to the industry. Only then the industry will invest money in productive capacity. And maybe the money will flow back in the form of the taxes for the extra income those corporates make because of this consumption, right? That's the only way it comes. And that's why I was insisting that along with this fiscal initiative which has been taken, or a revenue has been given up to the extent of 1 lakh crore rupees, the lending sector, the financial sector led by the Reserve Bank of India by way of an appropriate monetary policy as well as a softer credit terms by reducing, let's say, rate of interest, even if it is by 25 basis points or 50 basis points, is going to pave the way for future investment in productive capacity in India. Definitely, we'll get back on that. Let's reactions are pouring in. Let's listen in. Yes. MSME निर्यात कुछ इंजन बताए वित्त मंत्री ने आज, लेकिन ये कहा कि सुधार सबसे महत्वपूर्ण है और हमारे लिए अहम है. कैसे देखते हैं आप? नहीं, और मैं इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का मैं विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करूंगा. ये एक ऐसा कंप्लीट बजट जहां पे हर सेक्टर का ध्यान रखा गया, जहां पे युवा, महिला, किसानों का, MSME से जुड़े हुए लोगों का, कैसे अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम किया जाए, उस सोच वाला बजट है. गाँव और शहर के बीच की दूरी को कम करने वाला ये बजट है, जहां पर हर क्षेत्र में कैसे उसको मजबूती दी जा सके, उस सोच के साथ लाया गया ये बजट है. बिहारी होने के नाते मुझे ज्यादा खुशी है इस बजट को लेकर. सवाल पर भी मैं आ रही हूँ. बिहार की आप हमेशा बात करते हैं, यू ऑलवेज से आई एम अ प्राउड बिहारी, और बिहार के उत्थान के लिए आपने काफी काम भी किया है. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करूँ मैं बिहार की, लेकिन मखाना बोर्ड बन रहा है और एक बड़ा काम बिहार के लिए, बिहार के उत्थान के लिए, बिहार के विकास के लिए. कैसे देख रहे हैं इस प्रयास? बिल्कुल, एक बिहारी होने के नाते आज मैं ज्यादा खुश हूँ, मंत्री होने के नाते भी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मखाना हो, निफ्ट्रम हो, दोनों हमारे विभाग के अंतर्गत आते हैं. बट हाँ, एक बिहारी होने के नाते मुझे खुशी है. बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं. ऐसे में बिहार विकसित राज्य बने, उस दिशा में भी ये बजट बिहार को बल देता है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखा गया, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का इसमें जिक्र किया गया, IIT एक्सपेंशन का इसमें जिक्र किया गया. कोसी की त्रासदी हर बिहारी जानता है, उसके समाधान के प्रावधानों का भी इसमें जिक्र किया गया. साथ ही में मैंने अपने विभाग का जिक्र किया. लंबे समय से विभाग की मांग थी एक और निफ्टम को लेकर. मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि मेरे मंत्री
मंत्री बनने के बाद अगला निफ्टा मेरे ही गृह राज्य बिहार में अब खुलने जा रहा है। मखाना जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार में होता है, उसको लेकर वहां पर बोर्ड के गठन की बात की गई। तो एक बिहारी होने के नाते, मंत्री होने के नाते मैं प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं। देशवासियों की तरफ से भी जिस तरीके से टैक्स स्लैब्स में रिबेट्स दी गई, उसमें बदलावों को इस सोच के साथ उसमें बदलाव किए गए कि कैसे ज्यादा कमाई हर देशवासी के हाथ में बचे। तो मैं देशवासियों की तरफ से भी प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। आप हमेशा कहते आए हैं कि मैं एक सहयोगी पार्टी हूं और मेरा काम है सपोर्ट करना, और सपोर्ट सिस्टम के तौर पर मैं हमेशा तैयार हूं, हनुमान की तरह खड़ा हूं, ये भी आपने कई बार कहा है। लेकिन हम जब बात करते हैं विजन 2047 की, हम कहते हैं भारत विकसित होगा वर्ष 2047 तक। ऐसे में इस बजट को अगर हम देखें तो कितना बड़ा प्रयास, कितना बड़ा कदम उस विजन को सार्थक करने हेतु? मुझे लगता है विकसित देश की दृष्टि से जब हम लोग मुड़कर देखेंगे 2047 के बाद, तो उसमें इस बजट की भी एक अहम भूमिका होगी। कहीं ना कहीं उस विकसित देश को बनाने की नींव में इस बजट का एक अहम योगदान होगा, ये मैं जरूर मानता हूँ। हमारे साथ हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका संसद टीवी पर। थैंक यू सर। निश्चित रूप से आज एक बहुत बड़ा दिन है, बजट प्रस्तुत हुआ है 2025 और 2026 का एक लक्ष्य। उस लक्ष्य के निर्धारण में अगर हम देखें जल शक्ति के लिहाज से इस बजट को आप कैसे देखते हैं? कैसे विकसित भारत में जल शक्ति के लिए फोकस किया जाएगा और काम किया जाएगा? जल के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब पहले से बहुत सीरियस भी है और उसका उपाय भी ढूंढ रहे हैं। आने वाले दिनों में जो समस्या अगर हो सकती है तो जल के लिए ही हो सकती है और जल के कारण ही समस्या हो सकती है। उसी लिए बाढ़ से भी समस्या है, सूखा से भी समस्या है, पीने के पानी की भी समस्या है। तो इस सबको कैसे उसको प्लान किया जाए, उसी लिए उन्होंने 2019 में जब जल शक्ति मंत्रालय बनाया, जब उसको एकत्रित किया गया और आज जिस तरह से उसके अंदर जो काम हुआ है कि लगभग 15.44 करोड़ लोगों को घर में पानी दिया गया है। सिर्फ पानी देने से मतलब नहीं है, पानी के साथ उसके परिणाम भी देखना चाहिए कि लगभग 5.5 करोड़ घंटे जो महिला रोज पानी लेने के लिए जाती थी, दूर तक बोझ उठा के आती थी, उसको उसमें से मुक्ति मिली है। 5.5 करोड़ घंटे रोज के महिला अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने आर्थिक उपार्जन के लिए वो खर्च कर रही है। उसके साथ जो शुद्ध पानी मिला है उसके कारण WHO का रिपोर्ट कहता है कि करीब 4 लाख करोड़ बच्चों की मौत रोक सके हैं। इतनी बड़ी मौत रोक सकना ये भी बहुत अच्छा काम इसके अंदर हो सकता है। साथ में इसके अंदर WHO का रिपोर्ट कहता है कि 8.4 लाख करोड़ रुपया इसके अंदर जो आरोग्य के लिए लोग खर्च कर रहे थे तो वो भी बचा है। इतनी बड़ी अमाउंट तो आरोग्य में जो खर्च हो रही थी वो बची है। साथ में जो बिन जरूरी दवाएं जो बच्चों के शरीर में या लोगों के शरीर में जा रही थी, उसकी वजह से बहुत देर से भी मगर उसका रिएक्शन तो कुछ ना कुछ आता ही रहता है, तो उसमें भी उसके मानव शरीर का बचा हुआ है। तो एक ही काम करने से कितना काम हुआ है और इसीलिए आज मोदी साहब ने हमारा 2028 तक का जो हमने प्रपोज किया हुआ था 2.8 लाख करोड़ का, वो बजट आज फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी सर, अगर बात करूं हर घर नल और हर घर जल पहुंचाने की योजना को लेकर अब तक काफी जगह काम भी हुआ है, दूर दराज के क्षेत्रों में काम हुआ है, लेह लद्दाख जैसे दूर दराज क्षेत्रों में भी काम हुआ है। आगे आपका रोड मैप क्या रहेगा? कहां पर आपके फोकस एरियाज रहेंगे कि वहां तक पानी की उपलब्धता पहुंचाई जाए? छोटे बड़े जो प्रॉब्लम आ रहे हैं कि नल है जल नहीं है, हम उसको 100% नल से जल की जो योजना है उसको पूरा करना चाहते हैं। अभी तक जो 15.44 करोड़ लोगों को घर में पानी मिला है और करीब 4 करोड़ लोगों को पानी और देना है, घरों में पानी देना है। हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में हम उनको भी पानी दे दें और शुद्ध पानी दे दें, उसके लिए हमारी कोशिश है। देश के एजुकेशन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, सर स्वागत है आपका संसद टीवी पे। कहा जाए कि इस साल का बजट इंक्लूसिव ग्रोथ पर तो फोकस्ड है, लेकिन बहुत ज्यादा फोकस एजुकेशन, इनोवेशन और स्किलिंग पर भी है। चाहे डीप टेक फंड्स की बात की जाए या PM फेलोशिप की बात की जाए, एजुकेशन एज अ सेक्टर, एजुकेशन एज अ होल ऑफ मिनिस्ट्री अप्रोच, सर आप इस बजट को कैसे देखते हैं? केवल एजुकेशन नहीं, मैं इस बजट को एक फ्यूचरिस्टिक और भविष्य के लिए एक दूरदृष्टि संपन्न बजट मानता हूँ। इस बजट में जो सारे विषय उल्लेख किया गया है, जो नीति सब बनाई गई है, जिसकी संकेत दिया गया है, उसमें वर्तमान में चलने वाले सारे स्कीम्स के ऊपर कुछ घोषणा किया गया है।
समग्र शिक्षा, पीएम पोषण, पीएम श्री, सब तो चलते रहेगा, लेकिन उसके अलावा जिस प्रकार की योजनाएं उसमें से घोषित किया गया है, इसके कारण इस सदी के जो अंतिम 50 साल रहेगा, 2047 हम सबके लिए एक लक्ष्य है। इसकी जो इम्पैक्ट आएगा इस आज जो बजट में सब क्रियान्वयन होगा, क्योंकि आज जो बच्चा जन्म हो रहा है या 5 साल में है या 15 साल में है, इसकी पूरा उसकी पुरुषार्थ 47 के आने वाले 22 साल के बाद वो समाज के नेतृत्व करने वाला है। आज सशक्त आंगनबाड़ी पोषण अभियान 2.0 से लेके उनके लिए अलग बजट प्रोविजन किया गया है। 50,000 नया अटल टिंकरिंग लैब बनाया जाएगा, स्कूल्स में बनाया जाएगा। भारत की सभी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल्स को इंटरनेट के साथ जोड़ा जाएगा। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा भारतीय भाषा के ऊपर जोर दिया गया था, सिर्फ पॉलिसी की वो डॉक्यूमेंट नहीं रहा। इस बार बजट में भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम स्कूल में और हायर एजुकेशन में भारतीय भाषा की पुस्तक बने और डिजिटल बने, इन दोनों के लिए इस बजट में वित्तीय प्रबंधन किया गया है। भारत में इनोवेशन बढ़े, भारत में R&D बढ़े, इसके लिए महत्व दिया गया है। आप देख रहे हैं बजट पर संसद टीवी की खास पेशकश। मेरे साथ हैं जनजातीय मामलों के मंत्री जुआल ओराम जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। नमस्कार सर, सबसे पहले अगर बजट के फाइनल पॉइंट्स की बात करी जाए तो महिला, किसान, युवा पर बहुत ज्यादा फोकस है, और वही अगर कहा जाए जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव विकास, सबका विकास की बात कही गई है। किस तरह से देखते हैं आप इस साल के बजट को? देखिए, ये पहला तो है कि किसान के लिए बहुत फायदामंद है। क्रेडिट कार्ड, जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसमें वो ज्यादा पैसा उठा सकते हैं, और किसानों के लिए बहुत सारे बेनिफिट है उसमें, इंक्लूडिंग यूरिया का से लेके सब उसमें है। दूसरा है कि युवा के लिए भी जो फर्स्ट टाइम और बिजनेस करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, महिला के लिए, जनजाति के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, इसमें भी काफी बढ़िया फैसिलिटी अनाउंस किया गया है। उसके साथ साथ आपका खास करके जनजाति का क्षेत्र में जो हम लोग का बजट है वो बढ़ोतरी हुआ है, और उसमें से भी काफी बेनिफिट हम लोग को मिलेगा। और इनकम टैक्स में भी काफी कंसेशन दिया गया है, इसमें भी बहुत सारे बेनिफिट लोगों को होगा, खास करके मिडिल क्लास को होगा। तो इसलिए ये बजट बहुत ही बढ़िया बजट है, और ये विकसित भारत जो प्रधानमंत्री बार बार जो घोषणा कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, इसमें से ये झलक आ रहा है इसमें। सर, आपके मंत्रालय की बात की जाए तो लगातार बहुत फोकस रहा है, चाहे वो एकलव्य विद्यालय की बात की जाए या फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात की जाए। इस बार का बजट आप अपने मंत्रालय के तहत कैसे देखते हैं? ये भी बहुत लाभदायक है और हम लोग के लिए बहुत बेनिफिट है। ट्राइबल लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट है। धरती आबा और जनमन, ये 2 जो स्कीम है, ये 100% सेचुरेटेड होगा, गांव का पूरा विकास होगा, तो इसलिए इसमें हम लोग को बहुत बेनिफिट होगा। सर, चलते चलते विकसित भारत की परिकल्पना है, 2047 तक हमें डेवलप नेशन बनना है। इस बजट को आप कितना सार्थक पाते हैं? बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, और ये बजट के कारण देश का सबका भला होगा, सबका भला होगा, देश का भला होगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन जितेंद्र नेगी और कैमरा असिस्टेंट प्रदीप के साथ कृति मिश्रा, संसद टीवी। समय समाप्त हो रहा है, उससे पहले मैं उड़ान योजना के बारे में बात कर लेता हूं, जिसको पंख लगाने का प्रयास किया गया है। 10 साल में 120 नए उड़ान एयरपोर्ट उसका निर्माण करना तय किया गया है, और बिहार को भी एक ग्रीन एयरपोर्ट देने का वादा किया गया है। कितना बड़ा फैसला? आई थिंक ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि जब आप टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज को आपस में जोड़ते हो और उसके लिए आपके लिए ट्रांसपोर्ट इजी हो जाता है। इनफैक्ट दे आर इवन प्लानिंग फॉर हेलीपैड्स, हेलीकॉप्टर एंड एवरीथिंग ऑल्सो, नॉट जस्ट दी नॉर्मल एयरलाइन। सो इससे ऑफ कोर्स टूरिज्म सेक्टर तो बढ़ता ही है, और जो आपके
जैसे स्पिरिचुअल टूरिज्म हैज बिकम अ वेरी बिग थिंग इन इंडिया एंड आई थिंक दैट्स अ फोकस क्लियरली। उसकी भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जी जी। एंड ऑल्सो जब आप सिटीज कनेक्ट कर देते हो तो ऑब्वियसली यू कैन ऑल्सो इट्स वेरी इजी टू डू बिजनेस इन दो सिटीज, राइट? लाइक जीसीसी के लिए बोला गया है कि टीयर 2 टीयर 3 में एक नया फ्रेमवर्क लाया जाएगा। तो जब सिटीज आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, छोटी सिटीज आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, तो रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, आप सेंटर सेटअप कर सकते हो, आप बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। तो इसका बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट्स हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि 120 नए डेस्टिनेशन डेवलप किए जाएंगे आने वाले टाइम में, और आई थिंक ये जरूरी भी है जिस तरह की हमारी कंट्री है। दिस वाज रिक्वायर्ड। जी समय समाप्त हो रहा है। एक सवाल मैं पूछने वाला था होम स्टे को लेकर, उसमें मुद्रा लोन के तहत उनको लोन मिलेगा, इस तरीके की ऐसी घोषणाएं की अपेक्षा शायद मुझे लग रहा था कि किसी ने की नहीं होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एक अलग तरीका, या उसको कह सकते कि विस्तार देने का प्रयास यहाँ सरकार के द्वारा किया गया या वित्त मंत्री के द्वारा किया गया है। एक आखिरी टिप्पणी फिर विदा देंगे। इकोनॉमिक्स में एक ट्रिकल डाउन थियरी है कि राष्ट्रीय विकास हो जाएगा तो सबके पास विकास पहुंच जाएगा। मेरे ख्याल से ये जो नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं, इनोवेटिव वेज ऑफ एम्पावरिंग पीपल टू अर्न इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक गिविंग डायरेक्टली अर्निंग पावर इन द हैंड्स ऑफ पीपल एंड पर्टिकुलरली स्मॉल हाउसहोल्ड्स बाय वे ऑफ लेट अस से होम स्टे एटसेट्रा एंड enabling them to make that home stay very comfortable so that more and more people use home stay is going to make a lot of difference. I think ये जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि डेवलपमेंट स्क्यूड है, सिटीज में है, देहातों में नहीं है, इसका ये एक तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत इनोवेटिव तरीका है कि आप डेवलपमेंट के जो तौर तरीके हैं वो देहात में पहुंचा दीजिए, गांवों में पहुंचा दीजिए, टाउन्स में पहुंचा दीजिए, तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। जैसे झा जी ने कहा था कि जब तक आप सड़क नहीं बनाएंगे, जब तक आप रेल रोड नहीं बनाएंगे, जब तक आप एयरपोर्ट्स नहीं बनाएंगे, वहां पे डेवलपमेंट नहीं पहुंच सकती। और जब ये पहुंच जाएगा तो सब लोग बिजनेस करने जाएंगे, टूरिज्म पहुंचेगा वहां पे, और इतनी कैपेसिटी यदि हम लोग के पास उस एरिया में अवेलेबल नहीं है तो होम स्टे इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो इट्स डेफिनेटली एन इनोवेटिव वे। लेट अस सी हाउ वी आर एबल टू हार्नेस इट। Definitely, and you know, in this budget there has been focus on simplifying everything for the common man, for everyone. Thank you, Mr. Bhanushali and Mr. Jha for your valuable insights. Well, viewers, it's time for a short break. Stay tuned on Sansad TV. the question. Over to Honorable Finance Minister. Thank you, and good evening to all of you all. I'm happy to be here talking about today's budget. The budget actually says several things about our path towards Vikasit Bharat.
It has invested in agriculture. It has certainly looked at rural prosperity, focuses on urban development, particularly looking at urban workers, and continues to lay emphasis on reforms. 6 specified sectors have been identified, and I spoke about it in the budget. Sectors in which we will continue our reform agenda. All this, even as we have continuously been engaged with the stakeholders, how this economy is being planned to take forward a route towards Vikasit Bharat. Secretaries have joined me. All of them would also come in to explain or answer and give clarity and so on. But one thing which I certainly would like to highlight is responding to the voice of the people, which is what Prime Minister Modi is known for in his administration. It's a very responsive government. And as a result, the income tax simplification, which I announced in July, is already completed in its works, and we shall bring the bill in the next week. So the income tax simplification, about which in July budget I have gone in detail to say, the work is completed within 6 months is what I said. Within 6 months we brought the bill. It will be coming into the parliament next week. So if we are talking of reform, inclusive of taxation, the work is done. This budget also speaks about rationalization in customs. Tariffs are being brought down, tariffs are being simplified, and also the basket which consisted of so many different tariffs for so many different commodities are now reduced. 8 were taken off earlier, 8 has been taken off now. So whatever remains now, 7 I think remains, and that is all about India's tariff picture. So the usual narrative which goes on, saying is India being too heavy on tariffs? No, you find that we've drastically reduced and also simplified. So this budget has so many things for all of us to talk about. The more important thing about agriculture, which performed very well during COVID and which has contributed to India's food security, the proposals which are mentioned in this budget actually talk about everything to do with beej to bazaar, literally from the stage of seeds, hybrid seeds, climate resilient seeds, seeds which can give greater output, seeds which are going to be high yielding, all this together to the final point of India becoming the world's food basket. That's the definition I put in when I was talking about Vikasit Bharat. So we are making sure that India's agriculture gets the support across the board, whether it is on seeds, whether it is for skilling the farmers, whether it is rural prosperity, whether it is going to have agriculture and allied industries being set up in rural areas, and whether it is going to be farmers getting better and more loan with interest subvention, not just farmers, fishermen, and also dairy, meaning animal husbandry. So the picture for rural development and the picture for supporting agriculture is across the board, and that has been narrated. The second thing which I would want to highlight is the continued emphasis that we're giving since vote on account budget, July budget, and now on the MSMEs. Whether it is giving them sovereign guaranteed loan, whether it is support during COVID, whether the definition being changed now for better, more inclusive growth in MSMEs, access to bank credit. So MSMEs have also been given greater emphasis. Together with this, I'd like to highlight the point that energy security has had greater attention in this budget. We've highlighted in July budget how even pump storage will have greater attention. Solar and wind and renewable energy has also been taking consistently good importance in our budgets. This time we are talking about the small modular reactors. I've also announced that there shall be 2 amendments, one to the Atomic Energy Act and the other one for the civil liability. All of this is going to help us attain energy security. Insurance sectors, FDI,
limits have been enhanced. That is another important announcement. I'll end my opening statement with two things. There is no reduction in the public spending on capital expenditure. Let's put that up front. We continue to place emphasis on the multiplier effect that capital expenditure done by government has shown, has sustained us. We continue on that. And with all this, our fiscal prudence has aligned itself to the glide path that we announced in 2020-21. So we've kept ourselves in alignment. Fiscal prudence has been maintained. And the next year, coming years, estimate is also been given. Well under 4.5 is what we had said earlier. We are also projecting the same. So this is just as an opening statement. There's a lot more to say. But as you all ask questions, so shall we answer. Thank you. Thank you, ma'am. 225. 225. Mic, please. Ma'am, this is Shrimi Chaudhary from NDTV Profit. I just wanted to understand, ma'am, here. Ma'am, you said the new income tax bill will come next week. Will that be in the form of draft, and where you are also going to take stakeholder comments on that? Yes, as a bill, any bill goes to the standing committee, and the standing committee will, of course, consult with so many stakeholders. And then it will come back to us, and if necessary, any more amendments, if need to be brought in, we'll bring it in and take it forward in the House. So do we expect implementation in this, in the fiscal year, in FY26? Do you expect what? Do we expect the implementation of... Well, let it get passed. I hope it will get passed without much of a difficulty, but it is only after its passing. Sure, thank you. 35. Front. Ma'am, Timsi Jaipuria, this side from CNBC TV 18. As you said, this is a very responsive government, which is why government decided to give these tax rebates. But given the structure that you have announced, ma'am, up to 12 lakh is the rebate. Any reason why this rebate has been hiked from 7 to 12 lakh? Is it that the incomes or salaries were not growing up to the mark, which is why government thought that this rebate needs to be given? And also, how do you make up for this 1 lakh crore of revenue loss? Will it not impact the budget estimates? Where will you get this money from? Well, Tipsy, I think the first question is, you said that this, when the incomes are not growing. This is an income tax. Only when there is an income, then we are talking of the tax. So income has to grow to the level to discuss about the tax. Now, why from 7 to 12 lakh? It is something like, it was earlier 2.2 lakhs. When 2014, it became 2.5 lakh, nobody is going to pay tax. Then there was a 2019 that, we said 5 lakhs, nobody is going to pay tax. Then we said it was raised to 7 lakhs. And now it's being raised to 12 lakhs. So this is a perception that the government feels that, on the average 1 lakh per month, if you have, then you need not pay tax, which means that, we are doing it in two ways. One is we are reducing the slab rates. We are expanding the slabs. If you would have noticed, the slabs are now 0 to 4, 4 to the uniform slabs, and there is a gradualism. There was a thing when we had earlier 20%, then it was jumping to 30%. Now it is 20, we have introduced 25 also. So it's the gradual thing which has been done. Now this benefits every one of the taxpayers, because whatever benefits which has come from the slabs gets transmitted across. So therefore everyone gets a benefit. Now the second part, FM decided that, well, some people should get a little more benefit than merely slab rate reduction could have given. And so therefore an extra rebate. So slab rate reduction for everyone, and extra rebate for 7 lakhs were already getting it, now 7 to 5 lakhs more people have been added. So this is the philosophy behind it. And as you said, why you do it, I think
We expect that all that money which they gave and comes back to the economy in either consumption, savings or investments, in whatever way they choose to do. I just want to add to that. If you compare what we've done today with what prevailed in 2014 under the Congress government, what we are, most often the narrative is we should put money back in the hands of the people. I want to please give this comparison for your consideration. If you compare it with the 2014 tax rates under the Congress, for somebody who's earning 8 lakhs, nearly 1 lakh more money is in their pockets today because of the amendments that we brought in. Meaning, 1 lakh income tax in 2014 is 0 income tax now. So that money is going back to the people in their hands for those who are earning 8 lakhs. For those earning 12 lakhs, 2 lakh was the income tax in 2014 versus today 0 which is proposed. Meaning nearly 2 lakh more money in the pockets of people who are earning 12 lakh. All right, did I stop it there? As Finance Secretary rightly said, across the board everybody is getting benefit because the rates have also been brought down. Not just the rebates being given to up to 12 lakhs. Rates for everybody is being brought down. As a result, lakhs in a piece more in the pocket of people who are earning 24 lakh. So it is not just those who are up to 12 lakh because they are not paying any tax at all, because rebate is given to make up for the tax amount which they have to pay. It is not just up to 12 lakh. Even for others, benefit is accruing, and compared to what it was in 14, that much amount of money is going back to those respective money earners. Just compare it with 24 tax rates, which is prevailing now, and what is being proposed. I would like to draw the comparison. 8 lakh people, meaning those who are earning 8 lakhs. 30,000 rupees more is being put back into their pockets, meaning they would be paying 30,000 in the prevailing tax, 8 lakh salaried wale. Now they pay 0 in the new proposal. Similarly, 12 lakh salary or income wale would have 80,000 rupees tax to pay in the current prevailing taxation rates. They would have 80,000 rupees now go back to their pockets. They don't have to pay that tax. Go to the 24 lakh and compare with the present rates. Present prevailing rate, they have to pay 4.1 lakh rupees as tax. We are saying now they will have 1.10 lakh in their pockets, which they don't have to pay as tax. So we have put good substantial amounts into the pockets of people who deserve to get that. And I would want that to be highlighted compared to what prevailed in 14 and what prevails just this year. 3. 3 number. Ma'am, many congratulations. Something that was being quoted to you as well as the Prime Minister and yesterday the Chief Economic Advisor hinted, in terms of disinvestment and where you should not get into, government. You yourself have been talking from 2020, 21 and subsequently, government should be in less spaces. Has it been a strategy? Because I know you're committed to it, but last budget you didn't refer to it. This budget you have not referred to it. The target still remains there. Is there any impetus that you're going to do towards what has already been announced by the budget? For example, bank privatization of banks and others. That's one. And the second because that was unanswered, you're making it simpler, the income tax, and bringing a thing. Does this mean that you can now not necessarily all the time you can do it through a schedule or an executive order if you want to give some relief to a common man in the new income tax bill that you bring in? No, giving relief any time will have to go to the Parliament, because if we are giving fiscal relief to people, it has to have approval from the Parliament. So but what the tax simplification really means is the complication in the language, the circuitous way in which they were explaining things, and adding too many exemptions. You will realize that when we brought in the new tax regime,
We didn't want the old tax regime imitated or copied. In that, there are several exemptions given in the old regime. In the new, we didn't want to give any because we wanted a simple, straightforward tax regime in which the rates can be brought down. That's what we've done even now. So the act itself had to be simplified. The attempt now is that. Okay. And on the disinvestment and... No, all that will continue. There won't be a relenting on any of this. On disinvestment, if I can add, you see, the last time, July, also the similar questions were asked. We have actually since then, a value creation strategy, which was actually well explained at that time also. There is no disinvestment target per se. Disinvestment and dividend are both looked at together because both are money and money is fungible. And it has got 5 elements. The first element is that we are saying CPSC's performance. The second is we say that we should have communication of performance. The third we say that the capex of the CPSC, which is important, as you know, in terms of accelerating growth. The fourth is the consistent dividend policy. And the fifth is there is a calibrated disinvestment strategy. And the disinvestment also is there. The listing is a part of disinvestment itself. So if you really look at it, both dividend and disinvestment is about 80 to 90,000 crore per annum are being raised, but in a manner which are beneficial to the minority shareholders who are there in all our listed companies. 65, backside. Good afternoon, ma'am. This is Ruchi Bhatia from Bloomberg News. I have a question for the Revenue Secretary and a question for you. If the Revenue Secretary can give us details on the benefits, the number of people who will benefit from the slab, from the rebates going up from 7 lakhs to 12 lakhs. And the question for you, Madam Finance Minister, a lot of people say that while the absolute number for CAPEX has gone up, the pace of spending has gone down as compared to a few years ago. Is it telling of the institutional capacity in terms of how much CAPEX push can the government really do? And secondly, as far as a lot of analysts do say that the multiplier that CAPEX has is a lot more than the multiplier in the economy than that tax cuts have. What would you say to some of those concerns as well? Well, 1 crore people will not benefit between the 7 lakh and 12 lakhs. Meaning 1 crore more people will pay no tax. On the CAPEX, I think there are 2 things playing out. One, of course, this particular year has had the elections happening, and because of that, both central government and state governments were catching up with investments, public spending on investments only from the 2nd and the 3rd quarter, so it showed. It's equally true that when fundamental requirements are taken care of, when you're bringing in additional overhead, there is a pace at which those additions happen. So it's not as if there is no thirst for capital expenditure, but now it will be at a pace in which you can build on each one of the developments that you've done prior. So it will continue. There are some departments which will need more. There are others who would probably reach a plateau, but expenditure will have to continue even in them. So the heads where the capital expenditure will happen will vary, but expenditure will happen in building assets. 121. No, CAPEX is also continuing. I have not foregone CAPEX to give for revenue expenditure or consumption expenditure. So both continue. Ajay. Look at what the overall numbers are. Even in the coming year, the next year, effective capital expenditure, including what Government of India provides to state for their capital expenditure, is 4.3% of the GDP, one of the highest. So it's not just what Government of India departments spend, it is the total money which goes for the capital expenditure. And if you look at that compared with this year's RE, there will be 20% increase. If you look B to B, still there will be a 10% increase. And it is not a capacity issue, it is a new sectors coming up. For example, if you notice, urban sector
the allocations are increasing. That's one area which requires a renewed focus. 121. On the capex, because this point can come up later also. So one is the capex that we give directly, that is we do as central government directly. Other is that grants that we give to the state governments, for the state governments to do capex. For example, for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, for example, Pradhan Mantri Awas Yojana, and so on and so forth. So if you also include the grants in aid for creation of capital assets, the amount, total amount has gone up to 15.48 crores in the budget estimate for the next year, which is more than 15% increase over the current year's RE. So that is a substantial increase, whereas you consider that the overall expenditure, that is revenue plus capital, has grown by around 7% in the next financial year as compared to this year's RE. So this is almost twice the aggregate growth in the expenditure. Yes. I would like to also add that on top of this 15 lakh crore capex, which is 11.2 there, and the extra money which goes into revenue but goes in capital building at the hand of the states, the CPSC, the Central Public Sector Enterprises, add about 4 lakh crore as capex from their own resources. So that's also the capex which goes in, and that is not counted here. Yeah. Mike on. तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। मैम मेरे दो सवाल हैं। एक, मैम आपने इंश्योरेंस की जो एफडीआई लिमिट है वो 74 से 100% करी है, तो क्या मैम जो इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल था उसकी जो बाकी रिकमेंडेशन है उसको रिजेक्ट किया गया है, सिर्फ इसी को एक्सेप्ट किया है 74 से 100% का? दूसरा मैम, मूडीज ने कहा है कि जो पब्लिक डेट है स्टेट और सेंट्रल का वो अभी भी 80% है, इस वजह से हम रेटिंग अपग्रेड इस बजट के अनाउंसमेंट के हिसाब से नहीं कर सकते। तो डू यू थिंक इज देयर कंसर्न फॉर द ऑन द public debt? Insurance? Yeah. See, now, presently the insurance is 74%. Now, fundamentally, whether it's 74% or 100%, the materially doesn't matter. But what actually matters is the psychological feeling that they can actually own the company 100%. Along with this FDI, we are also going to, FM also announced that we are going to simplify certain procedures and rules that we frame, which is including the key management personnel, person who can be chairman of the company, and person who can be the CEO and board of directors, and also repatriation of dividends. All those are part of this, the proposed reforms that has been announced by the FM today. And sir, what about the other recommendation on the draft insurance amendment bill, sir? That's what we are actually bringing. The draft insurance bill is the one FM has announced, but the main point she has mentioned that 100% FDI, including simplification of existing rules for FDI investing. The draft bill is also coming. Is coming. Yes, and then public debt, ma'am. On the public. Serial number 2. Finance Minister has also announced, just answer complete his question, the roadmap for fiscal consolidation by the center, and please have a look at the FRBM statement which carries the different scenarios, and over a period of next 6 years how that will be brought down. Similar one act has to be done through the state governments as well. So it is a process which is on. Number 2. हेलो, नमस्कार मैम, मैं आलोक प्रियदर्शी हूँ CNBC आवाज से। मैम मेरा सवाल है कि मिडिल क्लास के लिए काफ़ी बड़ी राहत है, 12 लाख तक जो टैक्स छूट दी गई है। इसमें आपने बजट स्पीच में कहा जो कैपिटल गेन से लोग कमाई करेंगे उसको इसमें शामिल नहीं किया गया, उस पर नॉर्मली टैक्स देना पड़ेगा जो स्लैब के रेट से है। तो ज़्यादातर लोग आजकल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, उनको कैपिटल गेन्स होते हैं कई तरह से, उनको बाहर रखने का, उनको केप्ट असाइड रखने का क्या रीज़न है, क्या उसके पीछे वजह बताएं? रेवेन्यू सेक्रेटरी उसके ऊपर ज्यादा विस्तार से बोलेंगे। बाहर रखने वाले चीज नहीं है, इनकम का कैलकुलेशन कभी भी वैसे ही होता है, उसमें कैपिटल गेन्स का जोड़ते नहीं है। मैं स्पष्टता के लिए उसको जोड़ रखा है उधर सेंटेंस पढ़ने के समय। ये नया मेरा पद्धति नहीं है कि इसको अलग रखो उसको अलग। इनकम कैलकुलेशन इन जनरल इज डन विदाउट द कैपिटल गेन्स। यू वांट टू एक्सप्लेन इट प्लीज?
Namaskar. I, Rajiv Kumar Singh, along with my colleague Archana Mishra, welcome you all to our continuing coverage on Budget 2025-26. You were listening to the Finance Minister. She's doing a press conference after the budget. In this segment, we are going to focus on sectors such as taxation, banking, infrastructure, and also talk about the highlights of other related sectors. We have an expert panel to make you better understand the proposals made by the Finance Minister Nirmala Sitharaman. We have B.N. Mishra ji. He is a senior in Indian Banking Association, and to his right is Rajat Bose. He represents Shardul Amarchand Mangaldas and Company, firm related to taxation, law, and other things dealing with the budget today. We hope to be joined by Ashutosh Dikshit. He's a partner in Deloitte, India. Both you gentlemen, the Finance Minister, you just listened to the Finance Minister. Let me begin with you, Mr. Bose. And as you are aware, today's highlight has been the tax rebate up to 12 lakh that the Finance Minister has announced in the budget. And then there were slabs. 4 lakh, up to 4 lakh nil, and then continuing from downwards there. In a common man parlance, can you explain that thing up to what income does one not need to pay any tax, and from where, and how does that slab fit in all those things? Okay. So from simply put, from a common man's perspective, if your income is up to 12 lakhs, you do not pay any tax. And that exemption from taxation is by way of a rebate. If your income exceeds 12 lakhs, then the slabs which have been prescribed, they will come into the picture. So let's say if you are earning 20 lakhs, it does not mean that till 12 lakhs you get an exemption and you only pay tax on 8 lakhs. That is not how it will work. Okay. If you earn 20 lakhs, the slabs which have been proposed, 4 lakhs, then 4 to 8 lakhs, then 8 to 10 lakhs, 12 lakhs, and so on and so forth, that will apply. However, if your income is 12 or less, then you get a benefit of almost zero income tax. Okay, so there is a clause about the salaried class and the others. Other income meaning if your income is other than the salary, say you are investing into the capital market, then of course that income would be taxable. There is a special rate which is for capital gains that will apply, continue to apply. However, when you say salary, it is not restricted to salary. It also includes salaries and business profits up to 12 lakh rupees. But if you have any kind of capital gains by sale of shares, property, so that will be taxed in a special rate. Okay. सर बी.एन. मिश्रा सर, आपसे मेरा सवाल है कि सरकार विकसित भारत का एक बजट जो लेकर के आई है 2025 के लिए, 2025-26 का, इसमें एफडीआई को लेकर के बात करें, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर भी बहुत ज्यादा जोर बताया गया है। तो एफडीआई 74% से 100%, ये बीमा क्षेत्र में खासकर, ये किस तरह से आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं, किस सेक्टर में स्पेशली, और खास करके आम आदमी से जोड़ करके कैसे देखें इसे? देखिए, ये बीमा क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकता ये है कि 2047 तक वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इंश्योरेंस फॉर ऑल। लेकिन इस समय जो आंकड़े हमारे पास है, हमें बीमा क्षेत्र में काफ़ी वी हैव टू गो ए लॉन्ग वे इन द सेंस, हमारे जो व्हाट यू कॉल द पेनिट्रेशन रेशियो जो है इस समय हमारे लगभग 4% के आसपास है, जो कि विकसित देशों में ये ग्लोबल एवरेज 7% है। और हमारे पूरे हिंदुस्तान में देखा जाएगा तो लगभग 15% लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस है, और उसमें भी जेंडर इनइक्वालिटी है, रूरल और अर्बन मिसमैच है। तो बीमा क्षेत्र में बहुत कुछ काम हो रहा है। प्रधानमंत्री आपका जो बीमा योजना है उसमें काफ़ी लोगों को बेनिफिट हुआ है, लेकिन फिर भी हमें एक लंबा रास्ता तय करना है। इसलिए अगर ये फॉरेन सेक्टर एफडीआई लिमिट जो बढ़ाया गया है,
इससे we will get capital and there will be investment on what you call the in the technology and उसमें तो कंडीशन भी डाला गया है कि ये जितने भी प्रीमियम इसमें रेज किया जाएगा ये सारे पैसे हिंदुस्तान में ही उसको लगाया जाएगा। तो मैं सोचता हूँ ये बहुत सही कदम है और फाइनेंशियल इंक्लूजन की हम बात हमेशा करते हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन में बैंकिंग क्षेत्र में बहुत काम हो गया पीएनबी जनधन के तहत। आज जनधन के तहत आपके 54 करोड़ खाता खुल गए हैं, उसमें भी लगभग 50% लोग महिलाओं के खाता खुले हैं और आज वहाँ लगभग 2.4 ट्रिलियन रुपीस पैसे जमा हुआ है और ये बहुत अच्छा कदम है, मतलब ऐतिहासिक कदम लिया गया सरकार की तरफ से और बैंकों ने बहुत अच्छा काम किया इसके बारे में। तो लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन तभी कंप्लीट होगा जब इंश्योरेंस बीमा भी सभी लोगों के पास एक बीमा हो, एक जीवन बीमा हो, एक साधारण बीमा हो, एक स्वास्थ्य बीमा हो। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं हेल्थ सेक्टर बीमारी इसमें इलाज कराने में, तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़े क्रांतिकारी कदम है और इससे बीमा क्षेत्र को बहुत बल मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारे बीमा कंपनियां बीमा कर्मी पहुंच पाएंगे और ज़्यादा से लोग इससे लाभ उठा पाएंगे। बिल्कुल सर, आपने बैंकिंग सेक्टर की बात की है, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 से 5 लाख बढ़ाया गया और ये मछुआ डेयरी और मछली पालन इसके लिए भी 5 लाख तक का लोन ले सकेंगे। तो इस तरह के जो छोटे छोटे व्यापार करने के लिए लोन की व्यवस्था है, इसमें बैंकिंग सेक्टर कितना ज्यादा डिजिटलाइज होने के बाद लोगों के लिए सहूलियत भरा हुआ है और क्या प्रोसेस है, कैसे लोगों को इसके आम आदमी के लिए खास करके आसान हुआ है बैंकिंग सेक्टर पहले से? देखिए अभी भी हिंदुस्तान में 65% लोग गांव में रहते हैं और ये किसान क्रेडिट स्कीम इट इज वेरी इफेक्टिव एंड पॉपुलर स्कीम और इस ग्रामीण इलाके में जो हमारे 6,38,000 लगभग गांव है हिंदुस्तान में, इनके लिए ये केसीसी जो 5 लाख से बढ़ा के 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया जो बेनिफिट लेने के लिए। ये लिमिट तो किसका लिमिट ज़्यादा भी हो सकता है, बट जो बेनिफिट है सबवेंशन का वो 5 लाख तक रहेगा, उससे कुछ उनको इंटरेस्ट में छूट मिलता है। तो इससे लगभग 7.7 करोड़ फार्मर्स, फिशरमैन और डेयरी लोग बेनिफिट होंगे। इनको जो कॉस्ट रहेगा उनका फंड्स का लगभग 4% के आसपास रहेगा, क्योंकि इसमें 3% का बेनिफिट मिलेगा और तो 4% में किसी को फंड्स आज की तारीख में मिलना मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है और उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। दूसरा आप देखेंगे कि ये पोस्ट पेमेंट बैंक्स में जो माननीय वित्त मंत्री ने जो घोषणा की है उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल मैं उसी सवाल पे आ रही थी। 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों की जो है सूरत बदल जाएगी, तो इस बजट के आने के बाद हम क्या तस्वीर देखते हैं उन डाकघरों की, खासकर ग्रामीण डाकघरों की? मैं अगेन आई विल रिपीट द थिंग दैट we are a primarily still we are a rural village country in this sense। 6,38,000 हमारे गांव हैं। 1951 में जो सेंसस हुआ था उस वक्त हमारे केवल 17% लोग शहरों में रहते थे और 70 साल लगभग लग गए, अब हम 65% गांव में लोग रह गए हैं और वो 17 वाला जो है 35 हुआ है अर्बन एरिया में। तो आगे चल के मतलब इट हैज़ टेकन 70 ईयर्स, 70 साल लग गए 17% को शिफ्ट करने में। तो अभी हमने लक्ष्य तो रखा है कि 2050 तक अगले 25 साल में 50% लोग गांव में रहेंगे, 50% लोग अर्बन रहेंगे। अच्छी बातें हो जाए तो, लेकिन क्योंकि ये 70 साल लग गए हैं 17% के लिए, 15% के लिए लगभग 40 से 50 साल और लगेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग गांव में रहेंगे और गांव में रहना भी चाहिए, क्योंकि हमारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अच्छा है कि अभी बजट में इसका भी प्रावधान है ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए। तो ये पोस्टल पेमेंट बैंक, अब देखिए क्योंकि गाँव में शेड्यूल कमर्शियल बैंक जिसको कहते हैं हम, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक और ग्रामीण बैंक, इनकी संख्या लगभग 50 से 52 हजार है। गांव है 6,38,000, 65% लोग, बाकी 1 लाख से अधिक शाखा है अर्धशहरी क्षेत्र में और शहरों में। तो ये अगर 1,36,000 ये पोस्ट ऑफिस से जुड़ जाएंगे तो ये बहुत बड़ी एक रिवोल्यूशन काइंड ऑफ, इट विल बी गेम चेंजर। व्हाई आई एम टेलिंग इज दैट गांव में अभी भी जो शिक्षक है, पोस्टमैन है और बैंक का मैनेजर है, दे कमांड लॉट ऑफ रेस्पेक्ट। उनको लोग सारे उनके सुख दुख में उनको भागीदारी बनाते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं। मिस्टर बोस, the finance minister today talked about 4 engines of growth, and one was investment. And yes, since you deal with law firm, and
litigation matters are very complex when it comes to investment climate. So how do you see this budget going forward on creating an atmosphere for more and more investment in the country? Indeed, that's a very, very good question which you've asked. Now, there was an expectation prior to the budget that the government will introduce something called an amnesty scheme under the customs regulation. They have done so previously under GST as well as under the erstwhile service tax and excise regimes. But so far under customs, there have never been an amnesty scheme whereby you can make some payment and then, you know, settle your historic litigations. So the expectation was there. Unfortunately, there was no announcement to that effect in this budget. However, there are certain very critical announcements which have been made, which would definitely move the country forward towards having a more settled tax regime. One such announcement was that now they have fixed a time limit for finalization of provisional assessments, which was a big pain point for corporates. They used to at times, import goods into India, and because there was some doubt over the tax rate or the tax value or the exemptions, those assessments remained provisional year after year. There was no provision under the law which said that the officer has to finalize those assessments within a specific period of time. So that I would really commend the government to have propose that there would be a time limit of 2 years, which can be extended by a further period of 1 year, within which the officers have to finalize provisional assessments, which is a very good move. The second thing is at times when there is some misdeclaration on your documents at the time of import, there was a provision whereby you could amend the documents. However, that was a very tedious task. So now a specific provision has been is proposed to be introduced, where in case of some genuine doubts or mistakes, you can amend those documents and you can pay, if there is any customs duty payable after amendment, you can pay that with interest, and after that there would be no further proceedings against you. So again, a move which would instill confidence in investors to come and do business in India. The custom duties on leather and many other such products have been slashed in that terms. Yes. Well, that is, I think now we can expect a PLI-like scheme in the leather industry as well as in the toys industry, because I think that is one of the focus sectors. We saw the proposals which have been made. Sorry to interrupt. What would be the toy industry in, say, China? I mean, because we are all aware that Chinese toys are, world-renowned in that sense. And the finance minister specifically mentioned about not only investment in the toy industry, but also of a sustainable thing. And besides, the focus was completely on made in India. Yes. So what do you think in the future is going to happen in the toy industry? Yes. Again, looking at the future, the government has made some proposals in this budget for reducing customs duty on a lot of raw material components, inputs required to manufacture toys, especially electronic toys. I think this is aimed at China to restrict or curb import of Chinese toys into India and make India a hub for manufacture of toys which can then be exported across the world. So from that perspective, I believe that we might shortly hear an announcement of a PLI scheme for the toy manufacturing sector as well. Okay. Mr. Mishra, most of the businesses are pretty small, needing very small finances like 8 to 10 lakh rupees, and then other. We know that the Modi government has been focusing on that there have been schemes that attract such section of society which needs small finances to do a business. How does budget 2025-26 take us forward on those tracks? Well, if you observe closely, our PM Swanidhi, the earlier the limit was 10,000 rupees. So now it has been increased, enhanced to 30,000 limit, and they get a UPI linked credit cards.
the street vendors and all, they are, nobody is going to lend them. In case somebody is going to lend them, they will lend them at a very high rate of interest, the usurious rate of interest. So this has been a very success, it has been very successful so far. Second is the, another this Gramin credit score thing that has been announced. We have roughly 90 lakhs SSGs in the country. Self-help groups. Self-help groups. And you can say in every village you have 14 SSG, you can, like 6 lakhs 40,000 villages. So every village has around 14. There was some announcement regarding the SC, ST women, that is 5 lakh I'm coming to entrepreneurs. I'm coming to that. So they will be eligible for a 2 crores first time entrepreneurs. They get 2 crores loan, term loan, women, scheduled caste and scheduled tribe. Why I'm particular about this small help groups. SSG groups, because the day LRM, the scheme has been very successful, and in this 90 lakhs self-help group, they are, they cover around 10 crores, mostly women. So if they don't have any credit history, so when they go approach the bank or any financial institute, they are little at a receiving end, because they don't have any rating and all. So for the first timer, those who don't have any credit history, now we have this Gramin credit score. The details will be worked out subsequently. So this will be, quite a game changer again. 90 lakhs small self-help group, 10 crores women, and maybe a couple of crores men also, if you add to them. So if all of them are uplifted by giving bringing to formal credit system, so that is good. That will go a long way in improving their socio-economic and socio-economic setup. सर, मेरा सवाल आपसे है कि भारत एक धार्मिक देश माना जाता है, ज़्यादातर लोग धर्म की तरफ ज़्यादा उनका रुख रहता है, तो आत्मनिर्भरता को लेकर के और परिवर्तनकारी एक नीति देखी गई है। बजट में भी जो चीज देखने को मिली है कि जैसे करीब 50 पर्यटन स्थलों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर के उनको विकास करने की बात हुई है, उसमें वहां की एकोमोडेशन को लेकर के भी, तो इसको कैसे देखते हैं, खास करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने को लेकर और खासकर इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर कैसे देखते हैं आप? देखिए, टूरिज्म का तो हिंदुस्तान में अब हर 100 किलोमीटर में आपको कुछ ना कुछ टूरिज्म का मिलेगा आपको। कुछ तो हमने उसको डिस्कवर किए हैं, कुछ डिस्कवर हो रहे हैं, कुछ दे आर स्टिल नॉट टैप्ड नाउ। इसमें जो हमने वो जो व्हाट यू कॉल दैट समबडी रेंट्स हिज लेट्स हिज हाउस, होम स्टे जो कहते हैं ना, होम स्टे को इस बजट में उसको MSME उसमें करार दिया गया है। इफ होम स्टे के लिए ऑल्सो यू गेट ए लोन। पहले ये सिस्टम नहीं था, सो दे हैव टू डू सम एडजस्टमेंट। रिटेल के लिए लोन लेंगे, मकान के लिए लोन लेंगे, एंड दे विल डू दिस थिंग। तो होम स्टे को उससे बढ़ावा मिलेगा, उसमें टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। टूरिज्म के बहुत स्कोप है, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न में, जो अभी ईस्टर्न साइड में, तो उसमें ये सरकार का फर्स्ट टाइम 50 जो इसमें सेंटर चुना गया है पर्यटन स्थल को। तो लेट अस नॉट टॉक अबाउट रिलीजन, मतलब टूरिज्म पर से विल सर्टनली गेट ए बूस्ट। मिस्टर रजत, आपसे मेरा सवाल है कि स्टार्टअप को लेकर के इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए करीब 10,000 करोड़ फंड्स ऑफ फंड स्कीम की घोषणा की गई है, कैसे समझे इसको और क्या फायदा मिलेगा एक आम आदमी को इससे? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए, हमारा देश अब ऐसा देश है जहां पे आइडियाज की कोई कमी नहीं है। तो स्टार्टअप्स अगर आप बात करें तो हर कोने में आजकल स्टार्टअप्स आ रही हैं, नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए सर्विसेज लेके आ रहे हैं। तो ये जो सरकार का एफर्ट है कि उन्होंने ये इतना बड़ा सम एक उन्होंने साइट किया है स्टार्टअप्स के लिए, आई थिंक एक काबिल तारीफ मूव है। हाउएवर अगर मतलब हम बात करें कि उनको और क्या कर सकते हैं स्टार्टअप्स के लिए, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं R&D पे कुछ हमें इन्वेस्टमेंट और करनी चाहिए, और सरकार को R&D प्रमोट करने के लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट उसकी तरफ रखना चाहिए, और थोड़ा कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी स्टार्टअप्स को मिलना चाहिए। ऑल्दो अभी उन्होंने जैसे MSME का लिमिट भी बढ़ा दिया है, अब 500 करोड़ टर्नओवर की कंपनी भी अब मीडियम एंटरप्राइज के अंदर क्वालिफाई करेगा, सो विच इज गुड। लेकिन मेरे ख्याल से टैक्स पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा उनको हमें सहूलियत देनी चाहिए। बिल्कुल। Mr. Bose, we were talking about
before beginning this program, we talked about the domestic manufacturing base that India needs to create to cater to a population. If we really are targeting the Viksit Bharat by 2047, and how we need to take the 2,500 dollar per capita to 12,000 to be really a Viksit Bharat. So what do you see in this budget that proposes that we are really working on the manufacturing industry to grow, like to be competitive with China and on the one hand and the US in foreseeable future? I think this budget is one of the most impactful budgets in the last 7-8 years, and in fact we see a very clear roadmap towards at least attempting to achieve the Viksit Bharat goal by 2047. Now, why I say that is that there are many proposals in this budget which sort of bolster the manufacturing activities or try to push the manufacturing activities in India. One, if you look at the scheme of the concessions and exemptions in customs duty, they have clearly reduced customs duties on a lot of inputs, raw materials, components, so that these are imported into India and used in manufacture of products which can then be exported out of India, as well as used within the country as well. Now, what happens is that when you sort of propose these kind of moves, it will encourage companies to set up manufacturing entities in India. For example, let's talk about lithium-ion batteries. Now, they have reduced customs duty on inputs, etc., for lithium-ion batteries. One very important change which they have proposed is reduction of customs duty on batteries of mobile phones. So now what will happen is that companies which are large corporations, they will be encouraged to set up manufacturing units of lithium-ion batteries in India, manufacturing units of mobile phone batteries in India, which will in turn create jobs. It will create that that money in the hands of the people, so that they can sort of increase the consumption. And that is how I think the government wants to achieve the goal of Viksit Bharat 2047, which in my mind is the right way to go about it if it has to be sustainable, rather than just simply cutting duty rates on fine finished products. And to add to what our friend Bose has submitted, see, the MSME sector is getting increasingly associated with the government's agenda to bring about some kind of transformation there. In as much as we have more than 1 crore MSME units, registered MSME units, it has huge employment potentials, and they account for 45% of our exports. So the revised norms that have been announced today, it will bring more and more units to the MSME platform, and they will get the MSME whatever benefits are being extended. The investment limits have been enhanced. From micro, it is from now it is 1 crore to 2.5 crores, and the turnover becomes 5 to 10. Then for small, it is the investment limit is 10 to 25, and the turnover is 50 to 100, and medium 50 to 125 investment limit, and turnover is 250 to 500. So more units will get associated with this, and they will get the benefit. Okay. We are also joined by Ashutosh Dikshit. He is a partner in Deloitte India. Welcome to the show, sir. And your first take on budget 2025-26, is it leading towards Viksit Bharat? Thank you for having me on the show. Yes, with a resounding yes, it is definitely a path-breaking budget for us to go towards Viksit Bharat. Shall I add something on the budget, or would you like to ask me a specific question? You can. We are not able to see you, sir. Presently, we will be coming back to you, and we need to sort that line up first. And Mr. Bose, as we were talking about this thing, and you also specialize on GST. GST, ever since it was implemented, there has been a lot of changes regarding the slabs. And so do you see more clarity coming on GST with this budget? And how do, because it's now a uniform tax everywhere in India, and we basically end up paying on everything that we use. So everyone pays a tax in a way on everything. No, absolutely right.
See, GST changes are within the domain of the GST Council. However, during budget sessions, there are changes which can be done in GST, but not so much on the rates. Now, how I look at it is that there was at least 2 announcements which were expected this time, which did not happen. One was the roadmap for rate rationalization. Reduce the number of GST rates slabs from 4 to maybe 3. I mean, nobody was expecting the FM to announce that it will be done, but at least some statement that you are working towards it, or the interministerial group is working towards it, would have been good for the general sentiment of the industry. That is number one. Number two, I think one of the major issues which today plague the GST system in India is that fuel is not within the GST ambit, which increases the cost of flying products, right? Because if your transportation cost, or if your other cost for running your factories increase, so obviously your finished product prices will also go up. Now, if fuel can be somehow brought within the GST ambit, that I would really feel that that is going to be a path-breaking reform. But one more thing on GST I would like to add, and as Sir was also mentioning, that how important insurance is in our economy, in our country, which is largely a rural based economy, where everybody needs to have health insurance or health coverage. I think the GST rate on health insurance has to be reduced. There is no question about it. This decision has been pending for the last 2 to 3 months. In the last GST Council meeting, some discussions happened. However, because I think there was some more homework or number crunching required, the decision was deferred. The industry was expecting maybe by this budget that exercise has been completed, but there is no announcement to that effect. But there is always a wish list when it comes to budget, and there would always be a wish list, and some of them are fulfilled, some don't get fulfilled. आप दोनों गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आपको आज की एक खास तस्वीर दिखाते हैं। जब आम बजट पेश हो जाने के बाद लोकसभा में उपस्थित मंत्रियों और सांसदों ने बजट के लिए वित्त मंत्री का अभिवादन किया। लगातार 8वां बजट पेश करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वित्त मंत्री की सीट तक चलकर आए और बजट के लिए उनका अभिवादन किया। बजट के बाद की ये तस्वीरें काफी कुछ कहती हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैबिनेट के तमाम अन्य सदस्य, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के पास गए हैं और उन्होंने अभिवादन किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का। बिल्कुल राजीव, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अभिवादन उसी तरह से स्वीकार किया और कहीं ना कहीं ये खुले दिल से बजट को स्वीकार करने की बात है कि सरकार के साथ जो विकसित भारत के संकल्प के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, उसका ये बजट जो 2025-26 के लिए वित्त मंत्री ने पेश किया है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक खासकर मध्य वर्ग में आज एक उल्लास का माहौल है। और हम सब जानते हैं इनकम टैक्स में छूट दी गई है 12 लाख तक के। आप इन तस्वीरों को देख करके इससे क्या कुछ इससे आपको नहीं, जैसा मैंने कहा, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा बजट है। it is towards the goal of achieving being a developed nation by 2047, definitely. And in many years, such budget has come which actually focuses on the middle class and the lower middle income group. So really commendable job done by the government. Mishra ji, आपकी तरफ से FM started with our focus on the 4 crucial sectors, agriculture, investment, MSME, and export. Yes. So they are all these are sectors. They are the what you call the engines of any economy. And once you are trying to become Vikasit Bharat in the next 25 to 23 years or so. So I mean, we have no there is no shortcut. All these sectors we have to focus and try to bring about any the kind of transformation that is required.
हमारे साथ गेस्ट जूम पर जुड़े हुए हैं आशुतोष जी। आशुतोष जी, आपसे कमेंट चाहेंगे बजट को लेकर के, क्या कहेंगे बजट 2025-26 के लिए? ये बहुत वेलकम बजट है विकसित भारत के लिए। और आपने इकोनॉमिक सर्वे में देखा ही होगा कि एक जो चिंता का विषय था कि भारत में पिछले कुछ साल में रियल वेजेस की ग्रोथ थोड़ी कम हो रही थी, जिसके कारण कंजम्पशन पे इम्पैक्ट था। तो वित्त मंत्री ने टैक्स जो रिलीफ दिया है मिडिल क्लास के लिए, दैट इज अ वेरी वेलकम साइन, बिकॉज दिस इज इससे कंजम्पशन देश में बढ़ेगा। और इसमें उन्होंने रिबेट्स दिए हैं जिससे कि 12 लाख तक की आय जिसकी भी है उसको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। उससे ऊपर की आय वालों को भी छूट मिली हुई है क्योंकि स्लैब्स उन्होंने एक्सपैंड किए हैं। सो दिस इज वेरी वेलकम फॉर द कंजम्पशन लेड इकोनॉमी। और इसके सिवाय कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने अपना बनाए रखा है, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए भी बोथ बिजनेस पॉलिसी, रेगुलेटरी पॉलिसी और टैक्स इंसेंटिव्स की भी बात हुई है। सो ऑल इन ऑल वेरी वेलकम बजट, एंड दिस हैज ऑल बीन डन व्हाइल कीपिंग द पाथ ऑफ फिस्कल प्रूडेंस, क्योंकि जो फिस्कल डेफिसिट का अनाउंस किया था पहले वित्त मंत्री ने कि 4.5% से कम लेकर आएंगे 2025-26 में, तो वो उन्होंने 4.4% पर फिस्कल डेफिसिट 4.4% ऑफ जीडी पर उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। सो अ वेरी वेलकम बजट। तो बजट पर हमारी विशेष कवरेज जारी है। आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सहयोगी राजीव आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये कवरेज जारी है, आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। क्या कहेंगे सर? जी, तो जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत स्वागत योग्य ये बजट है। एक तो उन्होंने इस बजट के थ्रू करीब 1 लाख करोड़ एडिशनल कंजम्पशन दिया है जनता, क्योंकि टैक्स रिलीफ्स, पर्सनल टैक्स रिलीफ्स के थ्रू रिबेट और जो टैक्स स्लैब्स हैं उनको जो एक्सपैंड किया है, उससे काफी लोगों को राहत भी मिलेगी। और ये जो बचत होगी ये कंजम्पशन में जाएगी इकोनॉमी के। दूसरा, जो उन्होंने बजट के थ्रू जो उन्होंने पॉलिसी अनाउंसमेंट्स किए हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इससे भी देश की अर्थव्यवस्था पे
जैसे जैसे ये इम्प्लीमेंट होगा बहुत अच्छा इसका वो होगा। और तीसरा, गवर्नमेंट ने टैक्स रिलीफ तो दिया है, पर इसके साथ साथ गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो मेंटेन रहा है, तो इसके कारण जो इन्वेस्टमेंट है बोथ गवर्नमेंट की तरफ से एज वेल एज जो पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट्स किए हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए फॉर इंसेंटिवाइजिंग इन्वेस्टमेंट्स बाय द प्राइवेट सेक्टर, इन दोनों से जो इकोनॉमी की ग्रोथ है उसमें काफी एडिशनल इनपुट मिलेगा। एंड फाइनली ये सब करते हुए भी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया था कि फिस्कल डेफिसिट टारगेट है वो फिस्कल डेफिसिट को 4.5% से कम लेकर आएंगी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, तो वो भी उन्होंने अपना जो अनाउंसमेंट था वो वादा जो है वो निभाया है, क्योंकि इस बार का प्रोजेक्टेड फिस्कल डेफिसिट 4.4% है। सो ऑल इन ऑल ये बहुत सराहनीय बजट है। Absolutely. So we also have some other guests in the studio, but to begin with, good evening viewers. I am Tina Jha, with me is my colleague Pranjali. Joining us in the studio are distinguished guests who will help us analyze what's significant in this budget, which is being seen as a continuity to the budget which was presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman in July. Last year in July 2024. And also we see a budget like where vision the focus and target of the budget is 2047 of Viksit Bharat, and the government wants to achieve the target of 8% growth rate, but that, we know that right now the growth rate is 6.4%, and in the next fiscal year we are going to achieve 6.6%. So what are the focus area where government can focus? So for the government, agriculture is one of the first engine of growth. MSME is the second engine of growth, investment and export. I think this is very important from the development perspective, because generally we talk about first manufacturing, but if you see from the last year or to the last year, government is continuously focusing on agriculture sector. So I think this is very important to discuss when Rightly so. The first and the second engines of growth, we are glad to have two subject experts. Mr. Gupta, MSME has got a new definition. The last time I recall MSME's definition was revised was in the COVID era, when the finance minister delivered perhaps the longest budget speech in history, 2 hours 40 minutes. Today it was less than 1.5 hours, but the MSME sector had a lot to gain. Yeah. So the last definition was announced by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises through a notification in the year 2020. And this year it has been announced in the budget. But I will say that now everything, whatever is there in the business is MSME. So I don't feel that more than 3-4% enterprises will be there which will be out of MSME criteria now, because this was a long demand also. See what happens when any micro and small enterprises, they grow. So they feel that growth should not be their ambition now, because they will be out of various schemes being announced by the stakeholders or the Ministry of